Good morning. Aditya, Deepika, good morning. Give me the clearance, please. Yes, Happy Republic Day to all of you. Happy Republic Day to all of you. Clearance, please. एक बार clearance बता दीजिएगा. All clear. Okay, thank you, Aditya. So, my dear students, boys and girls, a very happy morning to you, and I hope कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका preparation भी अच्छा चल रहा होगा with pace and enthusiasm. Sufia Ahmed, this is for algorithms. For GATE DA also, बिल्कुल. So boys and girls, आज का session है common for CSIT and DA. So both the people can attend the session. And as usual, I would say that this session will be meaningful again. If you have basically studied the course earlier, आपने अगर algorithm पहले पढ़ा हो तभी आपको ये meaningful रहेगा क्योंकि हम important points को touch करेंगे. We are not going to basically like explain in detail. Okay. So as usual, जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में कवर किया उसी तरह उसी मोड में हम कवर करेंगे algorithms, important topics, and I would try to touch upon almost all the topics of the course as per the syllabus of GATE CSIT and DA. देखिएगा GATE DA का जो सिलेबस है वो सबसेट है कंप्यूटर साइंस के सिलेबस से, ठीक है. IISc मॉक टेस्ट में अगर आपको डिपेंड्स कि कौन सा मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, सो ऑन एन एवरेज इफ यू आर गेटिंग अराउंड 50 60 60 70 दैट इज गुड इनफ. डोंट वरी मच अबाउट द परफॉर्मेंस इन द मॉक टेस्ट. तो आई थिंक बॉयज एंड गर्ल्स इट्स टाइम टू स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. ओके. So boys and girls, once again I am repeating, especially for spammers and other people who might be coming here, joining here with under the influence of some people. Okay, so I just want to remind them that this is basically for those people who have studied the course, not for those who are beginners. Okay, Rishabh Keshari, beta, happy Independence Day to all of you once again. Okay, very happy Independence Day to all of you. So boys and girls, this is my details with regard to connectivity for Telegram channel. ये Geese for Geese का है. Of course, this is brief profile of mine. As usual, you are familiar. तो first topic start करने से पहले मैं आपको एक brief review दूं कि what we are going to essentially cover in this course so that you can also have some idea. So boys and girls, as you know, this course has two parts. Algorithms has basically two parts. एक है एनालिसिस और दूसरा है डिजाइन स्ट्रैटेजीज. ठीक है, एक एनालिसिस और दूसरा है डिजाइन स्ट्रैटेजीज. सो इन द एनालिसिस व्हाट आर वी सपोज्ड टू लर्न? वी आर बेसिकली सपोज्ड टू लर्न फॉर नीड फॉर एनालिसिस, मेथडोलॉजी ऑफ एनालिसिस, फिर रोल ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशंस. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. And under asymptotic analysis, you are supposed to learn how to analyze the loop complexities. ठीक है, analyzing recursive and non-recursive algorithms. Of course, this is basically with respect to time and space complexities, right? So I will just write at the end, even though शुरू में होना चाहिए था. Time and space complexities. ये है एनालिसिस के पार्ट्स. एंड व्हेन यू कम टू डिजाइन स्ट्रैटेजीज, बॉयज एंड गर्ल्स, डिजाइन स्ट्रैटेजीज में आपने पढ़ना है एज पर सिलेबस
divide and conquer, greedy technique, and you also have dynamic programming. And in addition to that, you also have some miscellaneous topics, वो भी मैं आपको बताता चलूं. Like for example, graph techniques, जहां पर traversal की बात होगी, and a discussion on sorting methods. ये सारे टॉपिक होंगे एल्गोरिथम्स में, कॉमन फॉर बोथ CSIT एंड DA. ठीक है. सायन दत्ता, नो नीड ऑफ फियर. ये तो फियर बहुत कॉमन है, फियर हर बच्चे को होना चाहिए. फियर ही अगर रहा तो फिर आप पढ़ सकते हो. ठीक है. फियर इज एसेंशियल. फियर इज नेसेसरी बेसिकली फॉर एन इफेक्टिव स्टडी. तो डोंट वरी, एवरीबडी विल हैव फियर, बट डोंट अब फियर को स्ट्रेस मत बना लो. दो आपके माइंड में वो फियर ही सिर्फ बसा हुआ नहीं रहना चाहिए. ओके. So hopefully in today's discussion we are going to focus on the analysis part. Design strategies में divide and conquer and greedy method we'll try to cover hopefully, and then in the next part 2 we'll see the dynamic programming, graph methods and sorting techniques. ये हम cover करने का plan है. Yes Shivam Kumar, that's correct. So boys and girls, requirement for understanding the analysis में जो आपको requirement है, मैं जो expect कर रहा हूँ कि you should be well versed. The basic prerequisites. The prerequisites is that for analysis you should be familiar with the basic mathematical background. Like the ideology of functions, फंक्शंस की नॉलेज होना चाहिए जो आपकी बेसिक मैथ्स में कवर होता है. लाइक फॉर एग्जांपल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द फंक्शंस, which function is smaller having lesser rate of growth and which function is having higher rate of growth. I assume that you should be knowing it. ठीक है. Of course we are going to work out some problems on it, and then you should also have knowledge with regard to, बहुत ज़्यादा important है, properties of log, summation series. ये काफ़ी ज़्यादा important है. Basic rules of integration, and also differentiation. उसी तरह basics of combinatorics and finally basics of probability. मैं profound knowledge की बात नहीं कर रहा हूँ, only basics. These are quite essential for solving problems in the first part of analysis. Design strategy के लिए not only this background, you should also be well conversant with some programming language exposure, programming language, some basic experience. मैं hardcore programming assume नहीं कर रहा हूँ. I am assuming that basically you have some exposure to programming languages like C, C++, and then basics of data structures or fundamentals of data structures. These are quite essential things जो बच्चे लर्न करना चाह रहे हैं एल्गोरिथम्स को, कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टू अंडरस्टैंड एल्गोरिथम्स. ओके. इसके बगैर एल्गोरिथम समझना काफ़ी दुश्वारी होगी, यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल. अगर आप एल्गोरिथम अच्छे तरीके से लर्न करना चाह रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो, तो ये बैकग्राउंड आपका क्लियर होना चाहिए. अगर आपकी मैथमेटिक्स पूर है तो फिर आपको लगेगा कि जो टीचर एल्गोरिथम पढ़ा रहा है बेकार पढ़ा रहा है, आप बोलोगे ऐसा, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है, स्टूडेंट्स या जो भी हो वो अपना फॉल्ट अज्यूम नहीं करेगा, अपना फॉल्ट नहीं मानेगा, वो हमेशा ब्लेम दूसरों पर डालेगा. ठीक है. तो इसलिए मैं एट द आउटसेट, हालांकि महा रिविजन है, महा रिविजन में मुझे प्री रिक्विजिट की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि दोज हु आर वाचिंग द वीडियो, इवन इफ दे माइट नॉट हैव स्टडीड एल्गोरिथम्स, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब तक कि ये फाउंडेशंस आपके स्ट्रांग ना हो, आपको एल्गोरिथम बहुत डिफिकल्ट लगेगा. ठीक है. तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए.
एंड बेसिक प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना चाहिए, इवन दो यू मे नॉट बी ए हार्डकोर डाई हार्ड प्रोग्रामर, और फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे कि यू शुड बी नोइंग व्हाट इज एन अरे, व्हाट इज अ लिंक लिस्ट, व्हाट इज ए स्टैक, व्हाट इज ए क्यू, व्हाट इज ए ट्री. ठीक है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ these data structures should also be knowledgeable to have a profound versatile understanding of algorithms. तो ये मुझे आपको कहना है. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं डिस्कशन आज का. So I would basically cover up this also, I mean to certain extent in our course. तो फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा एनालिसिस के ऊपर. उससे पहले बेसिक रिव्यू लाइक व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिथम, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है. I hope the crowd here, the people available here and the people who are going to watch later as recorded sessions are well knowledgeable with regard to what is algorithm. सभी को पता है. Just short में आपको बताता चलूं कि concept of algorithm is not new to mankind. Mankind के लिए concept of algorithm is not new. Whether it is prehistoric man or maybe 100 years, 200, 500 years back, the concept of algorithm very much existed. क्योंकि एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोसीजर विच इज बीइंग फॉलोड फॉर अकम्प्लिशिंग ए टास्क. एक जो प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर डूइंग सम एक्टिविटी, दैट एक्टिविटी इज वेदर एग्रीकल्चर, हंटिंग हो या मेकिंग हाउसेस इन केव्स, प्रीहिस्टोरिक मैन, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम. सो एनी डिफाइंड प्रोसीजर, वेल डिफाइंड प्रोसीजर टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम. लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिथम की जब बात होगी, दैट इज रिलेटिवली न्यू टू मैनकाइंड. कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिथम इज रिलेटिवली न्यू टू मैनकाइंड, मे बी not more than 200 years or 150 years back. जो अल्गोरिथम आप कंप्यूटर के बेसिस पर सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जो प्रॉब्लम को आप कंप्यूटर बेस्ड सॉल्यूशन देने की कोशिश करोगे, कंप्यूटर बेस्ड अल्गोरिथम इज रिलेटिवली न्यू टू मैनकाइंड. दैट एग्जिस्टेड मे बी 100 or 150 or maybe at most 200 years, not more than that. So what is that computer? अब यहां से हम जहां भी जब भी एल्गोरिथम की बात करेंगे, वी आर प्राइमरली रेफरिंग टू कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिथम. वी आर नॉट रेफरिंग टू एनी जनरल एल्गोरिथम. सो व्हाट इज द प्राइमरी डेफिनेशन ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिथम? तो एल्गोरिथम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स, स्टेटमेंट्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स और स्टेटमेंट्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, सभी को पता है. तो यहां पर अगर आप कीवर्ड्स की बात करो, देयर आर फाइनाइट स्टेप. फाइनाइट होना जरूरी है. स्टेप्स और स्टेटमेंट्स लाइक प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट हो सकते हैं, ठीक है, या प्रोग्रामिंग कन्वेंशन के हिसाब से कोई सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर में आप स्टेटमेंट्स को लिख सकते हो फॉर सॉल्विंग व्हाट, फॉर सॉल्विंग ए गिवन प्रॉब्लम. यह है बेसिकली. बट बिफोर आई प्रोसीड, एक फेमस ऑथर है, मैथमेटिशियन है, डोनाल्ड नुथ. उन्होंने एल्गोरिथम की फील्ड के बारे में क्या कहा था? तो अगर आप स्टेटमेंट देखो, द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गोरिथम मैं आपको बताना चाह रहा हूं. द एल्गोरिथम्स आर द थ्रेड्स दैट टाई टुगेदर मोस्ट ऑफ द सब फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर साइंस. जो भी आप फील्ड लो, इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, मेडिसिन या फिर और कोई फील्ड लो आप, एजुकेशन की, टेक्नोलॉजी की, यू विल फाइंड द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्गोरिथम्स. दीज आर द थ्रेड्स दैट टाई टुगेदर most of the subfields of computer science. Something magically, beautifully happens when a sequence of commands and decisions is able to marshal, मतलब organize करना, a collection of data into organized patterns or discover some hidden structure. So that is the significance or importance of algorithms in computer science. So देखिएगा formal definition फिर से एक बार यहाँ पर कहने का मतलब यह है, it consists of finite number of steps or statements to solve any problem. तो तीन चीजें हैं डेफिनेशन में गौर करने के. एक तो फाइनाइट है, दूसरा है स्टेप्स, या इसे आप कहो स्टेटमेंट्स. सर एग्जांपल क्या हो सकते हैं स्टेटमेंट्स के? लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोग्रामिंग की नॉलेज हो, स्टेटमेंट कैन बी राइट सम असाइनमेंट स्टेटमेंट लाइक a is equal to b plus c, या एक फंक्शन कॉल भी हो सकता है स्टेटमेंट, प्रोसीजर कॉल भी हो सकता है, या एक लूप भी हो सकता है. इट कैन बी अ लूप आल्सो, फॉर लूप लिख सकते हो आप. दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर सॉल्विंग ए गिवन प्रॉब्लम. एवरी स्टेप इंपॉर्टेंट क्या है? एवरी स्टेप और स्टेटमेंट इन्वॉल्व सम ऑपरेशंस. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप ये स्टेटमेंट की बात करो, व्हाट आर द ऑपरेशंस इन्वॉल्व हियर? द असाइनमेंट ऑपरेशन एंड एडिशन ऑपरेशन. तो हर एक स्टेटमेंट में मिनिमम देयर शुड बी वन और मोर बेसिक ऑपरेशंस. एवरी ऑपरेशन मस्ट सैटिस्फाई सम प्रॉपर्टी लाइक डेफिनेटनेस, इफेक्टिवनेस. ये आपने पढ़ा होगा, एवरी एल्गोरिथम में एक्सेप्ट 0 और मोर इनपुट्स but must produce at least one output. I don't want to venture into all those details in this revision series. ठीक है, सभी को पता है. लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, लाइक रिलेशनशिप बिटवीन प्रोग्राम, एल्गोरिथम एंड फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम, एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम. व्हाट इज द रिलेशन एंड डिफरेंस बिटवीन देम?
We need to basically focus on this. So please have a look at it. A given problem can have multiple algorithms. Everybody understand? हर एक को पता है एक प्रॉब्लम के कई एल्गोरिथम्स हो सकते हैं. सर कैसे? जैसा फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग प्रॉब्लम है, तो सॉर्टिंग प्रॉब्लम के कई एल्गोरिथम्स है. आई हैव इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, एड्रेस कैलकुलेशन सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, सो ऑन. So many sorting algorithms, and all of them will sort, all of them will work out, all of them will give the correct result. So boys and girls, every problem P might have multiple, every problem P might have multiple algorithms, A1, A2, AK, some K algorithms. And every algorithm can be expressed by means of different programs. एक algorithm को आप C में लिख सकते हो, या C++ में लिख सकते हो, या Java में लिख सकते हो, etc. So that is the relation between program, algorithm and problem. A problem may have multiple solutions, and every algorithm can be expressed using some language, maybe C, C++, Java, Python. Our objective in this course is not to focus on coding. हमारा objective जो होगा to focus on algorithm development and life cycle. Algorithm के बारे में, algorithm की life cycle के बारे में पढ़ना हमारा objective है इस course में. Our objective is not to learn programming or not to do coding. Coding is a different matter. ठीक है? So don't try to mix up coding and algorithm development. Both are essentially different. ठीक है? Common elements of algorithms क्या हो सकते हैं? Before I come to the topic of life cycle, I just would like to make a very, very important aspect. जो algorithm के statements हो सकते हैं, वो commonly क्या हो सकते हैं? Maybe it could be like input statements, or it could be some computations, like for example arithmetic operations, लॉजिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं, कंपैरिजंस हो सकते हैं. ठीक है? सो इट कुड बी लाइक एनी कंप्यूटेशनल स्टेप्स, और इट कुड बी सम सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इफ देन एल्स हो सकता है. दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ द एल्गोरिथम, बॉयज एंड गर्ल्स. इफ देन एल्स हो सकता है, स्विच केस हो सकता है, राइट? और आइटरेशंस, लूप्स हो सकते हैं. द स्टेटमेंट्स कैन बी लूप्स, और द स्टेटमेंट्स कैन बी आउटपुट स्टेटमेंट्स, लाइक राइट हो सकता है, प्रिंट हो सकता है, statement. So these are the common elements of the algorithms. The algorithm may be consisting of statements. Examples of statements could be input statement, computational statement, selection statement, iteration statements, and output statements, or even it could include function calls, procedure calls. These are the things that can be expressed, and these things need not be expressed using some any language. ये जो statement है, आप कोई भी एक अपने own form में लिख सकते हो, जो so that everybody can understand. It can be expressed in any form. लाइक फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं मैं आपको, जो टेक्स्ट बुक्स है एल्गोरिथम्स की, अगर आप साहनी टेक्स्ट बुक देखोगे, साहनी हैज रिटन द ऑल हिज एल्गोरिथम्स इन द टेक्स्ट बुक बाय यूजिंग हाइपोथेटिकल लैंग्वेज. एक हाइपोथेटिकल लैंग्वेज है जिसका नाम उन्होंने रखा स्पार्क्स. तो आप अपना कोई एक नोटेशन फॉलो करो राइट करने के लिए एल्गोरिथम. समझ रहे हो बात? यू कैन फॉलो योर ओन नोटेशन फॉर राइटिंग द algorithmic statements. It need not be like the syntax of C or C++. Similar syntax, ताकि सभी लोग को बड़ी आसानी से समझ में आ सके. ये है मतलब. So rather than writing vague English language statements, या rather than writing rough English language statements, you borrow some syntax, you have your own syntax and try to write this. ठीक है? जैसा कि for loop है. Some people in algorithm may write for loop for I is equal to 1 to n. कुछ लोग ऐसे लिखेंगे for I is equal to 1 to n. All these are same. जब तक के सभी को समझने में एक आसानी हो, आप you can follow the syntax and you can follow your own convention for writing the algorithmic statements. हाँ बिल्कुल. हाँ, एल्गोरिथम के भी दो पार्ट्स होंगे. क्या दो पार्ट्स होंगे? कुमार सौरभ यू आर सेइंग एल्गोरिथम के भी दो पार्ट्स होंगे. क्या दो पार्ट्स होंगे बेटा? कुमार सौरभ. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे. अब यहां पर हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा, एल्गोरिथम लाइफ साइकिल की अगर आप बात करो, व्हाट आर द जेनेरिक स्टेप्स दैट आर जनरली फॉलो? OTP, why not? If you have the vision, if you have the burning desire, you can always become, okay, you can always become people like that. तो boys and girls, please understand. Life cycle steps देखो आप, सबसे पहले problem definition है. Every problem will have constraints. ठीक है? Every problem will have constraints. Constraints का मतलब है conditions. और generic term में, algorithm की generic term में बात करो तो आप कहोगे like for example रिक्वायरमेंट्स. एल्गोरिथम में हम यूज करेंगे टर्म कंस्ट्रेंट्स, और जेनेरिक टर्म्स में बोलोगे आप रिक्वायरमेंट्स. ठीक है? और कॉमन मैन की लैंग्वेज में कहोगे आप कंडीशंस.
So every problem for which you are developing the solution will have conditions, requirements or constraints. Then third step is design. You think of the design. आप लॉजिक सोचोगे, मेरी लॉजिक क्या होना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. Then you think, आप जैसे ही आपने लॉजिक के बारे में सोचा, you have to basically, हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी होगा. Kanika Sharma will solve problems also, don't worry. Good number of problems will solve. And boys and girls, so you think of the design and express the algorithm, develop the algorithm based on the logic. Based on the logic, you develop the algorithm. Algorithm development हो चुका है. Then after that, you validate the algorithm. Validation के बाद you go for analysis. तो ये देखिएगा दो parts है algorithm के, एक है design, दूसरा है analysis. We analyze the algorithm. Analysis के बाद आपका होगा implementation. Implementation मतलब coding होगा. You use some operating system, you use some language, and then you write the program, and then you run it on the machine. You run it on the machine. And then you perform testing and debugging. ये है various phases. तो इन phases में से जो हमारा कोर्स है, वो कोर्स का ऑब्जेक्टिव है design and analysis of algorithms. Our objective is to focus on two phases. One is the design part, the other part is the analysis. तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा बिफोर डिजाइन कि आप एनालाइज कैसे करोगे एल्गोरिथम को, राइट? सो आवर फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट फोकस विल बी ऑन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स. Analysis of algorithms. So यहाँ पर you should observe that there are three questions that we need to understand, boys and girls. As part of this topic, I would like to emphasize that यहाँ पर आपने तीन questions address करना है. Can anybody tell me what are the three questions to be answered as part of this topic? देखेंगे कौन बताएगा आंसर. As part of analysis, I would say that you will have to address three questions. Can anybody tell me what are the three questions that we need to address? देखेंगे कौन बताएगा. As part of analysis of algorithm, boys and girls, we are required to address three questions. What are the three questions to be addressed? हमें तीन questions answer करना होगा. What are the three questions to be addressed as part of analysis? निशु कुमार, सौरभ, कनिका, बोलिए. उत्कर्ष, not more than 4 hours, not more than 4 hours. No, a priori, a posteriori nahi. What is it? I want the questions. A priori, a posteriori are more technical terms. No, Chaitanya Dave. Yes, around 4 hours. What to analyze? Prefix, infix नहीं बेटा. हमें तीन क्वेश्चंस एड्रेस करने होंगे. व्हाट आर द थ्री क्वेश्चंस टू बी एड्रेस इन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स? सुनिएगा. Yes, very good. Somebody has given like Vikash Raj is saying how to analyze. Yes. Nishu Kumar is saying two questions. There are three questions. Please observe, boys and girls, you are not following the sequence. First question is what to analyze. क्या analyze करना है आपको? What do you want to analyze? What do you want to analyze? Secondly, why to analyze? Why? What to analyze? Why to analyze? और जैसे ही आप समझे कि हाँ मुझे क्या एनालाइज करना है और क्यों एनालाइज करना है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको हाउ टू एनालाइज. समझ रहे हो? तीन वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप. ऑब्जर्व इट. व्हाट टू एनालाइज, व्हाई टू एनालाइज एंड हाउ टू एनालाइज. थ्री क्वेश्चंस वी हैव टू एनालाइज, वी हैव टू अंडरस्टैंड. हमें तीन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना है. क्या एनालाइज करना है, क्यों करना है, कैसे करना है. ये है तीन क्वेश्चन. व्हाट, व्हाई एंड हाउ. यस. अब आप बताइएगा व्हाट टू एनालाइज. एंड जनरली एनालिसिस किसकी होगी? सम रिसोर्सेस की होगी. रिसोर्सेस कंज्यूम बाय एल्गोरिथम की एनालिसिस होगी, राइट? सो बेसिकली एनालिसिस जो होगी फॉर रिसोर्स कंजम्पशन, क्योंकि एल्गोरिथम जब आप मशीन पे रन करोगे उसके रिसोर्स कंज्यूम करेगा, तो यू आर गोइंग टू एनालाइज रिसोर्स कंजम्पशन. सर ये रिसोर्सेस क्या होंगे? तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है अपना, जो जनरल डेस्कटॉप लैपटॉप है, उसके दो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है. उसके दो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है, जैसे सभी को पता है. और वो दो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है टाइम एंड स्पेस. टाइम एंड स्पेस. इज इट नॉट? टाइम एंड स्पेस. Time of what? Time of CPU, for example, computational time.
स्पेस ऑफ व्हाट? नेचुरली मेमोरी स्पेस। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है कंप्यूटिंग सिस्टम्स के या कंप्यूटर के, टाइम एंड स्पेस। ठीक है, ये तो हो गई बात, समझ में आ गई कि हाँ भाई हमें टाइम और स्पेस एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है एल्गोरिथम की विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। अब सेकंड क्वेश्चन बात होगी निशु कुमार एंड अहमद, बोलिएगा, सूफिया अहमद, कनिका शर्मा, कुणाल कुमार, बताइए, व्हाई शुड बी एनालाइज, व्हाई शुड बी एनालाइज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फाउंडेशन जब तक स्ट्रांग ना हो, you should never start the topic with real analysis of algorithms, as I have seen some people doing. I have seen some teachers, some people basically, without naming anybody, without any prejudice, without any sarcasm, without any basically trying to raise the fingers or anything. I have seen many times in the very first lecture, very first thing, the people start analysis with asymptotic notations. That's not correct. I would say डायरेक्ट asymptotic notation बिगो से स्टार्ट कर देते, दैट्स नॉट द करेक्ट। फर्स्ट फाउंडेशंस होना चाहिए, आपने अंडरस्टैंड करना चाहिए काय के लिए, किस लिए, क्यों, कैसे करेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग होने के बाद आप फिर मेथोडोलॉजी के ऊपर बात करो। हाँ बताइएगा प्लीज। परफॉर्मेंस कंपैरिजन ऑफ टू एल्गोरिथम्स, सायन दत्ता, करेक्ट। व्हाई शुड बी एनालाइज, ये व्हाई का क्वेश्चन जो है, इट इज आल्सो बेसिकली एक्सप्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ नीड। व्हाट इज द नीड फॉर एनालिसिस? The question of why is addressing the need for analysis. Why do we need to analyze the algorithm? Answer is very simple, boys and girls. For a given problem P, I can have multiple algorithms A1, A2, A3. A1, A2, A3. There are three algorithms, three solutions for my problem. तो naturally जब तीन solutions होंगे, तीन algorithms होंगे for a given problem, for example, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ये आएगा कि विच एल्गोरिथम इज एफिशिएंट, विच एल्गोरिथम, अगर कॉमन मैन की कॉमन लेमैन की टर्मिनोलॉजी में बात करोगे आप, तो आप कहोगे विच इज बेस्ट, विच इज सुपीरियर। और अगर टर्मिनोलॉजी की बात करो, रिलेवेंट टर्मिनोलॉजी इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, आप कहोगे विच एल्गोरिथम इज एफिशिएंट, विच एल्गोरिथम इज एफिशिएंट। तो बात होगी एफिशिएंसी की। अगर जनरल टर्म्स में पूछोगे तो विच इज द बेस्ट, हालांकि बेस्ट इज नॉट द करेक्ट वर्ड, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, कहना ठीक है, बट मोर प्रिसाइसली विच इज एफिशिएंट। सो नेचुरली जब एफिशिएंसी की बात होगी तो आप एफिशिएंसी कैसे कंपेयर करोगे? बेस्ड ऑन सम मेट्रिक, बेस्ड ऑन, देखिए अगर स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस आपको कंपेयर करना हो तो आप कैसे करोगे? विथ रेस्पेक्ट टू मार्क्स, विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेड्स, इज इट नॉट? अगर आप एथलेटिक्स की बात करोगे तो आप कंपेयर करना है तो कैसे करोगे? विथ रेस्पेक्ट टू बेसिकली सेवरल मेट्रिक्स। तो हर एक सिस्टम में परफॉर्मेंस कंपैरिजन होगा विद रिस्पेक्ट टू सम मैट्रिक्स। तो एल्गोरिथम का जो परफॉर्मेंस जो आप कंपेयर करोगे, जो मेजर करोगे, विल बी विद रिस्पेक्ट टू आइदर टाइम और स्पेस। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, टाइम एंड स्पेस। विद रिस्पेक्ट टू टाइम यू फाइंड आउट विच इज एफिशिएंट, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस यू फाइंड आउट विच इज एफिशिएंट। अब यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि सर अमंग टाइम एंड स्पेस विच इज इंपॉर्टेंट? अमंग टाइम एंड स्पेस, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम our objective is to analyze and compare the performance of the different algorithm with respect to time, the time complexity, the running time of the algorithm. Time is very important resource than memory space, क्योंकि space तो काफी available है, time of CPU is super important. So therefore most of the time the efficiency, the performance comparison among different algorithms of the same problem will be done with respect to time, with respect to running time of the algorithm या time complexity. तो ये हो गया हमारा question for why. So there are two reasons. Reason number one to perform the analysis is to determine the resource consumption like time and space, and then using those resources we will make performance comparison among different algorithms to find out which is superior or which is the efficient one. तो ये है basically the efficiency or basically the reason for analysis, need for analysis. तो जब बात होगी efficiency की, हम यहां पर पूछना चाहेंगे, सुनिएगा प्लीज, how do I know which is efficient? ठीक है, दो एल्गोरिथम्स के टाइम हमें पता चले, अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगे टाइम, एक एल्गोरिथम टाइम ले रहा है 20 सेकंड, दूसरा ले रहा है 10 सेकंड, आप बोलोगे सेकंड एल्गोरिथम इज एफिशिएंट, ठीक है। लेकिन जनरल एनालिसिस जो होगी एल्गोरिथम्स की, जो हम मेथोडोलॉजी या फ्रेमवर्क जो फॉलो करेंगे, सो बेस्ड ऑन दैट व्हाट इज द प्रपोज्ड डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या है? कैन समबडी राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, कैन समबडी राइट डाउन इन द चैट बॉक्स एंड टेल मी व्हेन डू आई से इन जनरल an algorithm is said to be time efficient? मेरा क्वेश्चन बड़ा क्लियर है, बॉयज एंड गर्ल्स, देयर आर मोर देन 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देखेंगे कौन बताएगा। when do I say के an algorithm is time efficient? What is the definition of efficiency?
लेस कुणाल कुमार इज सेइंग लेस कंप्यूटेशन, ठीक है। रन इन पॉलिनोमियल टाइम, सौरभ 0727 रन इन पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है, सौरभ इज ऑल्सो करेक्ट। When do I say an algorithm is efficient? What is the definition of efficiency with respect to time? ठीक है, तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जो efficiency का definition है, it has evolved in 3 stages, boys and girls। efficiency का जो definition है 3 stages में evolve हुआ है, 3 stages में। What are the 3 stages? So see here on board। So point number 1, time complexity of an algorithm quantifies, quantity measure करोगे आप, the amount of time taken by an algorithm to run as a function of, ठीक है, input size के बारे में थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिएगा, I would like you to please have a close look at this. This is a very important point, very important point। Proposed definition of efficiency। So in the first stage, efficiency was considered like this। People said that an algorithm is efficient when implemented, it runs quickly on real input instances, it should run quickly। तो यहां पर कंफ्यूजन ये होगा, यहां पर कंफ्यूजन ये होगा कि सर क्विकली का मतलब क्या है? सो देयर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ क्विक, फास्ट, देयर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन। सो पीपल थॉट दिस इज अ वेग डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। देन दे इवॉल्व द डेफिनेशन इन द नेक्स्ट स्टेज। कैसे कहा? उन्होंने कहा एन एल्गोरिथम इज एफिशिएंट इफ इट अचीव्स क्वालिटेटिवली बेटर वर्स्ट केस परफॉर्मेंस। वर्स्ट केस मतलब मैक्सिमम टाइम जो लेगा एल्गोरिथम, बेटर वर्स्ट केस टाइम एट एन एनालिसिस लेवल than brute force approach। That means एक strategy के बेस पर जब algorithm develop करोगे, at an analytical level you try to find out the time in the worst case that the algorithm is taking, और वो अगर value कम होगी तो हम कहें efficiency। But this is also not a comprehensive definition। Boys and girls, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ, ये बात हमेशा lifetime की तरह, I mean as a lifetime concept to remember, the final definition of efficiency is given like this। The final definition जो अब हम follow कर रहे हैं, राइट, कंटेम्पररी टाइम में जो हम फॉलो कर रहे हैं, फाइनल डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी इज दिस। एन एल्गोरिथम इज सेड टू बी एफिशिएंट पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एन एल्गोरिथम इज सेड टू बी एफिशिएंट इफ इट हैज अ पॉलिनोमियल रनिंग टाइम। किसी ने कहा था ऑलरेडी, अगर एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रनिंग टाइम इज बाउंडेड बाय अ पॉलिनोमियल, देन इट इज कॉल्ड एफिशिएंट। ये है प्रपोज्ड डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी। तो हमेशा आएगा, मैं सिंपल इंटरव्यू क्वेश्चन भी आप कह सकते हो, इंटरव्यू टिप भी है ये। An algorithm is said to be time efficient. An algorithm is said to be efficient with respect to time when its running time complexity is bounded by a polynomial। मतलब उसका running time polynomial होना चाहिए। तब यहाँ पर जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है कोर्स, वो बोलेंगे सर ये polynomial क्या है, ये polynomial क्या है, why it should be polynomial। तो उसके लिए हमें टॉपिक एड्रेस करना पड़ेगा, methodology of analysis, ताकि आप कोरिलेट करो कि why time is proportional to और why time is dependent as defined as polynomial। तो उसके लिए हमें मेथोडोलॉजी, दैट मीन्स वी हैव टू बेसिकली एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू एनालाइज, ताकि आप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई द टाइम ऑफ द एल्गोरिथम, हाउ द टाइम ऑफ द एल्गोरिथम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। सो दिस क्वेश्चन इज सुपर इंपॉर्टेंट अगेन। हाउ शुड बी एनालाइज द एल्गोरिथम, हाउ शुड बी एनालाइज द एल्गोरिथम। आपने परफॉर्मेंस कंपैरिजन करना है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे टाइम, कैसे स्पेस डिटरमिन करोगे? How will you find the running time? How will you determine the time complexity? What is the methodology of it? तो ये है आपका most important topic in this chapter, how to analyze, right? So boys and girls, I am directly starting my question here. So let me see how many of you can respond to my question. So question is how, methodology. How means methodology. How to analyze. How to analyze the algorithm. Methodology की बात है, okay? Yes, Chaitanya Dave is saying other resources can be battery power. Yes, that is correct. Network bandwidth, etc. Yeah, Nishu Kumar is saying a priori and a posteriori. At this point of time, I would like to again take another important aspect. Some students used to say, sir, ये terminology काफी difficult है remember करना। देखो बच्चों, आपको मुझे कहना ये है कि some people may not be what do you say, particular about this terminology, etc. But I feel that being a computer science engineer, IT engineer, okay, machine learning engineer, it is your responsibility to know the term. Nothing wrong in remembering the terms, nothing wrong in trying to understand the terminology. देखिए, computer science एक ऐसी field है than in comparison to other branches of engineering like civil and mechanical.
सिविल मैकेनिकल में हो सकता है आपको लैंग्वेज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंप्यूटर साइंस एंड सर्किट ब्रांचेस के लिए लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक ग्लोबल वर्ल्ड में काम करोगे, आप एक ग्लोबल वर्ल्ड में काम करोगे, ग्लोबल विलेज में काम करोगे। सो इन दैट केस इंग्लिश इज मैंडेटरी फॉर यू। यूसेज ऑफ रिलेवेंट टर्मिनोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, बॉयज एंड गर्ल्स। एक बार थोड़ा आप अच्छे तरीके से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। टुमारो यू आर गोइंग टू फेस द चैलेंज, वरना आप ये बात पे मेरी आप एड्रेस नहीं करोगे, आप अपने आप को एड्रेस नहीं करोगे, यू आर गोइंग टू फेस अ चैलेंज इफ यू आर वीक इन इंग्लिश। इमेजिन कीजिएगा आपने आईआईटी से एमटेक कर लिया, उसके बाद आपका प्लेसमेंट हुआ एक लेवल 1 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, मेटा एक्सेट्रा। तो आपको आउटसोर्स के ऊपर पोस्टिंग होगी, आपको कलीग से कम्युनिकेट करना होगा कि आप हिंदी में करोगे कम्युनिकेशन, बोलिएगा विल यू कम्युनिकेट इन हिंदी? दे विल आस्क दैट क्वेश्चंस इन द रिलेवेंट टर्मिनोलॉजी। तो आपको टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इफ समबडी से टर्मिनोलॉजी इज नॉट इंपॉर्टेंट, पीपल विल क्रिएट हाइप by using complex words, by using good some language of English. That's totally foolishness, nothing more than that. Please understand that. समझ रहे हो आप? तो don't come under the impression, such impressions, wrong impressions, slippery impressions. So highly important है कि आपने एक अच्छा कन्वर्सेशन होना चाहिए, अच्छी टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। हर सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सूफिया अहमद इज सेइंग हिंदी जान नहीं छोड़ रहा, मतलब क्या है बेटा? सूफिया अहमद इज सेइंग हिंदी जान नहीं छोड़ रही है। अगर आप चाहो तो इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। हाँ, कुणाल कुमार इज ऑल्सो सेइंग। सो बॉयज एंड गर्ल्स, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विथ रिगार्ड टू दिस। रेवंत, यस यू कैन एक्सपेक्ट 8 to 10 marks in algorithms. So suppose boys and girls, if I have written some statement x is equal to y plus z, सुनिएगा, x equal to y plus z, some statement I have written, and I ask a simple question, बेटा how much time does this statement take to execute? या फिर एक और एक statement लिखूं मैं लूप के टाइप में। For example, if I write like for I is equal to 1 to n, I write like c is equal to c plus 1, c is a constant, I write simple loop and I ask the question how much time does this statement take? How much time does the first statement take? तो आपका response क्या होगा? What will you respond? बोलिएगा। I just ask how much time statement 1 and statement 2 take, how much time statement 1 take, how much time statement 2 take. ठीक है? So how much time does it take? तो यहां पर it will be a very difficult question to ask. It will be very difficult question to ask. Like what difficulty? So please understand. The exact time taken, boys and girls, the exact time taken, हाँ सभी बच्चे कह रहे हैं कांस्टेंट, लेकिन मैं पलटा के आपको ये पूछ रहा हूं कांस्टेंट क्या है? हाँ, ऋषभ केशरी इज करेक्ट। कांस्टेंट क्या है? अगर मैं आपको पूछूं कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गो फ्रॉम प्लेस 1 टू प्लेस 2, क्या आप कहोगे कांस्टेंट टाइम? जिन्होंने भी आंसर दे रहा है, कुणाल कुमार, राइट, शुभम प्रसाद, जिन्होंने भी कह रहे हैं कांस्टेंट टाइम, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी छोड़िएगा, सुनिएगा, फिर भी छोड़िएगा। इफ आई वांट टू गो फ्रॉम प्लेस 1 टू प्लेस 2, प्लीज नो कमेंट्स उगांडा, नो पर्सनल कमेंट्स। देखिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं, इंग्लिश इज ऑल्सो टू इंपॉर्टेंट, यू कैनॉट इग्नोर इंग्लिश, दैट इज व्हाट इज द पॉइंट, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। Nobody should basically point to anyone else. So please understand. Intention should be taken, that's it. Intention सिर्फ इतना कहने का है कि English is important, don't neglect, particularly computer science और IT students के लिए English is highly important. Usage of proper terminology is also equally important. आपको अब पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा, जब आप याद करोगे अरे हाँ एक सर थे खलील सर, उन्होंने कहा था ये बात, आप कहोगे। ये मैं अपने 30 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको कह रहा हूं, ठीक है? तो चलिए बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम प्लेस 1 टू प्लेस 2, आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम प्लेस 1 टू प्लेस 2, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गो? कितना टाइम लगेगा? तो क्या आप 1 यूनिट, 2 यूनिट्स कांस्टेंट टाइम कहोगे? बोलिए, will you say that it will take constant time to go from place 1 to place 2 as unit time? 2 units, 3 units कहोगे? No, you say in real values.
या फिर आप कहोगे सर अगर आप यहां से यहां जाना चाह रहे हो तो आप पूछोगे सर आप कैसे जाना चाहोगे, विल यू आस्क और नॉट, सर आप कैसे जाना चाहोगे, सर आप क्या बाय वॉक जाना चाहोगे, और वुड यू लाइक टू गो बाय बाईसाइकिल, वुड यू लाइक टू गो बाय बाइक, या फिर आप कार से जाना चाहोगे, या बस से जाना चाहोगे, ट्रेन से जाना चाहोगे, या फिर फॉर एग्जाम्पल या फिर आप रॉकेट से जाना चाहोगे, प्लेस 1 टू प्लेस 2, वुड यू लाइक टू गो बाय वॉक, वुड यू लाइक टू गो बाय ट्रेन, वुड यू लाइक टू गो बाय बाइक, वुड यू लाइक टू गो बाय प्लेन, या फिर आई मीन रॉकेट. These are the various modes of transport. So boys and girls, मैं सिर्फ इतना emphasize करना चाह रहा हूं, इतना आपको कहना चाह रहा हूं, the exact time taken to go from this place to this place, the exact time taken to go from this place to this place depends on mode of transport. अगर ये mode of transport को आप प्लेटफॉर्म कहो तो it depends on the platform. It depends on the platform. किस मोड से आप जाना चाह रहे हो, राइट? अगर आप बाई वॉक कर जाना चाहोगे तो स्लो जाना, ज्यादा टाइम लगेगा. अगर आप बाइक से जा रहे हो तो कम टाइम लगेगा, कार से और कम टाइम लगेगा, हो सकता है आप बस से जाओ या ट्रेन से जाओ और कम टाइम लगेगा. इट डिपेंड्स ऑन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो एग्जैक्टली लाइक दैट, the exact time, boys and girls, the exact time taken for the execution of this statement, आप कह सकते हो सर essentially depends on the platform. प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करेगा. इट विल डिपेंड ऑन द प्लेटफॉर्म. इट विल डिपेंड ऑन द प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म क्या होगा सर? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अगर आप एक फास्ट प्रोसेसर लोगे, फास्ट मेमोरी लोगे, फास्ट आईओ डिवाइसेस लोगे, राइट, एक फास्ट कंप्यूटर लोगे, एक अच्छा कंपाइलर लोगे, एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम लोगे, टाइम कम लगेगा. उसी तरह अगर एक स्लो कंप्यूटर हो, एक सब ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सब ऑप्टिमाइज्ड कंपाइलर हो, इट विल टेक सम अदर टाइम. सो एग्जैक्टली जस्ट लाइक दिस, इट विल डिपेंड ऑन द मोड ऑफ इंप्लीमेंटेशन, द मोड ऑफ द प्लेटफॉर्म. ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट रहेगा टाइम. लेकिन इसका एक एडवांटेज, अगर आप इस तरीके से एनालिसिस करो, दिस टाइप ऑफ एनालिसिस, कैसे? यू कन्वर्ट योर एल्गोरिथम इनटू प्रोग्राम, यूजिंग सम लैंग्वेज, implement it on the machine or execute it on the machine by using some operating system. इस तरीके से अगर आप करोगे, you will get exact time. जैसे यहाँ पे भी आपको exact time मिलेगा. If you go by bike, if you go by train, if you go by car, उसी तरह you will also get exact value in units of time. Like it may be in seconds, it may be in microseconds, it may be in milliseconds or something like that. समझ रहे हो? It will take exactly the exact time. लेकिन difficulty इसकी क्या होगी? What is the drawback of analyzing the time, exact value? What is the drawback of this type of analysis? ये जो type of analysis है literature में से कहा जाता है, in the literature this is called a posteriori analysis. This is called a posteriori analysis. Post का मतलब after क्या? After implementation, after running it on the machine, जो आप analysis करोगे वो है a posteriori analysis. समझ रहे हो? A posteriori analysis. Post मतलब after. So after implementation, the statistics that you collect, that is called a posteriori values. तो इसका advantage भी है, drawback भी है. drawback ज्यादा है. इसका advantage ये है कि you can get exact value in units of time, seconds, milliseconds, microseconds में आपको exact value मिलेगी. लेकिन इसके drawbacks कई है. नंबर 1, इट इज नॉट इजी, इट इज डिफिकल्ट टू कैरी आउट, क्योंकि हर स्टेटमेंट का आपने एग्जैक्ट टाइम डिटरमिन करना होगा. वो टाइम डिटरमिन करने के लिए हो सकता है आपको सिस्टम कॉल्स यूज करना पड़ेगा, हर एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स का टाइम निकालना पड़ेगा, एंड इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू कैरी आउट. सो द मेन सेटबैक ऑफ पोस्टीरियरी एनालिसिस इज डिफिकल्ट टू कैरी आउट, and it's not easy. And secondly, different platforms will give you different times, will report different times. तो ऐसा हो सकता है कि an inefficient algorithm may run on a supercomputer and take less time, and an efficient algorithm may run on an average computer, slow computer, and take more time. तो इससे आपका total analysis comparison गलत हो जाएगा. जब प्लेटफॉर्म्स वेरी होंगे, जब प्लेटफॉर्म डिफरेंट होंगे, तो आपकी एनालिसिस गलत हो जाएगी, बिकॉज इट इज नॉट यूनिफॉर्म. तो अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि आप एक ही प्लेटफॉर्म यूज ना करो, एक ही हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज ना करो, यू विल गेट डिफरेंट आंसर्स, एंड दैट विल मेक योर परफॉर्मेंस कंपैरिजन डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटी. सो सेकंड ड्रॉबैक ये है,
non-uniformity leading to difficulty in performance comparison, non-uniformity of analysis leading to difficulty in making performance comparison. और बच्चों performance comparison हमारा main objective है, performance comparison is our main objective, और वही हमें difficult हो रहा है. So therefore based on this we say we don't prefer to carry out analysis in a posteriori mode, because no doubt it is giving exact values in units of time, lekin it is difficult to carry out, and hence we difficult to make performance comparison, and hence we don't prefer to carry out analysis in a posteriori mode, even though that is also correct. So therefore from this discussion हमें पता ये चला कि हमें एक environment ऐसा चाहिए, हमें एक platform ऐसा चाहिए with which we should be able to carry out analysis in a uniform way. Uniform मतलब सभी लोग एक ही तरीके से एनालाइज करेंगे, सभी लोग एक ही टाइप का आंसर देंगे, which will facilitate for making performance comparison. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एनालिसिस होना चाहिए. आई शुड नॉट डिपेंड ऑन द प्लेटफॉर्म, आई शुड नॉट डिपेंड ऑन द प्लेटफॉर्म. या फिर आप कहो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल होना चाहिए which will be uniform for everyone, so that they can report, they can carry out analysis in a uniform way and report the answers, which will facilitate making easy performance comparison. तो ये है हमारा second method of analysis. Second method of analysis, which is called the most important one, a priori analysis. ये जो terminology है, it is not exactly given like this in basically many textbooks of algorithms, except for few of them. Like for example, अगर आप साहनी की बात करो, साहनी you will find all these terms. Or my generally introductory part of algorithms, I basically prefer to recommend the students for reading from Sahani textbook. A priori, a posteriori का जो discussion है, Sahani के textbook में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, आप उसे follow कर सकते हो. A priori analysis. The main characteristic of this is called, it is platform independent analysis. Platform independent analysis. मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म चाहिएगा आपको. यू रिक्वायर ए प्लेटफॉर्म, यू रिक्वायर ए फ्रेमवर्क. ये फ्रेमवर्क क्या होगा? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फ्रेमवर्क फॉर कैरिंग आउट दिस एनालिसिस? सुपर इंपॉर्टेंट. व्हाट आर द कंपोनेंट? देखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एनालाइज ऐसे ही रैंडमली कर लो. नो, फिर भी एक प्रोसीजर है. ए प्रियोरी एनालिसिस का भी एक प्रोसीजर है, उसका भी एक फ्रेमवर्क है. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फ्रेमवर्क, बॉयज एंड गर्ल्स? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ a priori analysis framework? कैसे करोगे आप? What is the methodology of a priori analysis? इसके components क्या है? ये फ्रेमवर्क के components क्या है? Can anybody know? देखेंगे. वही तो मैं कह रहा हूं, कई लोगों को ये पता नहीं है. They just start simply writing the algorithm and say इसका टाइम यूनिट है, इसका टाइम कांस्टेंट है. वो यूनिट और कांस्टेंट क्यों है? That you should understand. Boys and girls, नीरज कुमार, चैतन्य दावे, you should understand. खाली कांस्टेंट टाइम लगेगा, यूनिट टाइम लगेगा बोल देना नहीं है वैसा. You should have the reason for it. कि कैसे क्या है? हाँ, चैतन्य दावे इज करेक्ट. कंप्यूटेशनल मॉडल है, लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग एल्गोरिथम्स है, सूडो लैंग्वेज है, बिल्कुल सही है. देयर इज अ प्रोसीजर फॉर दैट. वो प्रोसीजर जब तक आपको क्लैरिटी ना हो, आप समझ नहीं पाओगे क्लैरिटी के साथ. आप खाली अज्यूम करोगे, हाँ ये स्टेटमेंट का टाइम कांस्टेंट लगेगा. टाइम कांस्टेंट क्यों लगेगा? Why does it take constant time? वो समझना है आपको. तो उसके लिए देखिएगा, एक टेक्स्ट बुक से मैंने यहां पर लेके आया है आपको what are the components. मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए सभी स्टूडेंट्स ये फॉलो करो. I have taken this extract from a textbook of algorithms. देखिएगा, ऑथर ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है. यहां पर ऑथर ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है. देखिएगा क्या लिखा है. Components of a priori analysis framework. देखिएगा, there are 4 components of a priori analysis framework. Number 1, a language for describing algorithms, hypothetical pseudo language, not C, C++, Java, Python. Some language, some notation. समझ रहे हो बात? जैसे मैंने कहा सानी की टेक्स्ट बुक में दिस लैंग्वेज ही कॉल इट एज स्पार्क्स. कॉर्मन का अपना एक ओन नोटेशन है. कॉर्मन के सारे एल्गोरिथम्स आप देखो एक नोटेशन में दिखेंगे. कॉर्मन हैज अडॉप्टेड दैट नोटेशन इवन दो ही हैज नॉट नेम्ड इट. सरताज सानी हैज नेम्ड द नोटेशन स्पार्क्स.
तो आपने एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है टू डिस्क्राइब द एल्गोरिथम स्टेटमेंट्स, टू डिस्क्राइब द एल्गोरिथम एलिमेंट्स, यू शुड हैव सम लैंग्वेज। फिर उसके बाद सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, जो मेनी पीपल आर अनअवेयर, परहैप्स आर अनअवेयर, दे डोंट ट्राई टू फॉलो इट, ए कंप्यूटेशनल मॉडल दैट एल्गोरिथम्स एग्जीक्यूट विद इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन दो आई एम सेइंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, लेकिन फिर भी यहां पर एक प्लेटफॉर्म है, एक कंप्यूटेशनल मॉडल है, जिसके अंदर हम अज्यूम करेंगे कि एल्गोरिथमिक स्टेप्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर अज्यूमिंग ए कंप्यूटेशनल मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल, एक हाइपोथेटिकल कंप्यूटर हम अज्यूम कर रहे हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स, उसका नाम दिया गया है लिटरेचर में रैम मॉडल ऑफ कंप्यूटर, रैम मॉडल ऑफ कंप्यूटर। सो व्हाट इज दैट रैम मॉडल ऑफ कंप्यूटर? That's a theoretical model, that's only a mathematical model. So as per that model, boys and girls, this is important. We assume we have sufficiently large memory, बहुत ज्यादा large memory है, और एक hypothetical processor है, CPU है. This is a CPU and this is the memory. This is the memory. So this is my RAM model of computer, boys and girls. ये सिर्फ दो components है RAM model of computer के. अब इसके बाद इसमें हम अज्यूम करेंगे, वी इमेजिन दिस एज अ मशीन, so in this machine we imagine our algorithm is being executed just like program is executed on CPU. We imagine our algorithmic steps are executed in this RAM model. कैसे execute करेंगे? ऐसे करेंगे. Please understand, we assume that all algorithm steps are stored in this memory. Step 1, step 2, instruction 1, instruction 2, और ठीक है step 1 लिख लेंगे, या ऑपरेशन लिख लो आप, ऑपरेशन 1, operation 2, operation 3, operation 4, and so on. Operation 100, some fixed number of elements, fixed number of operations, like addition after operation, subtraction operation, multiplication, division, comparison, assignment, input, output. ये examples है operations के. So all the operations of the steps, all the step statements of the algorithm are stored in the memory, and all these will execute sequentially one by one. और इसका assumption ये है, boys and girls, inherent assumption ये है कि every operation, every basic operation, every fundamental operation, every basic fundamental operation like addition, subtraction, multiplication, division, comparison, input, output, all fundamental operations, logical operations, all basic fundamental operations जो आपने पढ़ा हो CO में, language में, data structures में, all fundamental operations will take a constant time, और आप कहो more precisely 1 unit time. 1 unit time. It is not seconds, milliseconds, microseconds, 1 unit time, or you can say constant time. ये है आइडियोलॉजी कांस्टेंट वैल्यू की. क्यों कांस्टेंट आ रहा है? ये assumption की वजह से हम इमेजिन कर रहे हैं कि एक प्रोसेसर है which will always take a unit time to execute every fundamental operation. ये रियलिस्टिक assumption है, nothing wrong in that. तो यहां से कांस्टेंट वैल्यू आ रही है. तो माय डियर स्टूडेंट, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर मैं इमेजिन करूं मेरा एक स्टेटमेंट है एल्गोरिथम का, C is equal to A plus B, C is equal to A plus B. ये स्टेटमेंट में what are the fundamental operations, boys and girls? This statement has got two fundamental operations, 1 and 2, addition and assignment. Addition and assignment. So ये addition will take 1 unit, assignment will take another unit. तो हम ये कहेंगे ये जो ए प्रियोरी मॉडल ऑफ कंप्यूटर है, रैम मॉडल ऑफ कंप्यूटर में, ये जो स्टेटमेंट है C is equal to A plus B is going to take 2 units of time. समझ रहे हो? In our hypothetical computer, in our hypothetical RAM model of computer, we are saying that this statement C is equal to A plus B, because of the execution of fundamental operation taking unit of time, so this statement will take 2 units of time. इस तरीके से आया है 2 units, not just like आप कह दो कि constant time लगेगा. क्यों लगेगा constant time? ये वजह से लगेगा. I hope you are all clear. This foundation, basic foundation है ये. So this is how you take. So every statement को आप इस मॉडल में execute करोगे. So this is the second component of your algorithm. So a computational model that algorithms execute within. So that computational model I have described. Third, a metric for measuring algorithm running time. हर एक algorithm का running time will be proportional to, will be dependent on some metric, some operation, some fundamental operation, some basic operation. Sir, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एक algorithm, realistic algorithm, practical algorithm, हर एक रियलिस्टिक प्रैक्टिकल एल्गोरिथम टाइम डिपेंड्स ऑन सम मेट्रिक. मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपका एल्गोरिथम सर्चिंग एल्गोरिथम है, सर्चिंग गिवन एन अरे विथ एन एलिमेंट्स, यू वांट टू सर्च फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट, तो ये जो एल्गोरिथम का इंप्लीमेंटेशन होगा,
its implementation will be based on some comparison operation. आप comparison करोगे ना, so time of search will depend on comparisons, will depend on comparison. जितने ज्यादा comparisons आप बनाओगे उतना टाइम लगेगा, जितने comparisons आप करोगे time will depend on comparison. So हर एक realistic algorithm, not hypothetical, every realistic algorithm running time will be governed by, will be dependent on some metric. अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, टाइम विल डिपेंड ऑन स्केलर मल्टीप्लीकेशंस. सॉर्टिंग टाइम है, सॉर्टिंग टाइम विल बी गवर्न्ड बाय, विल बी डिपेंडेंट ऑन कंपैरिजंस एंड स्वैप्स. तो दीज आर द मेट्रिक्स. तो माय डियर स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज रिमेंबर, यू आर फ्यूचर डेवलपर्स ऑफ एल्गोरिथम्स, यू आर फ्यूचर एल्गोरिथम एनालिस्ट. तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब आप एनालिसिस करोगे रियलिस्टिक एल्गोरिथम्स की, तो यू विल फाइंड आउट व्हाट इज माय बेसिक ऑपरेशन ऑन विच द टाइम इज डिपेंडेंट ऑन. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. समझ रहे हो बात? When we do analysis, मेरे जब PhD स्टूडेंट्स के जब रिपोर्ट आती है, एनालाइज करना है उनके एल्गोरिथम्स की जो जिन्होंने इंप्लीमेंट किया, सो आई मेक देम वर्क आउट दिस प्रोसीजर. ये प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं. इट्स अ रियलिस्टिक प्रोसीजर. इट विल बी फॉलोड इन इंडस्ट्री आल्सो. प्लीज डू रिमेंबर. So therefore you identify the metric for measuring the running time, and then based on this ideology you express the time by time taken by all the steps. Step 1, step 2, step 3 का टाइम क्या है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, boys and girls, now we'll come to our concept. Suppose if I write a hypothetical algorithm, matlab not realistic, okay, it will accept some input like n. I write first statement, x is equal to y plus z. I write second statement, hypothetical statement. समझ रहे हो? realistic क्या हो रहा है हमें परवाह नहीं है, just some statements है, c is equal to a plus b. और एक कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल नेस्टेड लूप है, फॉर i is equal to 1 to n, फॉर j is equal to 1 to n. I write like k is equal to k plus 1 or k star 1, k star 5, something like this. Now based on this ideology, based on this methodology, हमें ये एल्गोरिथम का टाइम चाहिए, ए प्रियोरी टाइम चाहिए. ये एल्गोरिथम का हमें ए प्रियोरिटी टाइम चाहिए. I teach in college also, Nishu Kumar. I teach in college also. I work in an engineering college in Hyderabad. Boys and girls, I will give you 2 minutes of time. Everyone, I will give you 2 minutes of time. Can you find in our RAM model of computer what is the time taken by this algorithm? Can anybody tell me? Can you please work out and tell? I want the exact value, Nishu Kumar. I want the exact value of time taken by this algorithm having 3 steps. इन रैम मॉडल ऑफ कंप्यूटर ए प्रियोरी मोड ऑफ एनालिसिस में इसका टाइम क्या होगा? हाँ, चैतन्य दावे, आई एम नॉट एचओडी, आई एम डीन. एचओडी और कम लेवल पे होता है, डीन इज सुपीरियर. डीन का पोजीशन हायर होता है. ठीक है. बॉयज एंड गर्ल्स, आई होप माय क्वेश्चन इज क्लियर. व्हाट इज द टाइम टेकन बाय दिस एल्गोरिथम हैविंग 3 स्टेप्स इन ए प्रियोरी मोड ऑफ एनालिसिस? ए प्रियोरी मोड ऑफ एनालिसिस में इसका टाइम बताइएगा. एग्जैक्ट टाइम. नीरज चौधरी, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए. नो प्रॉब्लम. सौरभ एंड चैतन्य दावे, नो प्रॉब्लम. चलिए जल्दी कंप्लीट करेंगे. इनिशियल पार्ट हम काफी डिटेल में जा रहे हैं. मैं नहीं सोचा था इतना डिटेल में जाना पड़ेगा. कमान रजा, हम बाद में देखेंगे. अभी बेटा पूरा फोकस इस पे लेक्चर पे रखो, पूरा फोकस लेक्चर पे रखो. द टाइम टेकन, द एग्जैक्ट टाइम टेकन, हम वैल्यूज यहां पे लिखेंगे. द एग्जैक्ट टाइम टेकन फॉर दिस इज 2 यूनिट्स. अब ये देखेगा एक इनिशियलाइजेशन है, सो देयरफॉर 1 यूनिट प्लस कंपैरिजन है, कंपेयरिंग आई विथ एन, हाउ मेनी कंपैरिजंस, n plus 1 प्लस इंक्रीमेंटिंग आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी. कितने बार इंक्रीमेंट करोगे? n टाइम्स करोगे. This addition, this assignment is done n plus n times, n plus n. So my dear student, this is the time taken by this algorithm. Sir, ये n क्या है? n is the input. ये n क्या है? n is the input size. Algorithm work कर रहा है input by name n, उसका size होगा 10, 100, 20, 1000 जो भी हो. तो boys and girls, this is the time taken by the statement number 2. क्या बनेगा? 1, 2, 3, 4, 4n plus 2. 4n plus 2 units. 4n plus 2 यूनिट्स. उसी तरह थर्ड स्टेटमेंट का टाइम क्या होगा? थर्ड स्टेटमेंट का टाइम बनेगा
I mean first initialization है, one initialization, n plus 1 comparisons of I plus n increments of I plus now j का देखिएगा n times initialization, n into n plus 1 comparisons, n into n plus 1 comparisons, n into n updates, because per iteration n updates, total iterations n, so n into n plus ये कितने मल्टीप्लीकेशन होंगे, n into n मल्टीप्लीकेशन होंगे प्लस n into n असाइनमेंट्स होंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया है टोटल टाइम ऑफ स्टेप 3. मैं पूरे स्टेप काउंट्स कर रहा हूं, काउंटिंग ऑल द स्टेप्स. सो दैट इज व्हाई दिस अप्रोच ऑफ ए प्रियोरी मोड ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड स्टेप काउंट मेथड. स्टेप काउंट, वी आर काउंटिंग द स्टेप्स. तो इसका टोटल वैल्यू क्या बनेगा, n स्क्वायर कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, 4n स्क्वायर, ये बनेगा टाइम 4n स्क्वायर प्लस n कितने हैं देखिएगा, 1 2 3 4, 4n प्लस 2, ये है वैल्यू. 4n स्क्वायर प्लस 8n है या 4n है, विकास राज, आदित्य बेलकुड़े, 8n है 4n है, 1 2 हियर 1 n प्लस n प्लस n प्लस n 4n. हाँ, अब टोटल टाइम अगर आप ऐड करो, टोटल टाइम ऑफ द एल्गोरिथम क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ द एल्गोरिथम बनेगा, देखिएगा प्लीज, टोटल टाइम इज सम ऑफ ऑल द टाइम्स ऑफ ऑल द स्टेप्स. Total time, sum of the times of all the steps. So 2 plus 4n plus 2 plus 4n square plus 4n plus 2. Adding them together, it becomes 4n square plus 8n plus 6. This is my total time of the algorithm. 4n square plus 8n plus 6. ये क्या है, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है. ठीक है, got it. ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 6. इट्स अ मैथमेटिकल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज. मतलब ये है कि ए प्रियोरी मोड ऑफ एनालिसिस में वी आर ट्राइंग टू डिराइव, वी आर गोइंग टू गेट द टाइम ऑफ एल्गोरिथम, वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ द एल्गोरिथम बाय मींस ऑफ अ मैथमेटिकल फंक्शन. पॉइंट नंबर 1, वी आर रिप्रेजेंटिंग द टाइम बाय मींस ऑफ अ मैथमेटिकल फंक्शन. 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 6 एक मैथमेटिकल फंक्शन है. व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्वाड्रेटिक. इसमें 3 किस्म के टर्म्स है, एक टर्म विद डिग्री 2, एक टर्म विद लीनियर टर्म 8n, एक टर्म एक कांस्टेंट है. ये लोअर ऑर्डर टर्म्स है 8n प्लस 6. हायर ऑर्डर टर्म इज 4n स्क्वायर. 4n स्क्वायर इज अ डोमिनेटिंग टर्म, उसका वो टर्म डोमिनेट कर रहा है लोअर ऑर्डर टर्म्स पर. So dominating terms will basically outperform the other lower order terms in terms of their value. Okay, I will give you Prajapati. I will give you, no problem. So boys and girls, these are times. So एक तो step count method, दूसरा order of magnitude. Order of magnitude is a simple or shortcut method of getting the time. Order of magnitude of a statement is the frequency count. Order of magnitude अगर आप निकालो, order of magnitude अगर आप निकालो, it refers to frequency count. Frequency का मतलब number of times the statement or the operation is executed. कितने बार ऑपरेशन execute हो रहा है, one time. कितने बार ये ऑपरेशन execute हो रहे हैं, n times. कितने बार ये ऑपरेशन execute हो रहे हैं, n square time. Order of magnitude पर आपका फंक्शन बनेगा n square plus n plus 1. This is also one approach. Either this or that. दोनों का आर्किटेक्चर स्केलेटन सेम है. ठीक है प्रजापति, रोहन प्रजापति, I will give you no issue. Just focus on lecture. So boys and girls, either you follow step count method to represent the time or order of magnitude to method to represent the time. दोनों एक ही फंक्शन का स्ट्रक्चर डिटरमिन करेंगे. तो you determine the time using the RAM model and express the time by means of mathematical function. अब इसके बाद लास्ट स्टेप क्या है देखिएगा of our framework, an approach for characterizing. सुनिएगा, an approach for characterizing running time including those of recursive algorithms. An approach or a notation to characterize the running time, to describe the time complexity of the algorithm through this notation, through this approach, which will characterize the running time so that we can make performance comparison among different algorithms. Algorithm की efficiency को represent करने के लिए हमें एक notation चाहिए so that we can make the performance comparison of different algorithms, to classify the algorithms, to make a taxonomy of the algorithms. वो है asymptotic notation. वो है asymptotic notation. देखिएगा, अगर मेरे एल्गोरिथम में 1000 स्टेप्स है तो एवरी स्टेप का आप टाइम डिटरमिन करोगे और एक मैथमेटिकल फंक्शन लिखोगे. ठीक है, सुनिएगा,
You write a mathematical function with 1000 terms, you write a mathematical function with 100 terms, और बोलोगे कि time complexity of algorithm in a priori mode is this function with 100 terms. That looks very clumsy, that looks very awkward, that does not look elegant. So therefore we have a notation to represent the time in the most elegant way in terms of what is called asymptotic notations. So boys and girls, asymptotic notation is actually a mathematical topic, and asymptotic notations are used to represent, to determine the bounds of mathematical function. Bounds. A mathematical function can typically have an upper bound and lower bound, and in special cases tight bound. When mathematical function आपने पढ़ा होगा mathematics में, we may have upper bound and lower bound to denote the maximum value, the minimum value, right? Maximum closest value, minimum closest value, we have asymptotic notations, and one of the very popular notation is called big O notation. So which say that big O of any function is that term which is dominating in the function. Big O is that term which is dominating. जैसा n square plus n plus 1, which is a dominating term, n square. मतलब ये है कि I mean the n square term is having very high value than in front of the lower order terms n plus 1. तो asymptotic notation की characteristic ये है कि you ignore the lower order terms and constant factors and represent the time in terms of dominating term. So therefore by this concept, when I say the time is n square plus n plus 1, 4n square plus 8n plus 6, if I write this in the form of asymptotic notation, we write this as order of n square. The formal definition अभी define करेंगे. We say it is order of n square. ये order of n square कहने का मतलब ये है कि algorithm has many steps perhaps. सुनिएगा और से सुनिएगा. By writing the time is order of n square, it means what? It means that the algorithm may have many steps, but all steps will take either n square or less than n square. That is the meaning of it. By writing order of n square and ignoring the lower order terms and constant terms, we are trying to say that the basically all the steps will have time of either n square or less than n square, and less than n square are insignificant in terms of rates of growth than in terms of n square. n square की जो rate of growth है उसके सामने n और 1 की rate of growth कम है. Therefore we ignore the lower order terms and try to represent the time in the most elegant way by saying order of n square. This looks very elegant by describing the time of this algorithm as order of n square, saying the time of algorithm will never be more than n square, right? It may be either n square or maybe less than n square. That's the meaning of it. Okay, the actual time will be either equal to n square or maybe less than n square. That's the meaning. Means every step will have either n square or less than n square. That is the meaning of it. So therefore the first role of a priori analysis, boys and girls, is to represent the rate of growth of the time with input size. जैसे input size increase होगा तो time increase होगा. As you increase real royal reality, saying that theta not possible between A and B is invalid. I don't know what you are trying to say. बेटा आपका जो actual question है real royal reality, you send it on my WhatsApp, you send it on my Telegram channel. I will try to refer and respond to you. ठीक है? Your statement I could not understand. N square plus C, Shiva Kumar, whatever number of 9s you write with n, that is going to be lower order term in front of n square. N square की rate of growth के सामने the second term is insignificant, still insignificant, but not always. Whenever n is greater than some constant. We are going to see that shortly. So boys and girls, the first aspect of a priori analysis is to determine the rate of growth of time of the algorithm with increase in input size. जैसे input size increase होगी, rate of growth कैसा होगा time का, that you are trying to describe by means of a mathematical function. This is the first aspect of analysis. तो rate of growth क्या है? It is the rate of growth which is of interest to us, जो हमें determine करना है. सुनिएगा standard definition of rate of growth from the textbook of CLRS. It is the rate of growth or order of growth. It is also called order of growth of the running time that really interests to us. हमें जो सबसे पहले important aspect चाहिए a priori analysis का, वो है rate of growth, determining the rate of growth of time. The rate of growth of running time or order of growth is an approximation. It is not real time. ये तो हमेशा approximation ही मिलेगा because it is independent of units. Approximation of how long a computer algorithm will take to run as the input size increases. Computer program, we are trying to estimate. जब आप program में convert करोगे और run करोगे तो we are trying to estimate it as an approximate value, right? To run as the input size increases. That's what I said. And this rate of growth you are trying to express or show by means of a mathematical function which can come in the form of a quadratic or cubic or polynomial of some degree, and maybe a logarithmic growth or maybe exponential growth.
So it focuses on operation that increase proportional to these, what I said. This concept or this ideology, this methodology focuses on the operation that increase proportionally to the input size. It may be comparison operation, it may be addition operation, it may be logical operation, it may be relational operation, it may be assignment operation. So it could be anything with input size, while ignoring, please understand, we are supposed to ignore the lower order terms and constant factors needed for fixed operations. So in estimating the time, in representing the time with this notation, asymptotic notation, we are supposed to ignore the lower order terms and the constant factors, because उनकी जो rate of growth है in front of dominating higher rate of growth terms, that is insignificant. That's why they are ignorable. So the rate of growth of running time can be described using different notations like big O, omega, theta, asymptotic notations. The rate of growth can be described in terms of maximum value, in terms of minimum value, by means of these asymptotic notations, and hence the role of asymptotics in describing the rate of growth to define the language efficiency or algorithm efficiency. Now, boys and girls, the second aspect of a priori analysis. So the second aspect of a priori analysis is basically to determine the behavior of algorithm, types of analysis. Please understand, many people don't bother about this, हालांकि important topic है. Is to determine the behavior of algorithm or describe the behavior of algorithm or types of analysis. So what does this mean? This means that earlier, for rate of growth, as the input size increases, how is the time increasing? We are trying to do that mathematical modeling and say that the time is increasing proportional to a linear growth, quadratic growth, cubic growth, a polynomial of degree n or degree k, and then maybe exponential growth. Second aspect is, so listen to me, second aspect is, for a fixed input of size n, boys and girls, for a fixed input of size n, input की size fix कर लो आप, n elements. Elements are a1, a2, a3, a4, an. And I'm very sure you understand that. These fixed inputs a1, a2, so on up to an, fixed input of size n, I can have different arrangements of inputs which are called input classes. Increasing order, decreasing order, random order, total increasing, total decreasing, right? Non-increasing, non-decreasing, partial increasing, monotonically increasing, different input classes. Total random, different input classes. For each input class, the algorithm behavior may be different. Algorithm may behave differently, meaning algorithm may take different time for different input classes. So the input class, boys and girls, the input class for which the algorithm does maximum work to produce the output, that input class is called worst case input, and that behavior is called worst case behavior, and the time taken for that input class is called worst case time. ये है worst case complexity. Worst case complexity indicate the maximum time taken by the algorithm for any input class. जो भी input class के लिए algorithm सबसे ज़्यादा time लेगा, वो है worst case input, worst case time, worst case behavior. और ये जो methodology है, इसे हम कहते हैं worst case complexity. उसी तरह, in best case, the input class for which the algorithm does minimum work and hence taking minimum time, that is called best case input, best case time. And this is called best case behavior. Average case is not there in the syllabus, लेकिन सिर्फ आपको definition देता चलूं. Average case is slightly difficult. Average case क्या है? For each input class, you determine what is the time. For each input class, आप time determine कीजिएगा. What is the time for input class 1, input class 2, input class 3, and so on. Let's say, for example, the time taken for input class 1 is t1, this is t2, and so on, this is tn. And associated with each input class, you will have the probability function. The probability with which the algorithm take input from this. The probability with which the algorithm take input. हर एक input class की different probability होगी that the algorithm may take input from. That probability you associate. जैसे कि कह रहा हूं मैं आपको समझने के लिए, एक sorting algorithm है. Sorting algorithm को आप sorted input दोगे या unsorted input दोगे? Unsorted दोगे सर. What is the meaning of giving sorted input and again getting sorted input, sorted output? कोई मतलब नहीं है. तो अनसॉर्टेड इनपुट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कंपैरिजन टू सॉर्टेड इनपुट. ये प्रोबेबिलिटी. So every input class will be associated with probability, and average case time is always given by sigma weighted time, pi into ti, I going from 1 to k, sigma pi into ti, I going from 1 to k, average time. तो ये है average case time. It is a weighted average with respect to probability. समझ रहे हैं? ये है average time. So suppose, boys and girls, if I indicate the worst case time as w of n and best case time as b of n,
and average case time as A of n. The universal relationship between these three times is that the best time is always less than or equal to average, and average is less than or equal to worst. This is the universal relationship that we have for algorithm behavior, algorithm types of analysis. Best is always less than or equal to average, average is always less than or equal to worst. Remember this is an important point. ठीक है, तो ये है behavior of algorithm. So these are the two approaches of a priori analysis. One is to determine the rate of growth of time with increase in input size. Second aspect is to determine the behavior of algorithm, to determine find out what is the best case and worst case and average case behavior, average case time. So this these three relationships can well be described by means of a graph like this. The best is always the least, the lower curve, and this is the average one, and this is the worst case. This is the relationship between the three behaviors of the algorithms. ठीक है? So boys and girls, with this notation, with this discussion that we made, we are ready to launch our discussion on the main important topic of this chapter, which is nothing but understanding of asymptotic notations. And I'm very sure कि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा with regard to asymptotic notation definitions, which are used for describing the bounds of the functions, upper bound, lower bound and tight bound. मैं very quickly definitions को थोड़ा बताते हुए आगे बढ़ूंगा so that we can start the problem solving at the earliest. ठीक है? So as I said earlier, asymptotic notation is basically a mathematical tool used to describe the bounds of mathematical functions, upper, lower and tight. So for that I have notations classified into two types, big notation and small notation. Definitions एक बार देख लेते जाएंगे. So boys and girls, these are the 5 asymptotic notations. These three are basically in the category of big notations, and these two are under small notations. So let me write here. These are big notations. So asymptotic notations are classified into two types, big and small. Small is also called little. So asymptotic notations essentially is nothing but the language notation of describing the algorithm efficiency. Algorithm की categorization को describe करने के लिए, efficiency को describe करने के लिए 5 notations हैं. And among them, all of them, big O is super important. Most of the time we use big notations. ठीक है? So have a look here. So a function can have a function representing the time can have 3 bounds, upper bound, lower bound and tight bound, maximum value, minimum value and equal value when both upper and lower are same. Right. So these notations are categorized into two types, as I said, big notation and small notations. There are 3 big notations, big O, big omega and theta. Big O is used for describing the upper bound and big omega is used for describing lower bound, and theta will be used for describing the tight bound, and small o is proper upper bound and small omega is proper lower bound. Proper का मतलब क्या है हम आगे देखेंगे. तो सबसे पहले बात होगी big O की. I hope everybody understands this is a big O notation. So for a function f of n, boys and girls, for a function f of n, if you want to basically determine the upper bound, then that means I have to discover another function g of n. You have to find another function g of n for some constant c and n naught, such that f of n is less than or equal to c times g of n. I'm just revising the definition. I'm not explaining it. I hope you have understood. We have studied that earlier. So f of n is equal to order of g of n means cgn is an upper bound on f of n, that the function gcgn. And when writing the notation, we don't write constant c. If there exists some constant c and n naught, such that f of n is always less than or equal to c times g of n for large enough values of n. So this relationship should hold not for small values, maybe for large values of n, as n takes the value from n naught. N is, it is saying clearly here, for n greater than or equal to n naught onward. This n naught can be basically 10, 15, 5, it can be small value, it can be large value. It can be small value or it can be large value. ठीक है? Sometimes it can be 5, sometimes it can be 10, sometimes it can be 1000, sometimes it can be 1 lakh. So from 1 lakh to infinity. So it's a limiting definition. Limit f of n, right, by g of n as n tends to infinity. That is what is called as asymptotic behavior. So the value of the function f of n is less than or equal to cgn. So cgn become the upper bound on this. Cgn become the upper bound of this. So based on this, I can say that, boys and girls, I can say that for a given function f of n, I can have many upper bounds. For a given function f of n, I can have many lower bounds. And once I have many upper bound and many lower bounds, always in algorithm efficiency, we should take that bound, that function g of n which is closest, smallest upper bound. And in literature of mathematics, smallest upper bound, as you know, is known as supremum. आपने पढ़ा होगा supremum. So boys and girls, please remember, for a given function, जब भी आप upper bound determine कर रहे हो algorithm में, not mathematics, algorithm में,
you should always find supremum, means smallest closest upper bound. समझ रहे हो? Not largest, smallest. And वैसे ही lower bound के लिए you should always find an infimum. Infimum का मतलब है largest lower bound, closest and largest lower bound. समझ रहे हो? तो ऑलवेज सुप्रीमम एंड इन्फीमम याद रखिएगा. इसका मतलब अगर आप समझना चाह रहे हो, देखिएगा पहले डेफिनेशन देख लीजिएगा. एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन का मतलब ये है एफ ऑफ एन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी जी एन, एंड अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस इफ देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट सी एन एन नॉट such that here again n is greater than or equal to n naught for some constant c. If this relationship is being satisfied, this big O, this big omega, this big O. So boys and girls, repeatedly I am saying, for a given function f of n representing the time, we can have multiple upper bounds, we can have multiple lower bounds, but we must find that upper bound, that lower bound which is closest to the given function. Because जब हमें पता है कि हमारा algorithm time ले रहा है 10 seconds, मैं कहना चाहिए 10 seconds, I should not say 20 second, 30 second, 50 second, हालांकि वो भी करेक्ट है. ये ऐसे ही बात है कि अगर किसी ने पूछा कि सर मुझे यहां से ये प्लेस से एक 5 किलोमीटर दूर जाना है, कितना टाइम लगेगा, तो अगर आपको पता है कि आप आधे घंटे के अंदर रीच कर रहे हो, आधे घंटे के अंदर, सो यू शुड से हाफ एन आवर. You should not say I can reach within 10 hours. हालांकि मैथमेटिकली करेक्ट है, लेकिन आपको जब पता है कि you can reach within half an hour is more meaningful rather than saying 10 hours. समझ रहे हो बात? ये ऐसे ही एग्जांपल है, ये ऐसा ही मतलब है. So boys and girls, based on this I would like to project my first time. Like in my first algorithm I have determined the time as n square plus n plus 1. So what is the upper bound of this? इसका upper bound क्या है by definition? I can say that this function is less than or equal to n square plus n square plus n square, is it not? So therefore I would say it is less than 3n square whenever n is greater than or equal to 1. Whenever n is greater than or equal to 1, I can say that basically it is satisfying the inequality. So boys and girls, this is my constant c, this is my function g. So therefore I claim f of n is equal to, or t of n है यहाँ पर. So therefore I can claim that t of n by definition is order of n square. So in writing the notation we don't take into consideration the constant. Constant नहीं लिखा जाता. ठीक है? तो ये है order of n square. Sir, can I say it is also less than or equal to some constant c1 by n cube? हाँ sir. So therefore I can say t of n is also order of n cube. This is also correct. This is also correct. This is also correct. Can it be order of n power 4? Yes sir. All are correct. लेकिन इन तीनों में these are all upper bounds. So which is the closest upper bound? Which is the nearest upper bound? The nearest upper bound is order of n square. So it is more appropriate to say algorithmically that the time taken by this algorithm is bounded by order of n square rather than order of n cube and order of n power 4. हालांकि ये भी correct है, लेकिन वही reason है, this is my function supremum. ये supremum है. It is closest, nearest, smallest upper bound. So that's the point. Mathematically all are correct. But is it order of n? No, it is not order of n. Because n square plus n is not greater than. Rate of growth का concept है. n square की rate of growth ज्यादा होगी n से. तो n square cannot be less than n. Yes. So that's the point, boys and girls. इसी तरह ये function का अगर आप lower bound निकालने की कोशिश करोगे, so I can say here that n square plus n plus 1. Is it not less than or equal to 1? Yes, sir. So therefore it is omega of 1. It is omega of 1. Is it not less than or equal to n? Yes, sir. So therefore it is also omega of n. Is it not less than or equal to 1 into n square? Haan sir, this is also correct. So therefore it is omega of n square. So boys and girls, all these are omega. All these are omega of this. N square plus n plus 1 is omega of 1. Omega of n square, which is the largest, closest, largest lower bound. Largest lower bound is n square. So it is more appropriate to say that n square plus n plus 1 is equal to omega of n square. यहाँ पर constant 1 अलग है. ये 1 है, earlier was 3, but it is omega of n square. So it is bounded from upper by n square, bounded from lower by n square. जब ऐसे होगा कि एक algorithm का time upper bound lower bound दोनों का same है, तो then comes the role of theta. Theta will come into picture when the upper bound and lower bound of the functions are same. Lower bound and upper bound of the function representing the time are same, then comes the theta. But before I proceed to theta, एक बार asymptotic notation, this is the definition given in CLRS textbook. CLRS का थोड़ा अलग convention है, देखिएगा. CLRS का definition भी मैं चाहूंगा, कई बच्चों को ये confusion होता है. कई बच्चों को ये definition का confusion होता है. मैं थोड़ा सा यहाँ पर time spend करना चाह रहा हूँ बच्चों.
प्लीज माय रिक्वेस्ट है, एक बार अच्छे तरीके से सुनेगा. Parman says, देखिएगा, f of n is less than or equal to cgn, but not always. From 0 to n naught, the behavior of the functions is anything. कुछ भी behavior हो सकता है. Sometimes this function is more, sometimes this function is less, and so on. From 0 to n naught, the behavior of the two functions f and g is not properly defined. They are not converging. लेकिन परंतु, but from n naught to infinity, the behavior of the function is very clear. The relation of the functions is very clear. F of n is always less than or equal to cgn. तो ये जो value of n naught है, converging value जो है n naught की, it can be anything. It can be 5, it can be 2, it can be 3, depends on the function. Function के ऊपर depend करेगा. So you have to sometimes find that smallest value of n naught. You have to sometimes find the smallest value of c. You can do that, but in the GATE I have not seen such questions finding the value of n naught and finding the value of c. ठीक है. So this is the meaning of upper bound. So what does CLRS say with regard to upper bound definition? Boys and girls, please observe. People confuse here. I'm saying order of g of n is all functions f of n. Boys and girls, order of g of n is a set. Order of g of n is a set. What does that set includes? That set order of g of n, my dear students, that set order of g of n is including all functions f of n such that there exists positive constant cn and not such that f of n is less than or equal to cgn. You find all the functions f of n that belong to the set order of g of n which obey this inequality, mean the value of f will be less than or equal to cgn. तो इसका मतलब ये है कि सुनिएगा, when I write like order of n square, I am saying this is a set of functions f of n which satisfy the inequality that f of n is less than or equal to cgn. मतलब ये है कि अगर आप set notation में लिखने की कोशिश करोगे, this is the set order of n square, boys and girls. If I say this is the set of order of n square, so here in this set there may be n number of functions, many functions with the property that so all these are functions f of n such that the value of the f of n is less than or equal to n square. तो हो सकता है this is something like 10n, this may be like n square, this may be like n square plus n, this may be like n log n plus n. समझ रहे हो? This may be like 2 power 100, this may be like for example n plus log n, like that. So if you see all the rates of growth of all these functions, I hope you understand the meaning of rate of growth. The rate of growth of all these functions are less than n square. Do you agree? ये मतलब है order of n square. So order of n square is a set of all functions f of n such that f of n is less than or equal to cgn. So f of n belong to this set order of n square. ये concept बहुत ज़्यादा important है. This is the definition taken from the textbook of Corman. People mistakenly will try to put the function, like for example, if I put this as n cube, then this will be wrong. N cube does not belong to the set order of n square. N cube does not belong to the set order of n square. Why? N cube is not less than or equal to n square. N cube is greater than n square, rate of growth. So boys and girls, please remember, ये wrong है, this is wrong. That's why I have written with a different ink. So set order of n square is the set of all functions whose rate of growth is less than or equal to n square. उसी तरह big omega का भी definition यहाँ पे देख लीजिएगा please. Means cgn is the lower bound on f of n. Cgn is the lower, means f of n is greater than or equal to. So you can see here the value of f of n is greater than or equal to cgn. That is the lower bound. So cgn is the lower bound on f of n. मतलब diagrammatically समझने की कोशिश करोगे आप, this is the lower bound. ये lower bound. F of n is greater than or equal to cgn. Same definitions. F of n is greater than or equal to cgn. तो उसी तरह अगर आप मैं यहाँ पे rate of growth, if I try to describe omega of n square, is the set of omega of n square. So what will you put the functions as? यहाँ पे आप कौन से functions लिखोगे? All these functions f of n, boys and girls, all these functions f of n are dash than g of n. बोलिएगा, all these functions f of n, these are all functions f of n which are dash greater than or equal to n square, greater than or equal to n square, is it not? So that means this may be like n square, this may be like 10n square also, correct? And this may be for example n cube, this may be n power 4,
n square log n, n square log n. But here, for example, if I put like this is n, अगर ये मैं n लिखूं यहाँ पर if I write n, then this is wrong. All these are correct. All these are correct, but this is wrong. Why? N is not greater than n square. N is not greater than n square. N log n भी नहीं आएगा. N log n also does not belong to this set. Anand 24, 21. Shiva Kumar, that's what I said, you totally got confused. Shiva Kumar. Shiva Kumar, you got confused. Read the definitions again. ठीक है? Shiva Kumar, read the definition again, you totally got confused. My first definition has a different interpretation from the second definition of CLRS. As per CLRS, order of g of n is all functions f of n which satisfy the inequality that f of n less than or equal to c times g of n, that is big O. ये big O का definition है. And I am saying order of g of n is a set of functions. 2 power n is allowed, definitely. 2 power n is allowed. 2 power n is allowed. Why? 2 power n is greater than this. So this is correct. But very loose upper bound, loose lower bound है. Is it okay? Is it okay? ठीक है. तो चलिए बच्चों, when upper bound and lower bound are same, then comes the role of theta. This is the definition of theta notation, boys and girls. For any two functions f and g, f of n is theta of g of n if and only if f of n is order of g of n and f of n is omega of g of n. अगर एक फंक्शन का अपर बाउंड लोअर बाउंड सेम हो, like n square plus n plus 1 is order of n square, omega of n square, it is more appropriate to say it is theta of n square. So therefore, f of n is equal to order of g of n, f of n is equal to omega of g of n. Then comes the role of theta. Theta is when both are same. Like for example, f of n is equal to n square plus n is order of n square, is also omega of n square. So therefore it is theta of n square. Therefore it is theta of n square. ये है theta. इसकी growth देखिएगा. f of n की rate of growth is lying between as a upper bound and as a lower bound. As an upper bound, as a lower bound. F of n means you will write like C1 Gn is less than or equal to f of n, is less than or equal to f of n, less than or equal to C2 Gn. ये है theta का. ठीक है? So that is the meaning of it, tight bound. So boys and girls, after that I just very precisely tell you the definitions of small notations. Can anybody tell me what is the main difference between big notation and small notation? Let me see. How many of you can tell the difference between big notation and small notation, boys and girls? What is the difference? Loose upper bound का मतलब value of g of n is much greater than f of n. Loose upper bound का मतलब value of the function is much greater. Like f of n is equal to n is order of n square, order of n cube, order of n power 4. Nishu Kumar, don't put such comments. Yes. So small notation basically provide proper upper and lower bounds. Proper मतलब strictly less than. Strictly less than. तो यहां पर small o है, small o notation. This will provide the proper upper bound. We say that f of n is equal to small o of g of n if and only if the value of f of n is strictly less than c gn for all c greater than 0, but whenever same condition n greater than or equal to n naught. ये है. It is proper upper bound. मतलब strictly less than. It should be strictly less than, not equal. Equal नहीं आएगा. And earlier there was some constant c, but now here it is for all c. मतलब ये है कि you have to discover. You have to discover a function g. You have to discover a function g such that when multiplied by all values of c, it should be greater. Like for example, if I write a function f of n is equal to simply n, it is big O of n. This is correct.
but it is not big O small o of n, ये गलत है. But can it be small o of n square? हाँ, this is correct. Strictly less. N is strictly less than n square in terms of rate of growth. ठीक है? In terms of rate of growth, n is strictly less than n square. इसी तरह if you reverse the definition for omega, it will be small omega denoted by this notation, and we say that f of n is equal to small omega of g of n if and only if f of n is greater than cgn. ठीक है? Again we'll say for all c greater than 0, but whenever n is greater than or equal to n naught, same. तो बच्चों ये है definitions of small o and small omega. एक analogy है between asymptotic notations and real numbers given in the textbook of Corman, आप देख सकते हो. That will really be helpful for remembering the definitions. Less than or equal to big O, greater than or equal to big omega, equal to theta, less than small o, greater than small omega, ये हमेशा याद रखिएगा. Real royalty, don't put the questions here, it will distract the other students from the lecture. समझ रहे हो? Don't put, you put it to me. मुझे आप टेलीग्राम में डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, I will try to answer. This will distract the lecture. Please, please. So boys and girls, these are some important discrete properties with respect to asymptotic notations. Reflexive property will be satisfied by big O, and transitive reflexive will be satisfied by big O, big omega and theta, but not small o because I have strictly less than. Symmetric is only satisfied by theta, whereas transitive is the only property which is satisfied by all notations. F is order of G, G is order of H, F is order of H. F is omega of G, G is omega of H, F is omega of H. F is theta of G, G is theta of H, F is theta of H. ठीक है? So that's the point, transitive. Transpose symmetry will be again supported by big O and big omega. मतलब ये हम कहेंगे कि if F is order of G, if F is order of G implies that G is equal to omega of F. ये transpose symmetry है. उसी तरह small का भी लिख सकते हो आप, transpose symmetry. There is no meaning of transpose symmetry for theta. Theta का symmetry रहेगा. F is theta of G, G is theta of F, equal to sign है. ठीक है? ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. 1 मार्क क्वेश्चन आपको यहां पर पूछा जा सकता है. बॉयज एंड गर्ल्स, लेट अस नाउ टर्न टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, सम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन असिम्प्टोटिक नोटेशंस. प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. कनिका शर्मा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज के. ग्रो टॉलर एंड ग्रो टू लर्न प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है. बहुत सिंपल है ना. देखिएगा प्रॉपर्टीज में क्यों कंफ्यूजन हो रहा है. Suppose if I say f of n is equal to some n square, is it not order of n square? Reflexive property. ये reflexive property. F is order of f because we have less than or equal to. F is omega of f because we have less than or equal to. F is theta of f because I have equal to. But f is not small o of f. F is not small omega of g. Please understand. That's the important thing. चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज. ये क्वेश्चन का आंसर बताइएगा. इज और आर पूछा है. समेशन सीरीज के ऊपर आपने पता होना चाहिए सिग्मा पी क्यूब पी इज इक्वल टू 1 to n, is equal to 1 to n, sigma p cube. So what is the sum of cubes is given by the formula n into n plus 1 divided by 2 whole square. So the dominating term here is n power 4. N power 4. So it is order of n power 4, omega of n power 4, therefore theta of n power 4. This is correct. Theta of n power 5 नहीं हो सकता है. अपर बाउंड में ऑर्डर ऑफ n power 5 मैथमेटिकली करेक्ट हो सकता है. क्या n power 4 ग्रेटर देन n क्यूब है? हाँ सर, ग्रेटर देन n क्यूब है, ये भी करेक्ट हो सकता है. सो एज मेनी पीपल हैव सेड ACD इज करेक्ट. सिंपल क्वेश्चन ACD. तो माय डियर स्टूडेंट, बॉयज एंड गर्ल्स, समेशन सीरीज में एक्सट्रीम क्लैरिटी रखिएगा. हैव एक्सट्रीम क्लैरिटी इन समेशन सीरीज, देन ओनली यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताइएगा. उगांडा AI, प्लीज टेल मी द आंसर फॉर दिस. यस चैतन्य, दैट्स राइट. चैतन्य दावे, सही बात है. इसका आंसर बताइएगा प्लीज. सिग्मा पी पावर हाफ p इक्वल टू 1 to n. सिग्मा p पावर हाफ p इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू q. फाइंड द वैल्यू ऑफ q. असिम्प्टोटिक नोटेशन में बताइएगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ q असिम्प्टोटिक में.
न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप मतलब आपने आंसर देना है, ऑप्शंस नहीं है. दिस विल बी ऑर्डर ऑफ डैश, दिस विल बी ऑर्डर ऑफ डैश. Come on, boys and girls. Yes. स्क्वायर रूट ऑफ n नहीं होगा निशु कुमार, रूट n नहीं है. Boys and girls, I can say that summation is equivalent to integration. I can equate this as, I can rewrite this as integral p power half dp. P is equal to 1 to n. इंटीग्रेट कर सकते हो आप, इंटीग्रेट कर सकते हो. सो बाय रूल ऑफ इंटीग्रेशन दिस इज नथिंग बट n पावर हाफ. अच्छा पहले p लिख लो आप, p पावर हाफ प्लस 1, इंटीग्रल रेंज फ्रॉम 1 to n. सो दिस इज नथिंग बट n पावर 3/2, n पावर 3/2 minus n. So therefore n power 3/2 is dominating term. It is order of n root n. It is order of n root n. Order of n power 3/2 using basic rule of integration. X integral x power n is x power n plus 1. वो rule हम यहाँ पर use कर रहे हैं. So therefore the answer for this is n root n. चलिए next question. ये भी वही है, डिलीट करना होगा. सेकेंड, कुछ गड़बड़ है. Come on, give me the answer for this. Arrange the following functions in increasing orders of rates of growth. बोलिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट्स ऑफ ग्रोथ. उगांडा एआई बोलिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए फंक्शंस का. इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए डिटरमिन करने के लिए देयर आर टू अप्रोचेस. वन अप्रोच इज यू कैन टेक लॉग. अगर आप लॉग से भी कन्विंस नहीं हो पा रहे हो, लॉग से भी आप डिटरमिन नहीं कर पा रहे हो, द अदर अप्रोच इज यू हैव टू बेसिकली सब्स्टिट्यूट लार्ज वैल्यूज ऑफ एन. लार्ज वैल्यूज ऑफ एन समझ के और सब्स्टिट्यूट करके डिटरमिन करना होगा. कम ऑन, राइट डाउन द फंक्शंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ रेट्स ऑफ ग्रोथ. स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट. सबसे पहला फंक्शन कौन सा आएगा बताइएगा प्लीज. दिस इज इन द कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल. ये है एक्सपोनेंशियल, राइट. दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल. तो 1 2 3 4 फंक्शंस है पॉलिनोमियल के, चार फंक्शंस है पॉलिनोमियल के. तो बताइएगा सबसे पहले कौन आएगा. Among 4 polynomials, who will come first? F7 आएगा. हाँ बिल्कुल सही है. रूट लॉग एन इज द लेस्ट. रूट लॉग एन के बाद कौन आएगा. लेस देन. बोलिए, रूट लॉग एन के बाद क्या आएगा. रूट एन आएगा. रूट एन के बाद क्या आएगा. एन लॉग एन आएगा. दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर रेट ऑफ ग्रोथ है. रेट ऑफ ग्रोथ लिख रहा हूं मैं 100 एन लॉग एन. दोनों की रेट ऑफ ग्रोथ सेम है, हालांकि वैल्यू ज्यादा रहेगी एन लॉग एन की, लेकिन सिमिलर रेट ऑफ ग्रोथ. ठीक है. F8. तो ये हो गया है. फिर नेक्स्ट पॉलिनोमियल कौन सा है. रूट लॉग एन इज ओवर, रूट एन इज ओवर एंड एन लॉग एन एंड ये हो गए पॉलिनोमियल के 4 फंक्शंस हो गए हैं. पॉलिनोमियल के 4 फंक्शंस हो गए. नेक्स्ट बॉयज एंड गर्ल्स, नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल में 1 2 3 4 एक्सपोनेंशियल्स है. 2 पावर n, 3 पावर n, n फैक्टोरियल, n पावर n. तो देखिएगा 2 पावर n इज लेस देन 3 पावर n, लेस देन 3 पावर n, लेस देन n फैक्टोरियल, लेस देन n पावर n, लेस देन n पावर n. ये हमारा करेक्ट फंक्शन है.
These are our final answer, boys and girls. Is it okay? Everyone convinced? Everyone convinced with this? ये भी एक टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी, so you need to have extreme clarity with this. You need to have extreme clarity with this. Arranging the functions in increasing orders of rates of growth. चलिए यही आंसर है, देखिएगा प्लीज. And then I will give this as homework. You do this as homework. कुछ और मैं यहाँ पे करूंगा. ये भी एक आप 2 क्वेश्चंस एज होमवर्क कर लीजिएगा. अगर जहां पे भी डाउट हो आपको मेरे को कनेक्ट कर सकते हो ओवर टेलीग्राम चैनल. These 2 questions you worked as homework, ठीक है. And now I want you to work out these 2 functions. देखेंगे n factorial के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. n factorial के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. The value of n factorial and n power n. What is the relationship between these two? अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले. So please remember that the value of n factorial is equal to n into n minus 1 into n minus 2 so on up to 1. So this is definitely less than n power n, मतलब n into strictly less than है ये, strictly less than. So therefore I can say that n factorial is strictly less than n power n. So once it is strictly less than n power n, I can say for sure that n factorial is nothing but small o. To be honest or to be more precise, n factorial is small o of n power n. लेकिन every small o is also big O, boys and girls. Every small o is also big O. So therefore this is also big O of n power n. Every small o is also big O, but every big O is not small o. Every big O is not small o. So n factorial is strictly less than n factorial. So to be more precise, n factorial is small o of n power n. Because it is every small o is also big O, so it is big O of n power n also. लेकिन परंतु n factorial, please remember, n factorial is not equal to omega of n power n. ये गलत है. And will not be equal to omega of small omega of n power n. दोनों भी गलत है. Because n factorial value जो है, देखिएगा common simple maths है. This value can never be more than n power n. So it is not omega, so it is not theta. So boys and girls, the conclusion is n factorial is not equal to theta of n power n. ये याद रखने का पॉइंट है. लेकिन परंतु n log of, if I take, boys and girls, log of n factorial is equal to order of dash. बोलिए, log of n factorial is order of dash, boys and girls. Important point है, important discussion है. Log of n factorial will be order of dash. Log of n factorial is dash. Log of n factorial is dash. Come on. What is the value of log n factorial? Yes, it is order of n log n and is also omega of n log n. You can prove this, and therefore it is theta of n log n. ये very important point है. Log of n factorial is theta of n log n, but n factorial is not theta of n power n. Please understand. Then what about omega of n factorial? We can say n factorial is omega of 2 power n. This may be correct. 3 power n, 4 power n, it may be correct, but it is not n power n. How do you prove this? This you can prove using Stirling's approximation. You can prove this. I'm not doing it, lack of time. Stirling's approximation से आप ये prove कर सकते हो. Please remember important point. ये potential question हो सकता है. Using Stirling's approximation आप prove कर सकते हो. Log n factorial is order of n log n, omega of n log n, theta of n log n. But n factorial is not theta of n power n. N factorial is order of n power n, but not omega of n power n. Please remember that. Omega can be 2 power n, 3 power n, n square, n, something like that. What is Stirling's approximation? I hope you remember the formula, root of 2 pi n. Stirling's approximation का formula.
n बाई ई पावर n, ये स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन से आप प्रूव कर सकते हो। ये n फैक्टोरियल की वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल इन स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन, यहां से आप प्रूव कर सकते हो log n फैक्टोरियल विल बी ऑर्डर ऑफ n log n, सो दैट द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू काफी है। हाँ ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन लेट अस बी फास्ट इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। नीत धामलिया क्या पूछना चाह रहे हो? इक्विवेलेंस क्लास वाला मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन टू से इक्विवेलेंस क्लास वाला? इक्विवेलेंस क्लास वाला का मतलब क्या है? नीत धामेलिया क्लास वाला, गेट वाला, कुछ ऐसा ही कह रहे हो आप, क्या मतलब है? proofs are not important. मोहंती, श्रीजी मोहंती, proofs are not important for writing GATE exam, लेकिन proofs are important for understanding the concepts. Mayback, I am doing well, I hope you are also doing well. तो बॉयज एंड गर्ल्स इसका आंसर देखिएगा, दिस फंक्शन इज n into log n, ये फंक्शन है n into log n, which of the following statements is f is omega of n log n, हाँ it is order of n log n, omega of n log n, right? So is this function greater than, बोलिएगा, is this function greater than, is this function n log n, is it greater than n log n? No, it is not greater than. Are you getting? Shiva Kumar, Nishu Kumar, can I say omega का मतलब, right, f of n, n log n, is it greater than n into log n, correct or not? Yes, it is correct. Rishabh Keshari, Shivam Kumar, Amit Paswan, is this okay or not? This f of n, we are saying this g of n, f of n is omega of g of n, means f of n should be greater than this. समझ रहे हो? This big omega, is it not greater than or equal to? हाँ sir, greater than or equal to, because log n is greater than log n, so it is true, correct? So therefore this is correct. Is it theta of n square? No, it is not theta of n square, because n square is greater than this. F of n is equal to order of log n, ये सही है. So therefore A and C are correct. A and C are correct. हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइएगा आंसर इसका. Tell me the answer for this. Come on, boys and girls. F of n is order of g of n, then g of n is order of f of n. You are given that for all n f of n is greater than, matlab f of n and g of n are positive functions. Can I say that always f of n is order of g of n, then g is also order of f? No, is not correct. F plus g is always max of f on g, correct? F of n is omega of g of n, means then g of n is order of f of n. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि f is greater than or equal to cgn, so it means g of n is less than or equal to f of n, so therefore this is correct. मतलब 1 and 2 and 3 are correct, 2 and 3 are correct, so therefore the correct answer is C. Correct answer is C. समझ रहे हो? Greater than or equal to, grow to learn, आपने grow करना है to learn, आपने grow करना है to learn, क्योंकि अब मैं यहाँ पे डेफिनेशंस डिटेल में आपको नहीं समझा सकता ना, महा रिवीजन है ये. आई एक्सपेक्ट दैट यू आर कन्वर्जन विद डेफिनेशन, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूं. यू शुड हैव प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशंस, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बॉयज एंड गर्ल्स, इसके ऊपर आने से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा. कम ऑन टेल मी द आंसर फॉर दिस. ये गेट क्वेश्चन है, f of n whole square है वो. In the second bit b bit you have f of n is equal to order of f of n whole square.
You should go for mock test, brainwave broadcast. You should go for mock test. You should appear at least 3 to 4 mock tests now. Boys and girls, what do you say about this? F of n is order of g of n. Does it imply that 2 power f of n is equal to 2 power g of n? Is it true? सुनिएगा, I can take counter example for this. Suppose imagine f of n is equal to 2n. G of n is equal to n, boys and girls. Suppose f of n is equal to 2n, g of n is equal to n. Sayan Datta, please take this example. Please take this example. F of n is equal to 2n and g of n is equal to n. So here I can definitely say that f is order of g. F is order of g. I can say this is true. F is order of g. ये true है. परंतु लेकिन if I raise this to the power of 2, boys and girls, if I raise this to the power of 2, 2 power 2n, is it, as a question I'm asking you, is it order of 2 power n? जब पावर में हम रेज करेंगे तो क्या इनइक्वालिटी सही रहेगी? विल इट बी ट्रू? बोलिए. 2 power 2n is 4 power n, boys and girls. 4 power n is not order of 2 power n क्योंकि 4 power n की रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ के है 2 power n से. The rate of growth of 4 power n is greater than 2 power n. So this is not correct. This is not correct. This is a counter example to prove that statement 1 is wrong. So therefore ये wrong है, this is wrong. उसी तरह second example, f of n whole square. If I take a counter example for f, I can take any function, like I can take 1 by n. Let f of n is equal to 1 by n. Then what about f of n whole square? What about f of n whole square? It will be 1 by n whole square, 1 by n square. Boys and girls, 1 by n is order of 1 by n. But is 1 by n order of 1 by n square? नहीं sir, 1 by n is greater than 1 by n square. 1 by n की rate of growth 1 by n square से बढ़ के है. अगर आप पूछोगे कैसा, तो मैं सिर्फ कहना पड़ेगा I don't know. अगर आप वैसा कहोगे सर हाउ 1 by n की रेट ऑफ ग्रोथ 1 by n स्क्वायर से बढ़ के है, तो मुझे कहना पड़ेगा आई डोंट नो. समझ रहे हो? So you should have basics of maths. You should have basics of maths. So therefore I can say that f of n is not order of f of n whole square. समझ रहे हो? काउंटर एग्जाम्पल है ये. So therefore a is false, b is false. A is false, B is false. Both are false. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, यहां पर लूप कॉम्प्लेक्सिटी पर फोकस करेंगे. लूप कॉम्प्लेक्सिटी इज अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हिच यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम. काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. उसके बाद हम फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग रिकर्सिव फंक्शंस. बोथ आर नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन. गेट फ्लो F9U both are not decreasing. Second example में 1 by n is decreasing, but 2n and 2n are increasing functions. 1 by n, 1 by n square both are decreasing, correct. लेकिन 1 by n की रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा है 1 by n स्क्वायर से. अगर आप पूछोगे कैसे, तो बेटा सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज. 1 by 2, 1 by 4, 1 by 2 is greater than 1 by 4. ये सिंपल चीजें हैं. महा रिविजन में ये चीजें बोलना या बताना मीनिंगलेस है बेटा. महा रिविजन में मीनिंगलेस है, आपने पढ़ना होगा. ठीक है, चलिए. लूप कॉम्प्लेक्सिटी में बेसिकली यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स, लाइक सिंपल लूप है, नेस्टेड लूप्स होगा, डिपेंडेंट लूप्स, इंडिपेंडेंट लूप्स. और लूप कॉम्प्लेक्सिटी का वन ऑफ द सिंपल अप्रोच ऑफ सॉल्विंग इज अनफोल्डिंग प्रोसेस. अनफोल्डिंग प्रोसेस से लूप की कॉम्प्लेक्सिटी आप अच्छी तरीके से डिटरमिन करते हो. चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट करें, आई मीन रिवाइज करेंगे. टेकिंग द फर्स्ट वन, वेरी सिंपल. ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ये तो लूप नहीं है एक्चुअली. Anyway, the time complexity is order of dash. देखेंगे कौन बताएगा. What is the time complexity of this? loop नहीं है, simple statement है. फिर भी आप कह सकते हो what is the complexity of this. Oh, grow to learn. It is not n square. बेटा n is a simple natural variable. Grow to learn. n is a simple input. n is a simple input. ठीक है, गेट फ्लो, नो प्रॉब्लम. दिस ऑर्डर ऑफ 1, ये ऑर्डर ऑफ 1 है, कांस्टेंट टाइम, बिकॉज ये सब ऑपरेशंस है. स्टार प्लस डिवाइड, 3 यूनिट्स ऑफ टाइम इज द टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम. 3 यूनिट्स, ऑर्डर ऑफ 1.
ऑर्डर ऑफ 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूप है, बताइएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस। ये स्टैंडर्ड लूप से बच्चों, स्टैंडर्ड लूप्स का टाइम हमेशा याद रखिएगा, मुझे ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। कम ऑन, वर्क आउट दिस वेरी फास्ट। स्टैंडर्ड लूप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी तरीके से याद रखिएगा। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस? कितने बार के आर के प्रिंट होगा? के आर के इज माई शॉर्ट टर्म, शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेम, माई नेम। ये लॉग एन है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दिस इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन। अगर कोई बच्चे को दुश्वारी है समझने में तो मुझे बोलिएगा, दिस ऑर्डर ऑफ लॉग एन। क्योंकि वैल्यू ऑफ आई जो इंक्रीज होगी ऐसे होगी 1, नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू बनेगी 2 पावर 1, नेक्स्ट टाइम 2 पावर 2, नेक्स्ट टाइम 2 पावर 3, लाइक दैट सम 2 पावर k। So last time for which it repeats is 2 power k equal to n. So k denotes the number of iteration. Time is nothing but order of k, but what is k? The value of k is equal to log n. Simple approach of solving this. Simple approach of solving this. इसी तरह for example boys and girls, if I would have written here, boys and girls, if I would have written loop का generalization दे रहा हूं मैं आपको, I is less than or equal to n, I is equal to I star 3। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बोलिए? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बोलिए? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? दिस इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ लॉग एन। क्यों? ये दिस विल रिपीट फॉर लॉग एन टाइम, लॉग एन टू बेस 2, यहां पर लॉग एन टू बेस 3 होगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, इन asymptotic notation base of log is ignored, just like constants are ignored, base of log is ignored, base of log is ignored। So therefore log n to base 3, log n to base 2 both are written as order of log n, both are written as order of log n। इसका जनरलाइज फॉर्म क्या होगा बच्चों? इसका जनरलाइज फॉर्म होगा, रिमेंबर, इफ आई राइट ए लूप I is equal to 1, I less than or equal to 1, I is equal to I star a is a constant, a is a constant, then the time complexity, this repeats for log n to base a, log n to base a will be written as simply order of log n। ये रूल के जैसा याद रखिएगा, as a rule you remember this, you remember this as a rule, you remember this as a rule, log n to base a। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह अगर मैं लूप लिखूंगा फॉर एग्जांपल लाइक दिस, फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू n प्लस प्लस i, दिस लूप रिपीट फॉर n टाइम। ठीक है, अगर मैं लूप लिखूं फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू n, i इक्वल टू i प्लस 2, दिस लूप रिपीट फॉर n बाई 2 टाइम्स। अगर मैं लूप लिखूं फॉर i इज इक्वल टू 1, i less than or equal to n, I is equal to I plus a is a constant, a is a constant, this loop will repeat for n by a times। और ये सारे का टाइम अगर आप ऑर्डर में लिखोगे, is all order of n, जनरल फॉर्म, all general forms। These are important things to remember। Okay, a is a constant, a is a constant। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये अभी हमने कहा, अभी देखा हमने log n to base 2 है, log n to base 3 है, दिस इज ऑल्सो log n to base 3 ऑलरेडी डन। इसका आंसर बोलिएगा प्लीज, इसका आंसर बताइएगा प्लीज। सोहेल, मैं आंसर ही दे रहा हूं आपको। सोहेल, आई एम ऑलरेडी गिविंग दी जनरल फॉर्म्स ऑफ i इज इक्वल टू i स्टार 2 i, पूरे जनरल फॉर्म दे रहा हूं मैं। इसका आंसर बताइए क्या है जल्दी से। outer loop is repeating for n time, this loop is repeating for 10 times, so total number of time this loop is repeating for 10n, 10n is nothing but order of n, order of n, order of n। चलिए नेक्स्ट बताइएगा इसका आंसर, इसका आंसर बताइएगा। पीपल जनरली मेक मिस्टेक हियर।
How many times GFG is printed in theta form? Okay. Tell me the answer for this fast. Because these are like brush up questions. Anand 21 is saying A. Sohail is saying B. Many people are fluctuating between A and B. Okay, Uganda, very good. I would appreciate, Uganda, if you try to connect with me on my Telegram channel. Uganda, I would appreciate if you try to connect with me on my Telegram channel or WhatsApp. Later at your time of convenience, connect with me after the class on my Telegram channel or WhatsApp. Shiva Kumar is saying D. Shahid is also saying D. Boys and girls, यहाँ पर देखिएगा आपने अनफोल्डिंग करना है. जनरली बच्चे अगर आप जनरलाइज वे में जाएंगे, ये लॉग इन है, ये एन है, एन लॉग एन डाल देते हैं बच्चे, आंसर गलत है. अनफोल्डिंग में क्लैरिटी के साथ जाइएगा प्लीज. First value of j is n. So first time for loop repeat for n times. Next time for loop repeat for n by 2 times. N by 2. J is equal to j by 2. Next time it will repeat for n by 4 times. Next time n by 8 times. ये जाते जाएगा plus n by 2 power k times. K is the number of iteration. This is like n by 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power k. So therefore, boys and girls, this is nothing but total number of times is n into sigma 1 by 2 power I is equal to 1 to k. So which is nothing but n into 1 minus 1 by 2 power k. तो ये बनेगा n minus 1. इसका ऑर्डर लोगे तो आप theta of n n is equal to 2 power k. Yes, you should meet me, Uganda. I will give you a gift if you get 100 within 100 rank, and when you meet me I will give you the gift. ठीक है? So boys and girls, the answer for this question is theta of n. ये देखिएगा. चलिए next question. Come on, tell me the answer for this. All those students, I will try I'm just making a simple announcement. All of our students, maybe through subscribe or through YouTube, whoever basically is getting a rank, single digit or double digit rank, I try my level best to convince our team, to convince our management to give a gift from our side. ठीक है? You have to basically show that you are our student, and then I will convince my team, our management to give a gift from our side. ठीक है? So boys and girls, what is the answer for this? What is the answer for this? So n is equal to 2 power k. अगर आप देखोगे यहाँ पर I is equal to 1, यहाँ पे देखिएगा unfolding process, I is equal to 1 क्या हो रहा है, j is equal to 2, right? For imagine, let's say imagine the value of n is equal to 16, n is equal to 16, 2 power 2, right? K is equal to 2, अगर आप लोगे n की वैल्यू बनेगी 16, 2 power k. तो यहाँ पर j की वैल्यू देखिएगा, फर्स्ट 2 होगी, नेक्स्ट टाइम 4 होगी, नेक्स्ट टाइम 16, मतलब कितने बार प्रिंट होगा CSIT? 3 टाइम्स प्रिंट होगा, 3 टाइम्स. अगर फर्ज करिए k की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू बनेगी 2 power 8, 2 power 3, दैट इज 256, 2 power 8. तो मतलब j की वैल्यू क्या होगी? j की वैल्यू 2 होगी, 4 होगी, 16 होगी, देन 256, 4 टाइम्स. So here it is going to print it 4 times. मतलब k equal to 2 3 times, k equal to 3 4 times, k equal to 4 5 times. तो मतलब ये है in general
for a value of k, number of times, that means the time complexity that it is doing or the number of times it is printing is k plus 1. ये जो print होगा, ये जो loop execute होगा, k plus 1 times execute होगा per iteration. कितने iterations है? n. So total time complexity बनेगी n into k plus 1. k की value क्या है from the given condition? k की value बनेगी log log n. k की value है log log n. So therefore n into log log n. n into log log n plus 1. So therefore it is answer B, n log log n. ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो चलो, लास्ट में बताएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. लास्ट में बताएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है. बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे. बताइए इसका. अब देखिएगा यहां पर अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग रिकर्सिव एल्गोरिथम. बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट इज अ फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग रिकर्सिव एल्गोरिथम्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. फर्स्ट अप्रोच जो आपने लर्न करना है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड. बैक सब्स्टिट्यूशन. Back substitution method या repeated substitution method is one of the universal versatile method for solving the time complexity, determining the time complexity of recursive algorithms. Back substitution method. I am very sure you are well knowledgeable. Simple example लेते हैं. ये देखिएगा, ये function है. Time complexity is modeled by means of a mathematical recurrence. Mathematical recurrence आपको derive करना पड़ेगा. If I say time complexity is represented by t of n, if n is greater than 0, no, n equal to 0, constant time, for example, n equal to 1, or maybe for n equal to 1, greater than 1 कर लो आप इसे, to be more precise, okay, some constant time, n equal to 1. Otherwise, the time taken is some constant a for comparison, plus time for printing another constant time, plus recursive call fun of n minus 1, तो ये बनेगा t of n minus 1. So you can write it as t of n is equal to t of n minus 1. a plus b is another constant d. ये हमारा recursive equation है. So boys and girls, for every recursive algorithm, you will have to derive a mathematical recurrence. This is called mathematical modeling. इसे कहते हैं mathematical modeling. Converting a recursive algorithm into a mathematical model. Recursive algorithm का एक simple approach है solving, that is back substitution. हमारा objective क्या होगा? Objective is to eliminate the recurrence so that I can get a function of like polynomial type, exponential type or some type, so that you can take asymptotic bound. तो इसे कैसे solve करोगे? You will find the value of t of n minus 1. t of n minus 1 will be t of n minus 2 plus d. Substituting here we'll get t of n is equal to t of n minus 2 plus d ये बनेगा 2d. equation 2, ये equation 1 है. So you can write this as a generic way, t of n minus k plus kd. ठीक है, where I say the value of n minus k is equal to 1 implies k is equal to n minus 1. n equal to k भी लिख सकते हो आप, 0 भी लिख सकते हो, there is no problem. So this will become like t of 1 plus d into k is n minus 1. t of 1 is what? t of 1 is constant c. So ये function बनेगा c plus dn minus d. ये हमारा function है finally after substitution. So therefore if you find the order of it is order of n, omega of n, theta of n. So boys and girls, the time complexity of this is nothing but theta of n. Standard form से हमेशा याद रखिएगा. ये just review है. I expect that you have already done this. चलिए इसका फंक्शन, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइएगा. मैथमेटिकल मॉडल क्या होगा? रिकरेंस क्या होगा? निशु कुमार, चैतन्य दावे, कुमार सौरभ, नीरज चौधरी. इसका रिकर्सिव इक्वेशन लिखिए. रिकर्सिव इक्वेशन क्या होगा? रिप्रेजेंटिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. रिकर्सिव इक्वेशन क्या होगा? रिप्रेजेंटिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. इसका रिकर्सिव इक्वेशन बनेगा t of n is equal to constant time for n equal to 1 or n equal to 0 and constant plus n plus t of n minus 1. क्योंकि ये n टाइम रिपीट हो रहा है लूप, तो n plus t of n minus 1. तो हमारा इक्वेशन बनेगा t of n is equal to t of n minus 1 plus n plus a. ये हमारा इक्वेशन है. एंड बॉयज एंड गर्ल्स, यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन अगर आप इसे सॉल्व करोगे, this will be theta of n square. This will be theta of n square. सही है ना?
बैक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने पर आपको पता चलेगा दैट इज थीटा ऑफ एन स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए, देखेंगे कौन बताएगा। Yes, time complexity of this will become T of n is equal to, सुनिएगा, T of n is equal to डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं T of n minus 1 प्लस ये है लूप जो रिपीट हो रहा है, दिस इज फॉर log n टाइम, तो दिस इज नथिंग बट log n plus log n minus 1 plus log n minus 2 plus log n minus 3, तो दिस इज नथिंग बट log of n factorial, ये बनेगा log of n factorial which is theta of n log n, theta of n log n. So time complexity of this algorithm is theta of n log n, theta of n log n. चलिए उसी तरह इसका बताइएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये एक अनदर फॉर्म है जी, अनदर फॉर्म। ओके, log n होगा। सोहेल, सोहेल बालम, शायद आपने प्रैक्टिस नहीं की है अच्छी तरीके से। सोहेल बालम एंड एस्थेटिक, यू हैव नॉट डन इनफ प्रैक्टिस। n log n भी नहीं है। द रिकरेंस इज, लिसन, T of n is equal to constant time for n equal to 2 and is equal to constant time a plus t of root n, ये हमारा रिकरेंस है। a is the time for comparison. तो when you solve it using back substitution method, when you solve it, तो क्या होगा, T of n is equal to T of root n plus a, equation 1. You can write this as T of n power half plus a. So finding the value of T of n power half, ये बनेगा T of n power 1 by 4
plus a equation 2, back substitute in equation 1 and rewrite t of n बनेगा t of n power 1/4 can be written as 1/2 square plus a 2a. ठीक है, so generalized form में n power 1/2 power k बनेगा plus k such that n power 1/2 power k should become equal to boundary condition. So from here the value of k is log n. K is log n. So this t of 2 plus a into log n. T of 2 is constant plus a log n. So which is theta of, ये log n loop है, याद रखिएगा. This loop is order of log n. Okay? ठीक है, ये भी सिंपल है, हो चुका है, we have already done. You can work out this using back substitution as matter of practice. हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए the second approach of solving recurrences, approach 2 or method 2, recurrence, some special form of recurrences, method 2, approach 2 that you should be familiar for solving recurrences, particularly of type divide and conquer, जो हम next discuss करेंगे. जो divide and conquer recurrences बनेंगे आपके like of the form like t of n is equal to a t of n by b plus f of n. These type of recurrences जब आपको बनेंगे, और when you try to solve, then what is the best method for solving it? The best method for solving it is by master method. By master method. तो मैं यहाँ पे आपको master method तो explain नहीं कर सकता, because that's a very, I mean, will be time consuming operation, और मेरा intention आपको explain करना नहीं है. तो I basically assume that you are well versed with master method. अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा master method. Master method is defined for 3 cases. Case 1, मैं नहीं लिख रहा हूं case 1. Case 1 is based on big O notation. Case 2 के अंदर 3 सब cases है, and this is based on theta notation. Case 3 is based on omega notation. ठीक है. इन केस 1 में खाली कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं पूरा लिखने के बजाय t of n is theta of n power log a to base b. यहां पर 3 सब केसेस में it will be like theta of n power log a to base b most of the time into log n power k for case 1, k plus 1 for case 1. यहां पर बनेगा t of n is equal to theta of f of n. केस 1, 2, 3 के फाइनल कंक्लूजन्स मैं लिख रहा हूं, assuming you write all the other cases, assuming you write the definitions. ये 3 केसेस इंपॉर्टेंट है. आपने पढ़ा हो तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. चलिए इसका आंसर बताइए यूजिंग मास्टर मेथड. इसका आंसर बताइए प्लीज. यूजिंग मास्टर मेथड इसका आंसर बताइए. What is the value of log? निशु कुमार बताइए, what is the value of log 3 to base 4? निशु कुमार, what is the value of log 3 to base 4? Chaitanya Dave or anyone else? Kanika Sharma, what is the value of log 3 to base 4? Sufia Ahmed, समझाने के लिए पूछ रहा हूं, what is the value of log 3 to base 4? 1.26. Uganda AI is saying 1.26. 1.26 ऐसा होगा. log 4 to base 4 is 1. log 4 to base 4 is 1, boys and girls. समझ रहे हो? log 4 to base 4 is 1. log 3 to base 4 should be 1.26. Come on.
log 4 to base 3 1.26 है, log 3 to base 4 लेस देन 1 रहेगा ना। बच्चों क्या कर रहे हो, log a to base b है ना 0.79, log a to base b, log 3 to base 4 0.792, ठीक है। तो which case still case 1 will apply because n power half is it order of n power 0.79 minus epsilon. This is correct. This is correct. Minus 0.79. So option A, I mean case 1 apply by case 1, therefore n power log 3 to base 4, theta of n power log 3 to base 4. A is correct by case 1. This is true by case 1, boys and girls. By case 1 this is true. चलिए नेक्स्ट इसका आंसर बताइए बाय केस 1, गेट क्वेश्चन है, दिस इज अ गेट क्वेश्चन बाय मास्टर मेथड। इसका आंसर बताइए फास्ट। ओके प्रशांत कुमार RW6H करेक्ट। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, इसका आंसर बताइए। द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू √2, the value of b is equal to 2, log √2 to base 2 is equal to half. Okay, so it is n power half. I mean I will have to check like this, log n is it order of n power half minus epsilon. For a very small value of epsilon √n होगा, ये almost √n होगा, so log n is order of √n. This is correct, case 1. Therefore by case 1 T of n is equal to theta of n power log a to base b half. So value of r is equal to half, 0.5. Value of r is equal to 0.5. Simple case. देखिएगा usefulness of master method. How useful is master method? So you should become master of master method, boys and girls. You should become master of master method to solve these questions quickly. चलिए next question. ये आंसर आप ओरली बोल सकते हो विदाउट सॉल्विंग, बैक सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा। मास्टर मेथड यहां पे आप अप्लाई नहीं कर सकते यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? अगर मेरा इक्वेशन ऐसे हो, याद रखिएगा जनरलाइज फॉर्म 2t of n minus 1 plus constant. रिमेंबर दिस इज ऑर्डर ऑफ 2 power n. अगर आप सिंप्लीफाई करोगे यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट फॉर्म आपको बता रहा हूं, हमेशा याद रख लीजिएगा, दिस विल बी ऑर्डर ऑफ 2 power n. इसी तरह if I do it for 3tn minus 1 plus constant, this will be order of dash. This will be order of dash. Come on, Prashant Kumar, Shiva Kumar. You want lunch break? Yes. This will be 3 power n. So therefore A will be correct. A will be correct. चलिए नेक्स्ट, यहां पर अब मैं एक और थर्ड अप्रोच आपको समझाना चाह रहा हूं, एक थोड़ा सा डील करना चाह रहा हूं, रिकर्शन ट्री मेथड, बॉयज एंड गर्ल्स। रिकर्शन ट्री मेथड फॉर सॉल्विंग रिकरेंसेस, अनदर इंपॉर्टेंट टूल। थोड़ा सा इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद एक बार डिस्कस कर लेंगे वेदर टू गो फॉर ब्रेक और नॉट। ठीक है। रिकर्शन ट्री इज ऑल्सो, रिकर्शन ट्री अप्रोच इज ऑल्सो जैनेन्द्र सिंह, अगर आपके मल्टीपल टर्म्स हो, देन बेस्ट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग इट यूजिंग ट्री अप्रोच। तो रिकर्शन ट्री मेथड की आइडियोलॉजी क्या है देखिएगा, माय प्रॉब्लम T of n is equal to 2tn by 2 plus c. T of n is equal to 2tn by 2 plus c. How can I write this in the form of recursive form? This is my function T of n. This is expressed in terms of two subproblems, that is T of n by 2 and T of n by 2. And the effort that you are putting for solving at the level of n is constant time. So therefore this is c. अब यहाँ पे Tn by 2 substitute करो, this will be c plus c 2c. Next level पर आपका total work done will be 2c. Next level पर क्या होगा, इसके दो सब प्रॉब्लम्स, T of n by 4 होगा, T of n by 4, last will be T of n by 4. ठीक है। तो इसका जो सम आएगा, सम ऑफ द सॉल्यूशंस विल बी 4c. c plus c plus c plus c, the amount of effort which you are putting, amount of effort. So at the first level it is c, 2c, 4c, 8c, like that it goes. So total effort is nothing but
Total effort is nothing but 2 power 0 into C, next will be 2 power 1 into C, next will be 2 power 2 into C, plus 2 power 3 into C, and so on, 2 power k into C, such that n by 2 power k, then the problem becomes small, becomes equal to 1, n equal to 2 power k, n equal to 2 power k. So that means this is nothing but C into sigma 2 power I going from 0 to k, 0 to k. Okay? So this is nothing but C into, first term is 1, 2 power k plus 1 minus 1 divided by 2 minus 1 is equal to C into 2 power k plus 1. So because there are 0 to k terms, k plus 1 terms. So 2 power k is equal to n. So 2 power k plus 1 will become n plus 1. 2n. So this will become like C into 2n, C into 2n minus 1. ये हमारा equation है. So if you take the order of this is order of n. So boys and girls, this will be simplified as order of n using recursion tree method. ये है recursion tree method, देखिएगा. n. Nishu Kumar, it is not n log n. Nishu Kumar. At every level you keep on substituting. इसका और एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. इसी का एनहांस वर्जन, ये तो वही है अभी हमने जो देखा. ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. T of n is equal to 2tn by 2 plus n is equal to constant series for n greater than 1 and n equal to 1. Boys and girls, please make an attempt to solve this using recursion tree method. Make an attempt, make a try. 2 मिनट का टाइम मुझे मैं आपको दूंगा, आप ट्राई कीजिएगा. Everybody try solving this using recursion tree method. Rishabh, that you can solve using back substitution, not recursion tree, because that involves negative sign. Time can never be negative. वो एक simple mathematics है. Rishabh Keshari, that is a simple mathematical approach for solving. I cannot have in real algorithm minus 6t and minus 2. That you can work out using direct substitution. वो GATE question है. They were asking the value of t of 5 or something like that. So when you solve this, the value of t of n will be expressed in terms of, like earlier occasion, tn by 2, tn by 2. And at the first level, the work done is n. Now tn by 2 will be n by 2. n by 2 plus n by 2, it become again n. Next level, देखिएगा आप, when you substitute the values, it will become t of n by 4. t of n by 4. This will also be same, t of n by 4. तो इसका सम आप करो, this will also be n by 4 plus n by 4 plus n by 4 plus n by 4, n. So this recursion should go up to some depth like t of n by 2 power k. t of n by 2 power k. Is it not? So how many such problems will we have? 2 power k sub problems. Each of size t of n by 2 power k. First level पर 2 sub problem, 4 sub problem. Last level पर 2 power k into n by 2 power k, such that n by 2 power k should become equal to 1. Implies n is equal to 2 power k, implies k is equal to log n. So at every level 2 power k is equal to n. मतलब ये भी final बनेगा n into t of 1. t of 1 is 1. So therefore n. So that means this total sum is nothing but n plus n plus n plus how many terms? Look at that. n by 2 power 0, n by 2 power 1, 2 power 2, 2 power k. So k times. K times n plus n plus n k times. So therefore total value become n into actually k plus 1, because we are going from 0, n by 2 power 0, n by 2 power 1, k plus 1 terms. So therefore this is nk plus n. K is what? Log n. So this become n log n plus n total time. So if you take the order of this omega of it, it becomes theta of n log n. Theta of n log n. The work done at the first level n, next level n by 2 plus n by 2, next level n by 4 plus n by 4, like that. All levels the work done is n. Number of levels are 0 to k, number of levels are 0 to k, k plus 1. So therefore k plus 1 times 0 to k, k plus 1 times n into k plus 1. But what is k? K is log n. So therefore n log n. Yes, that's correct, Nishu Kumar. So this represents your total cost. Time is nothing but total cost, total time.
जनरली बॉयज एंड गर्ल्स, ये भी आप होमवर्क की तरह ट्राई कर सकते हो जिस तरह हमने अभी किया, 4 levels of सब प्रॉब्लम्स n/2. जनरली रिकर्शन ट्री मेथड इज बेसिकली यूजफुल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम विच आर असिमेट्रिक. देखिएगा ये असिमेट्रिक है. कैन यू ट्राई? आई विल गिव यू 2 minutes ऑफ टाइम. ऋषभ केशरी, बैक सब्स्टिट्यूशन मतलब रियल वैल्यू ऑफ एन आपने सब्स्टिट्यूट करना है. रियल वैल्यू ऑफ एन सब्स्टिट्यूट करके आप चेक करना है व्हाट इज टी ऑफ 2, टी ऑफ 3, टी ऑफ 4, टी ऑफ 5. वहां से आप जनरलाइज कर सकते हो, वहां से आप जनरलाइज कर सकते हो 3 power n या 2 power n, समथिंग लाइक दैट. बॉयज एंड गर्ल्स, इसका बताइएगा वर्कआउट प्लीज. ड्रॉ द रिकर्शन ट्री ऑफ दिस. इज इंटरेस्टिंग. Generally, recursion tree method is useful. Recursion tree method is useful for solving asymmetric size problems. Asymmetric size देखिएगा n/3 to n/3 दोनों के problem size asymmetric है. ये recurrence you cannot, I mean it will be difficult to solve using back substitution and also not possible using master method. So recursion tree will be helpful. Recursion tree will be helpful. ठीक है, तो कैसे करोगे? सेम अप्रोच. So T of n is expressed in terms of the two sub-problems, T of n/3, T of 2 n/3. The computational effort at the first level is n. Next level क्या होगा? n/3 plus 2 n/3. Again it will be n. इसका क्या होगा? T of n/9. ये बनेगा T of 2 n/9. ये बनेगा T of 2 n/9 और ये बनेगा T of 4 n/9. इसका कॉस्ट अगेन होगा n. अब ये देखेगा एसिमेट्रिक ट्री है, इट इज नॉट ए पिरामिड, इट इज नॉट ए पिरामिड, इट इज एसिमेट्रिक ट्री. तो इसमें जो टर्म है n बाई लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है n/3 power 0, n/3 power 1, n/3 power 2, ये जाएगा जनरलाइज फैक्टर लाइक n/3 power k. और ये राइट हैंड साइड का टर्म जाएगा लाइक t ऑफ 2/3, 2/3 power 0, 2/3 power 1, 2/3 power 2. So n into 2/3 power k, इस तरीके से. So if I call this as left hand side and if I call this as right hand side, so you have to tell me, boys and girls, you have to tell me which side, left hand side or right hand side, which will go into more depth, which will go into more depth and which one will go into less depth. Left hand side will go into more depth or less depth? Less depth. Imagine the value of n is 9. Imagine the value of n is 9. So t of 9/9 ये constant हो जाएगा. This will become t of 4. So this will go into more depth. This will go into less depth. ये less depth में जाएगा. तो इसका मतलब ये है, number 1, time will be greater than or equal to t of left hand side. I mean left hand side. I will write it like this. Left hand side. Left hand side से बढ़ के रहेगा time. Time will be more than this. Okay. अब लेफ्ट हैंड साइड का देखिएगा जनरलाइज फॉर्म है n/3 power k. So therefore if I take up to only this level, so it will be nothing but n into k plus 1 again. But what about k? K will be n by the annihilating term is n/3 power k equal to 1. This implies k is equal to log n to base 3. Log n to base 3. So therefore time will be greater, मतलब t of n is greater than or equal to n into log n to base 3 plus 1. ये है greater than or equal to omega. So therefore I can say that t of n is equal to omega of n log n. And second point which I would like to write down here, time, yeah, this is going into more depth, right? So therefore will be less than or equal to right hand side depth. So therefore less than or equal to n into, because n plus n how many times? K times k plus 1 times k plus 1. But what about k? K will be nothing but log n to base 3 by 2. Log n to base 3 by 2. So less than or equal to n into log n to base 3 by 2, because you will say 2/3 power k equal to 1. So 3 by k will be log n to base 3 by 2 plus 1. This will be again, I would say, t of n is less than or equal to n into log n. So therefore this is also order of n log n. So is omega of n log n order of n log n. So therefore this is proved to be theta of n log n. Remember, theta of n log n. ठीक है.
is theta of n log n. Time will be less than, greater than left hand side and less than right hand side. So that's what I have done both the cases. So it is theta of n log n. Is it okay? So like that you can solve some important recurrences using this. I would appreciate in the same paradigm you evaluate the Fibonacci recurrence, t of n minus 1 plus t of n minus 2 plus constant, right, is equal to 0, is equal to 1 for boundary cases, n equal to 0, n equal to 1, and is n greater than 1. Solve this as a homework using recursion tree approach in the same way and prove that t of n is equal to, order of 2 power n and omega of 2 power n by 2. You prove this. It is not theta of 2 power n, recurrence. Homework की तरह try कीजिएगा for Fibonacci recurrence. Okay, following the same paradigm. So boys and girls, these are some of the important recurrences and their time complexities. Conceptualize them, try to look at them so that in the exam अगर आपको पूछा जाए तो आप directly answer select कर सकते हो in order of one time rather than simplifying and wasting the time. So this will help you like a cheat sheet. Important recurrences and their time complexity. Sometime matching pair आपको पूछा जा सकता है, आप उसके लिए इसे use कर सकते हो. So boys and girls, next aspect, last aspect in this chapter is space complexity. Just orally I will tell because not much has been asked in the GATE exam with regard to space complexity. The space complexity of the algorithm is determined by the workspace or additional space. It is not the input space. Workspace complexity मतलब additional space other than input required by the algorithm is the space complexity. जैसे merge sort है, merge sort requires an additional array for storing the merged elements. So additional array of size, and so space complexity will be dependent on that. So space complexity is always not the input space, and not the instruction space. It is the space required for carrying out the computation, additional space required for carrying out the computation. अगर आपका algorithm recursive algorithm है, so therefore the recursion stack space needed will also going to come under space complexity, right? अब फर्ज करिए for example, look at this, और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, it is additional space required for computation steps like stack, linked list, arrays, etc. that will contribute in the space complexity. मैं चाहूंगा बच्चों प्लीज बताइएगा just this simple example as a matter of understanding. कई बच्चों को मुझे पता है space complexity का अप्रोच नहीं आता है. जस्ट इन केस अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या करोगे, चलिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं. ये एल्गोरिथम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताइए और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बताइए. रिकर्सिव एल्गोरिथम टू कंप्यूट द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द अरे, व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस, एंड लाइकवाइज व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस. कम ऑन टेल मी. अप्लाई कॉमन सेंस, क्या हो रहा है? गेम ऑन गैलेक्सी. आपके इमोजी का मतलब क्या है, क्या मुझे बताओगे आप? आपके इमोजी का मतलब क्या लेना चाहिए? गेम ऑन गैलेक्सी. Boys and girls, what is the time and space complexity of this? Time complexity recurrence क्या होगा? Time complexity recurrence क्या होगा ये मेथड का? So time t of n will be constant time a plus the time for recursive call t of n minus 1 plus another constant for adding this value. This is not n, order of n. ये है time complexity recurrence. ये है time complexity recurrence. t of n minus 1 plus constant. T of n is equal to t of n minus 1 plus constant. ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकरेंस, इसको हमने ऑलरेडी सिंप्लीफाई किया. थीटा ऑफ n, टाइम इज थीटा ऑफ n. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी s ऑफ n. रिकर्शन स्टैक, ये रिकर्शन लीनियर है या नॉन लीनियर है? लीनियर है. नंबर ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स कितने पुश होंगे? नंबर ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स इज लीनियर. n-1 activation records and 1 for the original one. So activation records is also n.
जो स्टैक की स्पेस रहेगी इसकी भी जो डेप्थ है वो n है स्टैक. So therefore space complexity is also order of n. Time is n order of n. Time is n and space is also order of n. दोनों सेम है, टाइम और स्पेस दोनों की सेम है कॉम्प्लेक्सिटी, थीटा ऑफ एन थीटा ऑफ एन लीनियर है. चलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइएगा. रिकरेंस क्या बनेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का रिकरेंस क्या बनेगा? टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन बाई 2 प्लस कांस्टेंट. टी ऑफ एन बाई 2 प्लस कांस्टेंट, इज इट नॉट? टी ऑफ एन बाई 2 प्लस कांस्टेंट. तो इफ यू सिंप्लीफाई दिस विल बी ऑर्डर ऑफ लॉग एन, करेक्ट? It will be order of log n. It will be order of log n. अभी जो रिकर्शन की जो ग्रोथ होगी, k एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स पुश होंगे k. But what is k? Such that n by 2 power k equal to 1, k is equal to log n. So therefore the space complexity of this is also order of log n. Log n रिकॉर्ड्स पुश होंगे स्टैक में. Log n एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स फंक्शन कॉल्स पुश होंगे स्टैक में. So therefore order of log n. So time and space of both are order of log n. Boys and girls, ये important point है with regard to space complexity. ना ये देखिएगा ये वर्किंग है उसकी जो मैंने भी आपको बताया. अब मैं आपके लिए एज अ होमवर्क कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड ऑल दिस डिस्कशन व्हिच आई मेड आई एम गिविंग हियर so that you can do some practice, okay, as homework practice questions so that you can practice more and gain firm understanding. So all these questions which I am giving here, some of them we will work out, some of them will work out also. Like these are very simple ones I am leaving it for you. Most of them are gate questions also. लेकिन कुछ questions मैं यहाँ पे वर्कआउट करना चाहूंगा, जैसे कि ये एग्जाम्पल है. बॉयज एंड गर्ल्स आई विल वर्क आउट दिस. हाँ इसके बाद देखेंगे, इसके बाद देखेंगे. निशु कुमार जस्ट वेट. कनिष्का प्लीज वेट फॉर सम टाइम. एक थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे ब्रेक पर. ओके. Come on, let's work out this. The value of the function f of n is equal to log n to base 2. And the value of the function g of n is equal to log n to base 10. Boys and girls, बताइएगा f is order of g और g is order of f और f is theta of g. बोलिए. मैंने अभी कहा कि in asymptotics base does not matter in log, so therefore this order of log n, order of log n. Both are, as far as order is concerned, order of log n. Both are order of log n, so therefore this is correct, this is correct, this is also correct. All are correct, boys and girls. समझ रहे हो बात? f is order of g, f is omega of g, f is theta of g. क्योंकि बेस डज नॉट मैटर. लेकिन परंतु अब देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉलोड बाय नेक्स्ट प्रॉब्लम. विच फंक्शन मैं एसिम्प्टोटिक की बात नहीं कर रहा हूं. विच फंक्शन वैल्यू वाइज इज ग्रेटर. विच फंक्शन वैल्यू वाइज ग्रेटर? बोलिएगा log n to base 2 या log n to base 10. वैल्यू जब निकालोगे आप log n to base 2 या log n to base 10, वैल्यू वाइज विच फंक्शन इज ग्रेटर? f इज ग्रेटर देन g. बिल्कुल शिम्पी जी बिल्कुल सही है आप जो कह रहे हैं. वैल्यू वाइज विच इज ग्रेटर? इज f ग्रेटर देन g और f लेस देन g? f इज ग्रेटर देन g. हाँ बिल्कुल. I hope you understand. I can write this as log n to base 2 versus, I can write using property of log as log n to base 2 divided by log 10 to base 2. So log n to base 2 cancel, 1 versus 1 by log 10 to base 2. Right? So definitely this is less, 1 by 3.3 something, 1 by 3 point something. So naturally this is greater. So we write f is greater than g, strictly greater. Value wise this is greater, f is greater than g. लेकिन asymptotic में दोनों सेम है. नहीं आप समझ रहे नहीं बात. निशु कुमार
वैल्यू वाइज, बट असिम्प्टोटिक इफ यू टेक द वैल्यू वाइज का मतलब ये है 5 इज ग्रेटर देन 2 लाइक दिस, बट इफ असिम्प्टोटिक ऑर्डर इफ आई टेक f इज ऑर्डर ऑफ 1 दोनों सेम है. आई एम नॉट टेकिंग असिम्प्टोटिक, रियल वैल्यू वाइज. आर यू गेटिंग निशु कुमार? वैल्यू वाइज द वैल्यू ऑफ f इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ g, बट असिम्प्टोटिक डेफिनेशन जब अप्लाई करोगे फंक्शंस पर log n to base 2 log n to base 10 both are order of log n, both are of order. हाँ, अब यहां पर मैं ये पूछ रहा हूं दिस इज, सो देयरफॉर f is theta of g. As far as this is concerned, we are saying f is theta of g. Kanishka Sharma, please, this is interesting. Uganda, this is interesting. Uganda, please see here. Now question is, tell me, what is correct answer for this? What is correct answer for this? What is the correct answer? No, Manoj. What is the correct answer for this? Now I have raised log n to base 2 and log n to base 10 as power of n. n power log n to base 2, n power log n to base 10. बोलिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. कई बच्चे यहाँ पे घूम जाते हैं, कई बच्चे यहाँ पर घूम जाते हैं, गुम भी जाते हैं, घूम के गुम जाते हैं, घूम के गुम जाते हैं. Yes, now you got the point. अगर फिर भी यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है ये क्वेश्चन आने से पहले, मैं अगर आपको बताऊं, एक सिंपल एग्जांपल लेके करेंगे. f of n is equal to 2, g of n is equal to 5. बॉयज एंड गर्ल्स सुनिएगा. f of n is equal to 2, g of n is equal to 5. Is f order of g or g is order of f, or f is theta of g? बोलिए, is f order of g, f order of g या f theta of g, or f is omega of g? f of n is equal to 2, g of n is equal to 5. बोलिए शिंपी, सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूं. सर f is order of g, करेक्ट. g is order of f, करेक्ट. f is theta of g, f is theta of g, क्योंकि दोनों कांस्टेंट्स है, दोनों कांस्टेंट्स है ना, थीटा है. ठीक है, अगर मैं अब क्या करूंगा, अब मैं ऐसे करूंगा, f of n is equal to n स्क्वायर, ये 2 को पावर में लिख रहा हूं, n के पावर में, g of n is equal to n पावर 5. दोनों थीटा है, बताइए. गेम चेंज हो गया, गेम चेंज हो गया. वही एग्जाम्पल था पिछला भी यही एग्जाम्पल था, समझ रहे हो? चेंज, गेम चेंज. So now n square is strictly less than n power 5. f is order of g. f is small o of g. It is not omega not theta. It is not omega not theta. ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको. यहां पर भी वही था, देखिएगा, f is theta of g, लेकिन पावर में आने से चेंज हो गया. So therefore this is greater than this, this is greater than this. So f is greater than g. So f is omega of g. ये पॉइंट आपने अच्छे तरीके से समझना है, ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझना है असिम्प्टोटिक्स में. चलिए, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वर्कआउट करते हैं. दीज आर ऑल सिंपल थिंग्स, यू कैन डू इट. ये ऑलरेडी हमने कर चुके हैं. लूप्स के भी आप कर लीजिएगा एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. जहां भी आपको डाउट होना आप पूछ लीजिएगा मुझे. सो यू कैन बेसिकली दिस ऑल्सो वी हैव डन. हाँ, इसका आंसर बताइएगा. लेट्स वर्कआउट दिस, लेट्स वर्कआउट दिस. हाँ, एटलीस्ट महा रिविजन फॉलो कर लो. रुद्रा गेमिंग एटलीस्ट महा रिविजन फॉलो कर लो पूरा लेक्चर. सो बॉयज एंड गर्ल्स, बी बेस्ट केस एंड ए इज एवरेज केस.
हमने ऑलरेडी रिलेशन एस्टैब्लिश की थी, बी इज लेस देन और इक्वल टू एवरेज, एवरेज इज लेस देन और इक्वल टू वर्स्ट। ये रिलेशन से आप हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये रिलेशन से आप हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। B is omega, B greater than or equal to no, B is theta, theta is not always true, यहाँ पे always false पूछ रहा है, ठीक है, is it always no, sometime true, sometime true. B is this is big omega, this is big omega, sorry, small omega, B is small omega of A of n, B is greater, नहीं, this is always false. B is order, this is always true, ये always true, sometime true, always false, always false. Correct answer is C. The small omega, Kanishka Sharma, the small omega matlab B should be greater than, small omega matlab C, B should be greater than, स्मॉल ओमेगा है वो, बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। ये भी बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो, एंड ऑल दीज यू कैन डू। अब है बारी स्टार्ट करने की, डिजाइन स्ट्रैटेजीज डिवाइड एंड कॉन्कर। ऑलमोस्ट 3 आवर्स वी टुक फॉर कंप्लीटिंग फर्स्ट चैप्टर। तो जैसे बच्चों ने कहा कि ब्रेक, तो बोलिएगा कितनी देर के लिए आपको मिनिमम टाइम, लोअर बाउंड टाइम बताइए मुझे, अपर बाउंड नहीं, लोअर बाउंड टाइम, कितनी देर का ब्रेक आपको चाहिए, सो दैट वी कैन कंप्लीट द क्लास सेशन। एटलीस्ट डिवाइड एंड कॉन्कर कंप्लीट करेंगे इन दिस सेशन। तो बोलिएगा कितनी देर आप लोग चाह रहे हैं लंच का ब्रेक, क्योंकि अब 2 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 o'clock। निशु कुमार बताइए, कनिष्का, उगांदा AI, बी रियलिस्टिक, लंच ब्रेक 20 मिनट्स, लंच ब्रेक 20 मिनट्स, 15 मिनट्स और 20 मिनट, ठीक है 20 मिनट जाएंगे, बेस्ट केस टाइम। 30 मिनट बहुत ज्यादा होगा, एस्थेटिक 30 मिनट ज्यादा होगा बेटा, 30 मिनट बहुत ज्यादा होगा सूफिया अहमद। 20 मिनट्स बॉयज एंड गर्ल्स, 20, 15 भी नहीं 30 भी नहीं, एवरेज टाइम ले रहा हूं मैं, एवरेज टाइम ले रहा हूं दोनों का, 15 और 30 का एवरेज ले रहा हूं, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स ले रहा हूं ब्रेक, 20 मिनट्स। क्लास विल स्टार्ट at 2:20. Please come back so that you can understand divide and conquer. You can understand divide and conquer. मैंने आप लोग को डिवाइड कर दिया, आप कॉन्कर करेंगे। चलिए बच्चों, ओके, क्लास विल स्टार्ट एट 2:20. Okay, go ahead and take the break.
Boys and girls, let us start. I'm back exactly at 2:20. ठीक है? So my dear student boys and girls, welcome back and continue the discussion with the first design strategy जिसका नाम है divide and conquer. काफ़ी important, काफ़ी questions previous year papers में पूछे जा चुके हैं with regard to divide and conquer. Simple ideology है, historical perspective भी इसका interesting है, okay? And problem become large, complex. Best way of solving है to divide the problem into sub problems into further sub problems until the sub problem becomes small. तो आपने क्या करना है, smaller problems को solve करना है, combine the results of the smaller problem if required and you get the solution of original problem. ये है basic notion, basic ideology of divide and conquer. ठीक है? So this refers back to the Napoleon Bonaparte of famous European king warrior, जिन्होंने कई यूरोपियन वॉर्स विन की एंड इन वन ऑफ द वॉर ही अप्लाइड दिस स्ट्रैटेजी. क्योंकि ओपोनेंट की जो आर्मी थी दैट वाज ऑलमोस्ट डबल देन हिज आर्मी साइज, सो द बेटर वे द नेपोलियन थॉट के डिवाइड द हिज ग्रुप, हिज आर्मी इनटू टू पार्ट्स एंड देन लीड देम एंड अटैक सो दैट दे गेट स्प्लिट इनटू टू सब प्रॉब्लम्स, टू पार्ट्स, एंड देन ही विन ओवर, एंड दैट्स व्हाई फ्रॉम देयर आफ्टर इट इज कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर. Britishers also ruled our country India basically by applying divide and conquer. So basic notion, basic ideology is problem become large and complex. Better way of solving is dividing the sub problems into further sub problems until the sub problem becomes small. तो boys and girls से एक बात याद रखने का यह है कि divide mandatory है, combine optional है. जो problems आप solve करते हो, ठीक है, you basically make sure that divide is mandatory, compulsory है, लेकिन combine is optional. You may combine, you may not combine. There are some problem where combine is there and there are some problem where combine is not there. Divide mandatory है. तो boys and girls, जो general strategy है based on divide and conquer, तो उसकी control abstraction and its recurrence, उसका जो रिकरेंस रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर, द रिकरेंस जो बनेगा फॉर सॉल्विंग द स्मॉलर प्रॉब्लम्स, ATN/B प्लस F ऑफ N. तो यहां पे मैंने आपको बताना यह है कि A represents the number of sub problems that you are solving, number of sub problems, and N/B is the size of each sub problem. Size of each sub problem. और ये जो जनरल फंक्शन F ऑफ N, दिस इज यूज फॉर बेसिकली द कंबाइन ऑपरेशन या कॉन्कर ऑपरेशन का टाइम. ये हायरार्की आपने याद रखना है, ठीक है. सो दैट इज द बेसिक नोशन ऑफ द प्रॉब्लम विच आर सॉल्वेबल बाय डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी. जो फर्स्ट प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर most of the textbooks में, वो है finding the max and min, max min problem. Problem is very simple boys and girls. Try to correlate. I'm not describing everything. मैं सिर्फ यहाँ पे आपको correlation समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. Max min problem ये है कि we are given an array and we want to find the largest and smallest of it. एक array है जिसकी size and elements है और उसका हमें maximum और minimum चाहिए. There were questions based on this. Please follow it carefully. Like for example, if you solve this using divide and conquer ideology, we will split this into the array की size है 2 2 4 5 6, 3 elements each. ये first sub problem है with 3 elements, second sub problem with 3 elements. Problem is large. Problem small कब होगा? When it can be solved in 1 or 2 basic operations. जैसे कि list अगर है, if I have 1 element or 2 elements, problem is small, right? Input size is small. तो 3 elements है, problem large है. Further we divide into 1 and 2 like this. This is already small, so 33 is both min and max. ये दोनों का एक ही कंपैरिजन से आप मिनिमम मैक्सिमम निकालोगे, तो मुझे इसका मिनिमम मैक्सिमम मिला, इसका भी मिनिमम मैक्सिमम है, तो दोनों कंपैरिजन से आप मिनिमम निकालोगे, मैक्सिमम निकालोगे. तो ये जो सब प्रॉब्लम है इसका मिन मैक्स आपको पता चला. उसी तरह यहाँ पे भी आपने मिन मैक्स निकाला. देन मिन ऑफ 11 एंड 22 22, मैक्स ऑफ 44 एंड 66, सो दिस इज द मिन एंड मैक्स. ये है बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ मैक्स मिन. लेकिन अगर आप यही प्रॉब्लम विदाउट डिवाइड एंड कॉन्कर सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस यूजिंग
straightforward max-min, non-divide and conquer max-min. The algorithm for it will look like this. Algorithm non-divide and conquer max-min. Brute force approach से अगर आप करने की कोशिश करोगे, we are given an array and we want to find max and min. ठीक है? So first step, you will assume that the first element is the max and min. First element of the array you initialize as a of 1, max and min. Then you are going to take a loop which is going to repeat for n minus 1 times, 2 to n. क्या करोगे यहां पे कंपैरिजन करोगे. If a of I, current a of I is greater than max, then you will update max with a of I. Else, if it is not, you have checked whether a of I is less than min, then you will update min as a of I. ये simple straightforward max min है, non divide and conquer max min है, which will report the maximum and minimum. अगर इस ये algorithm की time complexity निकालोगे आप, अब number of comparisons निकालोगे. What are the number of comparisons? क्योंकि जो basic operation है, जो metric है जिसके ऊपर performance depend करेगा, time depend करेगा, वो है number of element comparisons. So best case कब होगा? Best case minimum. Best case will happen when this first comparison is always true, when the elements are in increasing order. When the elements are in increasing order, the first comparison will always be true. So therefore, I will need only n minus 1 comparisons. And worst case will happen, number 2, worst case will happen when the elements are in decreasing order. So that the first comparison always falls, so I have to make a total of 2 times n minus 1 comparisons. Boys and girls, lastly I would like to say, in the defined average case, when half of the elements are false, first comparison is false for half of the elements. In the defined average case, when first comparison fails for half of the given elements, तब आपके number of comparisons बनेंगे, if you know, 3n by 2 minus 1. Defined average case में number of comparisons in average case 3n by 2 minus 1. ये काफी important है याद रखने के लिए. ठीक है? Best worst average 3n by 2 minus 1. Now what will be the strategy for max min? अब ये देखिएगा max min divide and conquer में क्या कर रहे हो आप? Max min divide and conquer में क्या कर रहे हो? We are having an array with n elements. When the problem is large, n is greater than 2, we are breaking that into 2 subproblems of size roughly n by 2 by n by 2. ठीक है? So if t of n represents the number of element comparisons, that will be given by 2tn by 2, tn by 2 plus tn by 2. Number of comparisons for finding max min of this, number of comparisons for finding max min of this. 2tn by 2 plus I need 2 comparisons for these two for max and min. For finding max and min, 2 comparisons. So plus 2. So boys and girls, this becomes the recurrence. For max min using divide and conquer ideology. And the boundary condition, this will be for n greater than 2. Suppose if I have 2 elements, I need 1 comparison. N equal to 2, 1 comparison. N equal to 1, 0 comparisons. So boys and girls, this is the recurrence. This is the recurrence that is projected, that is derived based on divide and conquer ideology for max min. तो ये recurrence को अगर आप back substitution से solve करने की कोशिश करोगे, because I want the exact value, you will get this as 3n by 2 minus 2. And this is for all the cases. This is for all the cases, boys and girls. This is for all cases. Whether elements are in increasing, decreasing or random order, all cases of input. All input classes. Whether elements are in increasing order, decreasing order or random order, always it will make 3n by 2 minus 2 comparisons using divide and conquer ideology. यह है philosophy. अगर आपकी time complexity निकालना चाहोगे इसकी तो order of n. Using non-divide and conquer also order of n. Using non-divide and conquer also order of n. यह है max min. ठीक है? So this is what you should remember as far as max min. इसके कुछ problems है. We'll try to work out at later point of time.
We'll try to work out the problems of this at later point of time. Meanwhile, we will go for the second problem, जिसका नाम है binary search. Binary search. देखिएगा, this is the projection, a diagram, a schematic view of binary search. Next divide and conquer problem. लीनियर सर्च का तो आपको पता है, लीनियर सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n इन द वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ 1 है. तो बाइनरी सर्च की आइडियोलॉजी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि द अरे शुड बी सॉर्टेड, और बाइनरी सर्च अप्लाई होगा अरे पर, तो उसकी साइज n एलिमेंट्स अगर हो तो इट शुड बी सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो बाइनरी सर्च में ये होगा कि अगर एक एलिमेंट है तो प्रॉब्लम इज स्मॉल, अगर मोर देन वन एलिमेंट है तो प्रॉब्लम इज लार्ज, एंड व्हेन द प्रॉब्लम इज लार्ज वी डिवाइड अबाउट द मिडिल पोजीशन एंड फाइंड द मिडिल एलिमेंट. तो कंपेयरिंग करें, कंपैरिजन होगा मिडिल एलिमेंट से, की एलिमेंट का कंपैरिजन होगा मिडिल एलिमेंट से. इफ इट इज इक्वल, बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ 1. अगर नहीं है, द वर्स्ट केस में यू विल हैव टू फाइंड इन द लेफ्ट पोर्शन और द राइट पोर्शन. हाँ, लेफ्ट पोर्शन एंड राइट पोर्शन, वहां पे आपने टेस्ट करना होगा. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंप्लीमेंटेशन इसकी जो है बाइनरी सर्च की, देखिएगा अगर आप डिवाइड एंड कॉन्कर आइडियोलॉजी से समझने की कोशिश करोगे. सो बॉयज एंड गर्ल्स, इफ दिस इज माय अरे A1 A2 A3 सो ऑन AN, ठीक है. So in the first level of recursion, we are going to divide this into 3 sub problems. Middle element k is equal to 1 plus n by 2. ठीक है, ak. So the first sub problem will have only one element, that is ak. The second sub problem, instance I1, you can say, will have k minus 1 elements, namely a1 to ak minus 1. And the third instance I3 will have the remaining n minus k elements, numbered k plus 1 to n, numbered k plus 1 to n. तो यहां पर भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, यहां पर भी इस तरीके से लिख सकते हो कि you have initially n elements like this, ये, and you are trying to search for some key element x. So if by solving the first subproblem, you call this subproblem as I2. If you solving by comparison, order of 1 time, best case order of 1, worst case में you will have to solve I1 or I3. This will be solved when x is less than ak, and this will be solved when x is greater than ak. ये बेसिस पर इसका recurrence क्या बनेगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी recurrence in the worst case, t of n in the worst case will be constant time for n equal to 1 element, and when n is greater than 1, worst case time बनेगा constant time for solving the middle element a plus time for solving either left sub problem or right sub problem. Any one of them, we are not solving both, any one of them, either I1 or I3. The size of I1 or I3 is roughly n by 2, तो इसके number of comparisons बनेंगे tn by 2. So boys and girls, this will be my recurrence, and we have already seen solving this recurrence is order of log n. So time complexity of divide and conquer binary search is order of log n. Worst case order of log n. ये recurrence है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल आल्सो बी ऑर्डर ऑफ लॉग एन, क्योंकि नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स व्हिच विल गो इज k, व्हिच इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन. सो टाइम एंड स्पेस ऑफ बाइनरी सर्च इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन, इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन. ठीक है, तो ये हो गया है बाइनरी सर्च. देन ये इसके डिटेल्स है, आप देख सकते हो. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज गेट इज कंसर्न, वो है मर्ज सॉर्ट, वो है merge sort. So merge sort is based on the principle of merging and it was developed by John von Neumann. और इसकी बेसिक आइडियोलॉजी अगेन डिवाइड एंड कॉन्कर. लेट मी टेल यू, बाइनरी सर्च जो पिछला प्रॉब्लम था, अगर आप गौर करो, we have used only the principle of divide but not combine. Binary search has used only divide but not combine. We were not combining the results. And second important property of binary search is that we were solving only I2 and I1 or I2 and I3 but not all. All sub problems are not solved. So kindly remember that. लेकिन merge sort में क्या है देखिएगा, we are given an unsorted list. We'll break up that when the problem is large. We'll break up that into 2 parts and such that every sublist, every sub problem will have only one element to be considered as small. अगर एक list with one element, list with another element, दोनों को merge करने के लिए एक comparison लगेगा, and that is the case of smaller problem. तो यहां पर देखिएगा, I have continued the process of division until this list has got one element, this list has got one element. ये दोनों को combine करने से sorted list बनी, ये दोनों को combine करने से ये sorted list बनी, ये दोनों को ये sorted list है, ये दो की ये दो sorted list है.
फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ मर्जिंग में ये दोनों को कंबाइन करेंगे टू गेट दिस सॉर्टेड लिस्ट देन द फाइनल कॉल ऑफ मर्ज टू कंबाइन दिस. ये है मर्ज सॉर्ट की प्रिंसिपल, ये है मर्ज सॉर्ट की आइडियोलॉजी. तो द कॉन्कर प्रोसेस ऑफ मर्ज सॉर्ट, द कॉन्कर प्रोसेस ऑफ मर्ज सॉर्ट इज कॉल्ड मर्ज ऑपरेशन. तो मर्ज ऑपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विच आई वुड लाइक यू टू बेसिकली रिमेंबर एंड कॉन्सेप्चुअलाइज. मैं यहां पे लिख रहा हूं, गौर कीजिएगा. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, let L1 has n elements, let list L1 has n1 elements and list L2 has n2 elements, where I say n1 is less than or equal to n2. Let L1 having n1 elements, let L2 having n2 elements, where L1 is less than, n1 is less than or equal to n2, be two sorted lists. ठीक है, be two sorted list. Then question is the time complexity to merge L1 and L2 to get a single sorted list, of size n1 plus n2 is dash. जब बात होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तो वी आर प्राइमरली रेफरिंग टू वर्स्ट केस टाइम. बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर रेफरिंग टू वर्स्ट केस टाइम. तो टाइम डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कंपैरिजंस. Like for example, if I take an array L1, list L1 having following elements like 2, 5, 8, 10. List L2 have elements 6, 7, 9, 15, 25, 40. इन दोनों को कंबाइन करने का प्रोसीजर क्या है? Two level comparisons or two-way comparisons. I will initialize two indices respectively pointing to two first element of both the list. 2 and 6 will be compared, 2 is small. 5 and 6 are compared, 5 is small, right? Then 8 and 6, so 6 is small. So like that it goes until all elements are merged here. ये है two-way merge operation. So boys and girls, minimum comparisons required, minimum time complexity, best case time complexity, minimum comparisons required for merging is equal to n1. n1 क्या है? Number of elements in first list, number of elements in second list. यह है minimum. Minimum number of comparisons required is n1. Remember, here n1 is less than or equal to n2. उसी तरह what is maximum comparisons required? ये worst case है. Can anybody tell me in merging list L1 and L2, what is the maximum number of comparisons required? Maximum comparisons required, please observe, Muhammad, Farooq, Manoj, Nishu Kumar, tell me, what is the maximum number of comparisons required to merge L1 and L2? What is the maximum number of comparisons required to merge L1 and L2? बोलिए. Yes, the maximum number of comparisons is equal to n1 plus n2 minus 1. n1 plus n2 minus 1. If we assume let n1 plus n2 is equal to n, total number of elements, then you can write this as order of n minus 1, which is order of n. ये है मैक्सिमम कंपैरिजंस. तो याद रखिएगा प्लीज, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न. मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन, द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी टू मर्ज, maximum number of comparison, the worst case complexity to merge the two sorted lists is n1 plus n2, number of elements minus 1 comparisons, order of n1 plus n2. So order of n is time, n1 plus n2 minus 1 is comparisons. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विथ रिगार्ड टू मर्ज सॉर्ट. सो बॉयज एंड गर्ल्स, आई वुड लाइक टू आल्सो आस्क यू वन मोर क्वेश्चन ऑन मर्ज सॉर्ट. इन द implementation of merge sort, this is a GATE question, or it was asked in one of the exam, not GATE, one of the exam. The number of calls in the implementation of merge sort
for a list or array of size n elements. List of array of size. The number of calls to procedure or algorithm merge sort is equal to dash, and the number of calls to procedure merge, दो प्रोसीजर्स है, मेन मर्ज सॉर्ट है, दूसरा मर्ज है, इज डैश. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट. कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, टेल मी. नंबर ऑफ कॉल्स पूछ रहा हूं मैं. आई एम नॉट आस्किंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. नंबर ऑफ कॉल्स, कितने कॉल्स होंगे प्रोसीजर मर्ज सॉर्ट को, आप कॉन्सेप्चुअली डिराइव कर सकते हो. सपोज दिस इज माय ओरिजिनल लिस्ट ऑफ साइज एन, व्हेन द प्रॉब्लम इज लार्ज, आप इसे डिवाइड करोगे, एग्जैक्टली n by 2 एलिमेंट्स. फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n इग्नोर प्लस और माइनस 1. सो फर्स्ट लिस्ट इज हैविंग, देखिएगा, फर्स्ट लिस्ट इज हैविंग n by 2 एलिमेंट्स, सेकंड लिस्ट इज हैविंग n by 2 एलिमेंट्स, ओरिजिनल लिस्ट हैज n एलिमेंट्स. सपोज इफ आई से नंबर ऑफ कॉल्स इज गिवन बाय t of n फॉर साइज ऑफ n. सो इसके लिए कितने कॉल्स लगेंगे, tn by 2. इसके लिए कितने कॉल्स लगेंगे, tn by 2. So original first call is this. So therefore the total number of calls t of n is given by 2tn by 2 plus 1. Boys and girls, this become my recurrence for number of calls to procedure merge sort. Merge sort के total calls ये है with initial value t of 1 is equal to 1. अगर आप ये equation को solve करोगे, when you solve this equation, the value will come out as 2n minus 1. When you solve it, the value will come as 2n minus 1. So remember this, these are number of calls to procedure merge sort. Number of calls for procedure merge sort, 2n minus 1. Ab now the number of calls for procedure merge calls कितने होंगे? I won't merge for a list having one element. मतलब जितने भी n elements की list होगी, list with one element, all n list रहेंगे, तो I don't need any merge for list of size n. Remaining all I need. So therefore ये बनेगा 2n minus 1 minus n. So this will become n minus 1. n minus 1 calls to procedure merge and 2n minus 1 calls to procedure merge sort. 2 mark क्वेश्चन फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है. लास्ट में मैं आपको पूछता चाहूं या आपको बताता जाऊं, बेसिकली व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट. Time complexity of divide and conquer merge sort working with n inputs. So based on the previous diagram, if you try to write the recurrence t of n representing the time 2tn by 2 plus time for merging, एक लिस्ट है n by 2 एलिमेंट्स, दूसरा लिस्ट है, नीरज चौधरी, एक्सप्लेन करने की कोई बात ही नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. निशु कुमार, कौन है, नीरज चौधरी. सुनिएगा, नीरज चौधरी, आपने ट्री बनाना है यहां पर. इफ यू वांट यू कैन टेक ए लिस्ट विथ 4 एलिमेंट्स. ये देखिएगा, लिस्ट विथ 4 एलिमेंट्स, यू डिवाइड इनटू 2 ईच, राइट, 2 एलिमेंट्स ईच. फिर उसके बाद यहां पे 1 एलिमेंट ईच. सो हाउ मेनी एलिमेंट्स n equal to 4. So how many calls to procedure merge? Right, number of calls to procedure merge 1 2 3 4 5 6 7. So 2n minus 1. Number of calls to procedure merge sort 2n minus 1. Number of calls to procedure merge, ये देखिएगा 1 2 3.
I won't make calls to all these lists with one element each. Neeraj, this is the explanation for it. I need calls to procedure merge. Procedure merge will be called for this problem, this problem, this problem, not for any of these. So therefore n-1. That's a proof. Chaliye. Time complexity. So time for merging lists with n by 2 and list n by 2. Time for merging two lists of n by 2. Best is order of n, worst is also order of n. Best is also order of n, worst is also order of n. So plus bn. Equation, this is the case when n is greater than 1 and is equal to constant time for n equal to 1. So boys and girls, this is the equation or recurrence for time complexity of merge sort, and upon solving this using back substitution or master method or recursion tree method, this is theta of n log n. The best case, the worst case time, average case time of merge sort is n log n. The best, average and worst case time of merge sort is order of n log n, theta of n log n. मतलब नॉन टर्बुलेंट बिहेवियर रहेगा मर्ज सॉर्ट का. नॉन टर्बुलेंट मतलब इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रैंडम, कोई भी ऑर्डर में हो एलिमेंट्स, ऑलवेज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n log n. इट विल नेवर बी मोर, नेवर बी लेस देन n log n. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात होगी मर्ज सॉर्ट की, इट इज नॉट इन प्लेस. स्पेस रिक्वायरमेंट इज एडिशनल अरे n प्लस द रिकर्शन स्टैक n log n. ये अरे टेम्पररी अरे b for merge operation and this is for log n. So complexity will be order of n, theta of n. Space requirement. That is why based on this we say merge sort is not in place. Merge sort is not in place sorting. Not in place sorting. Okay? So this is all about the discussion on merge sort. Up next है partition exchange sort, or also called quick sort. Quick sort was developed by a person by name Tony Hoare, a very eminent personality. Okay, who developed this technique by name quick sort, which is also called partition exchange sort. Okay, because this is based on the procedure of partitioning, और partitioning को आप divide approach कहोगे. Exchange का मतलब ये है the partitioning or the splitting is done by exchanging the elements. Exchanging the elements. And the partitioning process is also called as pivoting process. Pivoting process. This is based on the selection of partition element, or also called pivot. ये partition exchange है क्या? What is this partition exchange or pivoting process? मैं explain करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा. We have an unsorted list. We have an unsorted list. We have an unsorted list of size n elements. उसमें से one element will be selected as pivot. तो कौन सा element select करेंगे? So for that there are generally two procedures. One is you can select the first element as the pivot, and the second approach is you can select the second element, last element as pivot. There are two algorithms of partitioning. There are two algorithms of partitioning. One is selecting the first element as pivot, the other is selecting the last element as pivot. Tony Hoare का जो generic procedure है, जो general procedure है, he select the first element as pivot. Tony Hoare. एक और partitioning algorithm है जिसका नाम है Lumoto algorithm. Lumoto partition. Lumoto partitioning will select ऋषभ केशारी. Lumoto partitioning will select the last element as pivot. अगर आप CLRS textbook देखोगे, CLRS textbook follow Lumoto partitioning. और Sahani textbook अगर आप देखोगे, another textbook they follow the first element as pivot. So both of them will be same. दोनों का result same होगा. Algorithm ideology अलग अलग है. दोनों की time complexity same है. Ideology अलग अलग है. तो यहां पर जो illustration है, this is of Lumoto. Last element is selected as pivot. Boys and girls, here the last element is selected as pivot. This is Lumoto. Lumoto approach is being highlighted here. तो होगा क्या partitioning में? This partitioning element or pivot element is going to be pivot का मतलब है fix करना, ठोकना. Pivot, correct position पे ठोकोगे. You are going to fix up the pivot. You are going to place pivot at its correct place as it should lie in the final sorted list. At its correct place in the final sorted list. तो imagine कीजिएगा, this is the correct position of x, and all elements which are less than x will come to the left. May not be in order, and all elements to its right are greater than x, may not be in order. ये है partitioning का result. Three things will happen in partitioning. Whether first or last element is going to get fixed up somewhere in the middle, for example, and all elements which are less than pivot, less than x, will be to the left, and all elements greater than x to the right. Three things will happen with partitioning, whether Hoare partitioning or Lumoto partitioning. Hoare partitioning generally is two-pointer method, and Lumoto partitioning is generally one-pointer method. ये है difference. ठीक है, ये है basic ideology.
तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बेसिकली ये भी देखेगा, वही है लुमोटो पार्टीशनिंग का एल्गोरिथम का सेम सिनेरियो विच आई हैव एक्सप्लेन जस्ट नाउ। ठीक है, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पार्टीशनिंग, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ partition algorithm, whether it is Lumoto or whether it is Hoare. What is the time complexity of partitioning algorithm, boys and girls? Anyone? Whether it is Lumoto or Hoare, what is the time complexity of partition algorithm, boys and girls? Come on, order of n, बिल्कुल सही। क्यों? We are making n comparisons, I need n comparisons। अगर आप 2 pointer method से कंपेयर करो या 1 pointer से कंपेयर करो, essentially partitioning element is going to be compared with all elements of the list, so therefore order of n, order of n। अब ये basis पर we can have the behavior of quicksort in best case and worst case with 3 possibilities। So boys and girls, if I imagine that this is my list A1, A2, so on an, after applying partitioning, जब आप partition algorithm apply करो Lumoto या Hoare with order of n time, तो क्या होगा? I can have 3 possible scenarios। I can have 3 possible scenarios। क्या हो गए 3 possible scenario? In scenario 1 ऐसा हो सकता है कि partitioning element get pivoted exactly in the middle and leaving 2 partitions, one to the left, another to the right। Second scenario, scenario 2 में ऐसा हो सकता है कि partitioning element is going to be getting pivoted at the last, A1। थर्ड सिनारियो में, सिनारियो 3 में ऐसा हो सकता है कि partitioning element get pivoted at the same place, leaving to the right partition with n-1 elements। These also n-1 elements। I can have these 3 scenarios। So if you observe, boys and girls, these 2 scenarios are symmetric, and this will happen at every level of recursion। This will happen, either this or this will happen when the list is already sorted। Either increasing or decreasing order में हो, then the list will always be sorted। Nishu Kumar, what happened? Right, list is already sorted, this scenario will happen, and this scenario will arise when the performance of quicksort is in the worst case। ये worst case behavior है quicksort का, and ये best case behavior है। You can prove it mathematically। If I represent the time complexity of this, time for partitioning is order of n, then if I assume the list sizes are n/2 and n/2 left and right, so this will become 2t n/2। इसका solution है n log n। So best case time, which will happen when the partitioning element get pivoted in the middle, creating 2 partitions roughly having n/2 elements, time complexity of quicksort in best case when the elements are in random order is n log n। वर्स्ट केस में रिकरेंस क्या बनेगा? रिकरेंस बनेगा ऑर्डर ऑफ n फॉर पार्टीशनिंग प्लस t of n-1, and if you solve, this will be order of n square। So worst case time of quicksort is order of n square, best case time is n log n। Worst case time when the list is already sorted, either increasing, decreasing order, order n square। Best case time when the list is unsorted, random, order of n log n। ये याद रखना है। इसी तरह इसी बेसिस पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप डिसाइड कर सकते हो। फॉर सॉर्टेड केस द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज लीनियर, सो ऑर्डर ऑफ n, एंड फॉर अनसॉर्टेड बेस्ट केस के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ log n। ये है टोटल क्विकसॉर्ट का बिहेवियर, टोटल बिहेवियर ऑफ क्विकसॉर्ट। इज इट ओके? At one place I have described everything, boys and girls, that is the important aspect of this। ये slide काफी important है आपके लिए for summarized discussion and solving many questions। Average case remember, yes, average case remember, derivation हम यहाँ नहीं देखेंगे। Average case will also be n log n, याद रख लीजिएगा। Average case of quicksort is also n log n। Average case is also n log n। Okay, so boys and girls, this is about quicksort। अब next problem है Strassen matrix multiplication। Matrix multiplication, that means simple question, quicksort is not in place। Nishu Kumar, quicksort is not in place।
अच्छा, आई एम सॉरी फॉर या स्टेबिलिटी नहीं है, एंड क्विकसॉर्ट इज इन प्लेस, यस क्विकसॉर्ट इज इन प्लेस, स्टेबल नहीं है. The problem is matrices. Point number one, if I am given two square matrices of order n by n, two square matrices of order n by n, and the resultant product matrix say n by n. So point number one, if I want to add or subtract the two matrices, remember the time complexity is order of n square, and using traditional method, school method, when you want to multiply them, the time complexity is order of n cube. First point. Quicksort is in place but not stable. Merge sort is not in place but stable. ठीक है, देखिएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर मैट्रिसेस, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू मल्टीप्लाई देम इज ऑर्डर ऑफ n क्यूब यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड. लेकिन क्वेश्चन ये है, कैन आई हैव डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n? कैन आई मल्टीप्लाई? क्या पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना टू स्क्वायर मैट्रिसेस को यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर आइडियोलॉजी? इफ सो, व्हाट इज द रिकरेंस? बताइए, डायरेक्ट रिकरेंस बताइए. व्हाट विल बी द रिकरेंस फॉर दिस? व्हाट इज द रिकरेंस फॉर दिस डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच? निशु कुमार, कम ऑन, अदर पीपल आल्सो प्लीज पार्टिसिपेट. What will be the recurrence representing the time complexity of divide and conquer matrix multiplication of n by n? मैं प्रोसीजर नहीं बतला रहा हूं, आपको डायरेक्ट आंसर पूछ रहा हूं, रिकरेंस पूछ रहा हूं. क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क के लिए. निशु कुमार, नो. लाइक द इक्वेशन C11, C12, C21, C22 जो आपको लगेंगे, उसमें कितने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगेंगे? 8 ऑफ साइज n by 2. सो रिकरेंस बनेगा 8n by 2 प्लस एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू मैट्रिसेस विल बी सम n स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. ये हमारा रिकरेंस होगा यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड. ये हमारा रिकरेंस होगा यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड. और बच्चों, अगर इसे आप सॉल्व करोगे यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन या फिर मास्टर मेथड से, दिस विल बी ऑर्डर ऑफ n क्यूब. दिस विल बी ऑर्डर ऑफ n क्यूब. So point to be remembered, Sufia, Rishabh, the point to be remembered is that school method, general method, non-divide and conquer method for multiplying two square matrices of order n by n is order of n cube. Divide and conquer से भी order of n cube. Divide and conquer का setback हो जाएगा because that requires stack. Non-divide and conquer doesn't require stack. Here you will require the stack space. यहाँ stack space लगेगी order of log n. Non-divide and conquer में stack space नहीं लगेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी. तो बॉयज एंड गर्ल्स, टू reduce the complexity from order of n cube to a lesser value, a mathematician by name Strazen approach, and let me tell you, this is also divide and conquer. ये भी divide and conquer है, optimized version. Strazen, he came up with an idea to reduce the number of multiplications from 8 to a lesser value. He carried out a research. आपने वो जो इक्वेशंस है याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना है. Strazen has carried out some optimized research to reduce the number of multiplications from 8 to 7 and thereby reduce the complexity. तो Strazen का जो इक्वेशन बनेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, वो ऐसे होगा 70n by 2 प्लस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. और रिकर्शन ट्री, मास्टर मेथड से ये इक्वेशन अगर आप सॉल्व करोगे, दिस विल बी नथिंग बट ऑर्डर ऑफ n पावर log 7 to base 2, ये बनेगी 2.81. so this is much better than divide and conquer method. I didn't block movie shot. मैंने किसी को भी ब्लॉक नहीं किया है, प्लीज बिलीव मी. मूवी शॉट्स 310 मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया, बिलीव मी. मेरे पास कंट्रोल भी नहीं है ब्लॉक करने के लिए, मेरे पास कंट्रोल भी नहीं है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने नहीं किया. इनफैक्ट मैं तो उगांडा से कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं. मैं तो उगांडा को कहा था मेरे से बात करने के लिए. मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया, प्लीज. मेरा पर्पस भी नहीं है ब्लॉक करने का, अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम इनडिसिप्लिन. उगांडा ने तो कोई इनडिसिप्लिन नहीं किया. I have not seen any indiscipline from his side.
मे बी देयर मे बी सम टेक्निकल प्रॉब्लम, देखिएगा बाद में आप। तो चलो बच्चों, ये एक चीट शीट है, देखिएगा डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है, उनके बेसिक बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस टेबल है, इन प्लेस है। ये सारा आपको एक हेल्प होगी फॉर बेसिकली रिमेंबरिंग एंड लाइक चीट शीट। वेरियस कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग के चीट शीट है, दैट विल हेल्प यू फॉर रिमेंबरेंस, ठीक है। ओके, दैट यू कैन रीड इट एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, जब ने आपको पीडीएफ मिलेगी आप देख सकते हो। प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आने से पहले एक और प्रॉब्लम है जो मैं आपको चाहूंगा एटलीस्ट यू रिमेंबर, अगर आपको पूरा प्रोसीजर नहीं मालूम है, क्योंकि आई विल जनरली एक्सप्लेन इट फॉर 1 आवर। वो प्रॉब्लम का नाम है डिवाइड एंड कॉन्कर का एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है लॉन्ग इंटीजर मल्टीप्लिकेशन। जो बच्चे मेरे क्लासेस अटेंड किए हैं पेड बैच में, वो लोग शायद रिमेंबर कर पाएंगे। जो नहीं कर पाए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, कॉन्सेप्चुअलाइज कीजिएगा और रिमेंबर करने की कोशिश कीजिएगा। एटलीस्ट इफ 1 मार्क क्वेश्चन इज आस्क्ड यू कैन आंसर। वो क्वेश्चन है निशु कुमार, हम लास्ट में देखेंगे, सॉर्टिंग मेथड लास्ट टॉपिक होगा, वहां पे देखेंगे रैडिक्स सॉर्ट। अब यहां देखिएगा लॉन्ग इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, जनरली वी राइट दिस इन एज LIM। क्वेश्चन इज बॉयज एंड गर्ल्स, given two integers x and y, given two integers x and y, given two integers x and y, question is what is the time complexity for adding or subtracting them, what is the time complexity for adding and subtracting them, and what is the time complexity for multiplying them। ये बहुत सिंपल है, दोनों भी ऑर्डर ऑफ 1 है, राइट। two integers of size some 4 bytes or 8 bytes for example, adding them or subtracting them is order of 1 and multiplying them is order of 1। लेकिन परंतु यहां पर अगर मैं ये कहूं let x and y be two long integers of size n digits each, represented in an array of size n। बॉयज एंड गर्ल्स, गेट का क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, पोटेंशियल गेट क्वेश्चन, दिस इज पोटेंशियल गेट क्वेश्चन। जैसे PYQ है वैसे PGQ, मेरी अपनी टर्मिनोलॉजी में PGQ कहता हूं, कहता हूं। हाँ, मेरे पास मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी में, मेरी टीचिंग पेडागोजी में टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट अगर ना हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास टीचिंग आइडियोलॉजी में कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजी, फाउंडेशंस, आई एम्फसाइज मोर, मैं ज्यादा फोकस करता हूं उस पर, ठीक है। तो सुनिएगा, PGQ पोटेंशियल गेट क्वेश्चन, ये पूछा ये जा रहा है, देखिएगा। Let x and y be two long integers of size n digits each represented in an array of size n। One approach of representing long integers is representing in an array। Primitive data type नहीं है ना array data type है, array में represent कर रहे हो आप। So point is like for example ये एक array है, ये एक array है of size n digits, ये भी एक और एक array है of size n digits। तो यहां पर आपका फर्स्ट नंबर है x, यहां पर सेकंड नंबर है, दिस रिप्रेजेंटेड एज एन n डिजिट नंबर इन द अरे, 1 2 3 अप टू n, 1 2 3 अप टू n। तो आपका अगर नंबर हो फॉर एग्जांपल 7 8 5 2 3 समथिंग लाइक दिस, 6 8 6 9 2 3 समथिंग लाइक दिस, ये नंबर मेरा है, रिप्रेजेंटेड इन एन अरे। समझ रहे हो बात को? अब देखेंगे कौन आंसर करेगा, Question is, boys and girls, first question, what is the time complexity to add or subtract these two array using non-divide and conquer method? And likewise, what is the time complexity to multiply these two long integers which are represented in an array using non-divide and conquer method? Non-divide and conquer method से ये दो अरेज को जो लॉन्ग इंटीजर्स है रिप्रेजेंटेड इन एन अरे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बोलिएगा। शिम्पी जी,
ऋषभ, नीरज, बिल्कुल। आई नीड ए लूप, एक लूप लगेगा मुझे फॉर i इज इक्वल टू 1 to n, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ n। उसी तरह मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या टाइम होगा? सयन दत्ता इज ऑल्सो करेक्ट, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। रेगुलर अप्रोच और नॉन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, नॉन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। नॉन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच से बनेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर फॉर मल्टीप्लाइंग टू लॉन्ग इंटीजर्स ऑफ साइज एंड डिजिट्स। 2 मार्क क्वेश्चन, पोटेंशियल गेट क्वेश्चन, 2 मार्क्स। अब यही प्रॉब्लम को बॉयज एंड गर्ल्स, यही प्रॉब्लम को अगर आप डिवाइड एंड कॉन्कर आइडियोलॉजी से सॉल्व करोगे, डिवाइड एंड कॉन्कर लॉन्ग इंटीजर मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड एंड कॉन्कर लॉन्ग इंटीजर मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड एंड कॉन्कर आइडियोलॉजी से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका रिकरेंस बनेगा, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का था, रिकरेंस बनेगा 4tn/2 प्लस ऑर्डर ऑफ n, ये बनेगा। 4 सब प्रॉब्लम, जैसे 8 सब प्रॉब्लम वहां थे, यहां पे 4 सब प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा ऑफ ऑर्डर n/2। सो 4tn/2 प्लस ऑर्डर ऑफ n। मास्टर मेथड से सॉल्व करने पर आपको पता चलेगा दिस विल आल्सो बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, लाइक ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लाइक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। सो डिवाइड एंड कॉन्कर, नॉन डिवाइड एंड कॉन्कर दोनों का सेम है टाइम, नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट। तो जैसे वहां पर स्ट्राजन था, यहां पर भी एक मैथमेटिशियन है, यहां पर भी एक मैथमेटिशियन है, प्लीज बोलिएगा। देयर इट वाज स्ट्राजन फॉर मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के लिए स्ट्राजन ने ऑप्टिमाइज किया। उसी तरह यहां पर भी एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम क्या है, who has basically optimized the time, who has basically optimized the time for long integer multiplication, just like Strazen has optimized the time for matrix multiplication। उसी तरह for long integer multiplication के लिए किसने ऑप्टिमाइजेशन किया? A mathematician by name Anatoly Karatsuba from Russia। Karatsuba, Anatoly Karatsuba, AK। इन्होंने एक सिंपल फार्मूला अप्लाई किया और टाइम को ऑप्टिमाइज किया विथ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस फ्रॉम 4 to 3। तो उनका इक्वेशन बना 3tn/2 प्लस ऑर्डर ऑफ n। सो इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी ऑर्डर ऑफ n पावर log 3 to base 2 1.5। तो टाइम हैज गॉट रिड्यूस, टाइम हैज गॉट रिड्यूस्ड। इसके बाद यहां पर एक और है ऑप्टिमाइजेशन, मैं अब जाना नहीं चाहूंगा, जो बच्चे मेरे सब्सक्राइब कोर्स में पढ़े हैं उन्होंने देखा है। देयर वाज अनदर ऑप्टिमाइजेशन डन बाय नेम टूम एंड कुक ऑप्टिमाइजेशन। दे हैव फर्दर रिड्यूस्ड, ब्रॉट डाउन द टाइम बाय अप्लाइंग मल्टीवे स्प्लिट, मल्टीवे स्प्लिट इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग n/2 n/3 n/4 n/5, टूम एंड कुक या कुक 3 ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसे आप देख सकते हो ऑन इंटरनेट, या फिर मेरा वीडियो अगर आपको एक्सेसिबल है तो वहां पे आप देख सकते हो। टूम एंड कुक ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मैंने जनरलाइज फॉर्मूला दिया है बच्चों को, ठीक है, वहां से आप वर्कआउट कर सकते हो। दैट इज इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। यस, सो बॉयज एंड गर्ल, दिस इज द डिस्कशन विथ रिगार्ड टू मल्टीप्लीकेशन, लॉन्ग इंटीजर मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए, इट्स टाइम टू टेक अप सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर। ले लेते हैं सम क्वेश्चंस। नंबर 1, कम ऑन, टेल मी द आंसर फॉर दिस। Boys and girls, the answer for this first question. Come on, movie shots, Elias, Uganda AI. आनंद, ऋषभ केशरी, निशु कुमार, बोलिएगा आंसर। नीरज चौधरी, what is the answer for this? 148. There are two approaches of solving this, boys and girls. There are two methods of solving this problem. There are two methods of solving this problem. एक तो अप्रोच ये है कि you can apply directly divide and conquer and use the formula 3n/2 minus 2. n is even, so therefore you can apply this. So ये बनेगा 3 into 100 divided by 2 minus 2, तो आंसर आएगा 148. The other approach is slightly different. टूर्नामेंट मेथड की तरह है, टूर्नामेंट मेथड की तरह है अदर अप्रोच। तो यहां पे क्या करोगे आप? I have list with 100 elements. I have list with 100. Look at this. I don't know whether you are aware or not. Look at this approach. There are 100 elements. You form first 50 pairs. 50 pairs. सुनिएगा, 50 pairs बनाइए। 1 2
3, 4, 5, 6, 50 pairs of elements. With 50 comparisons, boys and girls, with 50 comparisons, you will find max and min. दोनों लिस्ट बनेगी यहां से 50 पेयर्स बनाने के बाद, एक मैक्सिमम बनेगा, मैक्सिमम की बनेगी, एक मिनिमम की बनेगी. करेक्ट है? समझ रहे हो? So with 50 pairs and 50 comparisons, you will find one list with 50 elements. You will find one list with 50 elements which are maximums of the pairs, और ये 50 elements बनेंगे, 50 max elements है with maximum elements and 50 minimum elements of these pairs. ठीक है? तो इसके बाद क्या करना है? Among all these maximum elements, with 49 comparisons, you find the highest, and with 49 comparisons, you find the lowest. That's it. You got the maximum and minimum. Tournament method कहते हैं इसे. It's something like tournament method. तो total comparisons कितने बने with this approach? Total बने 50 plus 49 plus 49. Both the approaches are interesting. Is it okay? Is it clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताइएगा. नीरज चौधरी, रीड इट. Come on. Give me the answer for this. The average number of key comparisons done in a successful sequential search in a list of length n is dash. अगर आपके पास list of n elements हो, average number of key comparisons, element comparisons कितने होंगे? Best होगा 1, worst होगा n, average कितना होगा? Best होगा 1, worst होगा n, average कितना होगा? Will it be n? Movie shots, no. सक्सेसफुल सीक्वेंशियल सर्च कह रहा है, सक्सेसफुल, वहां पे आपने कंसंट्रेट करना है, सक्सेसफुल. यहां पे डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं कहा गया, कहीं भी नहीं दिया है, देखिएगा. सक्सेसफुल सीक्वेंशियल सर्च कब होगा? If your element being searched for is found at first place or second or third or fourth, so average is for all cases. First successful हो तो 1 comparison, second successful हो तो 2 comparison, third successful हो तो 3 comparisons. अगर last element पर successful हो तो n comparisons divided by, क्योंकि आप equal probability से कर रहे हो, so divided by n, तो ये बनेगा n into n plus 1 divided by 2 into n, n and n cancel, तो आंसर बना n plus 1 by 2. So correct is D. Correct is D. Yes, Shimpi ji is correct. चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. The recurrence relation that arises in a relation with the complexity of binary search. बोलिए. Just now we said, अभी हमने देखा. Yes, the correct answer is B. The correct answer is B. चलिए नेक्स्ट. अगेन बाइनरी सर्च. ये गेट डीए का है. दिस क्वेश्चन इज ऑफ गेट डीए. जो बच्चे गेट डीए देख रहे हैं, गेट डीए लिख रहे हैं, उनके लिए है. ऑफ कोर्स सीएसआईटी भी हो सकता है. For which of the following input does binary search take order of log n time in the worst case? This was asked in GATE DA paper last year, 2025 का GATE DA का क्वेश्चन है शायद ये. निशु कुमार. Yes, again answer is B. An array in increasing order, an array of n integers in increasing order, linked list पे वर्क नहीं करेगा. लिंक लिस्ट पे वर्क नहीं करेगा, अरे ऑफ एन इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन है.
हो सकता है कई बच्चों को ये अप्रोच पता हो, फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं सो दैट जस्ट इन केस अगर आपको पता ना हो तो यहाँ पर आप लर्न कर सकते हो. यस, कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, वर्क आउट दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Ravi Kumar Yadav, don't worry about the marks you are getting in mock test. Just focus on revision and solving PYQs and giving mock tests. That's it. Some people will follow a different approach for solving this. They say that 30 seconds, 64 elements, so 360 seconds, how many elements? That is not correct. अगर वैसे solve करोगे तो what will be the role of merge sort? Remember, merge sort की time complexity है for sorting n elements. A priori time है n log n units. So a particular machine पे देखा गया है कि merge sort to sort 64 elements take 30 seconds. ठीक है, 64 elements के लिए 30 seconds. A priori time क्या होगा 64 elements के लिए? n log n. 64 into log 64 is 6. 64 into 6 units a priori time for sorting 64 elements. So मतलब 64 into 6 units of time on a particular machine corresponds to 30 seconds for merge sort. तो एक जेनेरिक यूनिट के लिए, एक ए प्रियोरी यूनिट के लिए कितना टाइम लगेगा? ये लगेगा 30 बाई 6 into 64 seconds. One unit correspond to this much. One generic unit, one a priori time correspond to these many seconds. So 66 minutes मतलब 360. Let us say in 360 seconds we are sorting n elements. तो 360 seconds के लिए सेम मशीन पे कितना टाइम, कितने यूनिट्स लगेंगे? So 360 divided by this value. So 360 into 6 into 64 divided by 30 units correspond to sorting n elements. So n elements के लिए time actually क्या है using merge sort? n log n. So this is the equation that I have to solve. This is the equation that I have to solve for n. आप easily solve कर सकते हो by assuming let n is equal to 2 power k, right? 2 power k into k. So 2 power k into k is equal to this value, 360 into 6 into 64 divided by 30. ये solve करने पर k की value होगी 9. So therefore the value of n is equal to 512. The value of n is equal to 512. बिल्कुल सही, कई बच्चों ने आंसर दिया 512. वेरी गुड. बट द अप्रोच ये होना चाहिए, आइडियोलॉजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये होना चाहिए. वन जेनेरिक यूनिट का टाइम कितना है हमने डिटरमिन किया इन सेकंड्स, फिर इक्वेट किया n log n, क्योंकि फॉर सॉर्टिंग n एलिमेंट्स हमें टाइम लगेगा n log n. तो ये है आंसर फॉर दिस. कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. बोलिएगा आंसर. क्विक सॉर्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है. Give me the answer for this. Smallest element is selected as pivot with some time algorithm. Order of n टाइम से smallest element pivot select कर रहे हो तो worst case क्या होगा? Ravi Kumar Yadav, I have taken n is equal to 2 power k, not n power k. Let n is equal to 2 power k. स्मॉलेस्ट एलिमेंट पाइवोट होने से आपका रिकरेंस फिर से बनेगा t of n is equal to t of n minus 1 list with right hand side सब प्रॉब्लम plus order of n. तो will be order of n square. Yes, will be order of n square. बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए.
the median of n elements can be found in order of n time and that is selected as pivot. So what will be the complexity? Recurrence क्या बनेगा? Recurrence बनेगा order of n time to select the middle element of the sorted list. Partitioning का time बनेगा order of n plus 2tn by 2 because it get pivoted in the middle. तो ये हमारा recurrence होगा, ये हमारा recurrence होगा for this algorithm. ये algorithm के लिए ये recurrence होगा. ठीक है? So order of n for median, order of n for partition and 2tn by 2. So time complexity upon solving this will be order of n log n. Will be order of n log n. Uganda AI is back. So मैंने कहा ना कोई technical problem था, don't worry. Uganda AI is back, so no issue. Order of n log n. So boys and girls, next question, come on. Again, this is the same repetition. इसका आंसर बताइए. गेट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग, बेस्ड ऑन सम प्रोबेबिलिटी इन्फ्लुएंस. ये क्वेश्चन में थोड़ी प्रोबेबिलिटी इन्फ्लुएंस है. अच्छा, वर्जन 2.0 है. नो प्रॉब्लम, एनीवे यू आर देयर इन द क्लास ना, नो इशू. यस, द आंसर फॉर दिस इज 0.08. देखिए 25 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है लिस्ट में, राइट? और वर्स्ट केस बिहेवियर के लिए, the pivot should get pivoted either here or here. So 2 out of 25 possible positions. So this is the probability 0.08. The probability that the pivot element get placed in the worst case possible location, 2 locations hai, first or second, first or last. So therefore 0.08. चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से. Assume that the algorithm consider here sort the input sequences in ascending order. If the input is already in ascending order, quicksort runs in theta of n square time, correct? Bubble sort may run in theta of n square, we can't say. Merge sort runs in theta of n time, galat. Insertion sort runs in theta of n time, correct. So 1 and 4 are for sure correct, 1 and 4. B we can't say because bubble sort implementation will depend on flag. So therefore हम D को perfectly correct बोलेंगे. D को perfectly correct बोलेंगे. B may or may not be correct. B may or may not be correct. Okay. Boys and girls, इसका आंसर बताइए. Worst case complexity of quicksort, which is the correct recurrence? Which is the correct recurrence? कौन सा समझ में नहीं आया? देखिएगा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना. क्विकसॉर्ट की वर्स्ट केस देखिए, इनपुट इज ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर. इनपुट ऑलरेडी सॉर्टेड होने से क्विकसॉर्ट बिहेव इन वर्स्ट केस टाइम n स्क्वायर. वर्स्ट केस टाइम पाइवोट. कौन सा क्वेश्चन? लॉजिक वर्ल्ड. ठीक है, अभी मैं आऊंगा. लेट मी कंप्लीट दिस. इसका बताइए आंसर. व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? बिल्कुल ये तो अभी डायरेक्ट हमने पढ़ा. टी ऑफ n माइनस 1 प्लस कांस्टेंट प्लस Cn. ये वर्स्ट केस का कॉम्प्लेक्सिटी रिकरेंस है. देखिएगा, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट है. मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज n log n. इंसर्शन सॉर्ट बेस्ट केस के लिए ऑर्डर ऑफ n, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंसर्शन सॉर्ट बेस्ट केस होगा तो ऑर्डर ऑफ n करेक्ट है. इससे पहले का क्वेश्चन ये देखिएगा, वर्स्ट केस क्विकसॉर्ट में कब होगा? देखिएगा, वर्स्ट केस लॉजिक वर्ल्ड, वर्स्ट केस क्विकसॉर्ट में कब होगा? वर्स्ट केस होगा व्हेन द पाइवोट गेट पाइवोटेड इन द फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन. जब वर्स्ट केस होगा कोई भी पार्टीशन का इटरेशन.
तो 25 पोजीशंस में से 2 वर्स्ट केस पोजीशंस है, फर्स्ट और लास्ट. So out of 25 element, what is the probability that the pivot element get pivoted in the first place or last place? Worst case positions 2 out of 25. 2 out of 25 probability का concept है. That's it. So 2 by 25 is 0.08. इसका आंसर बताइए. T1 and T2 be the number of comparisons. Oh, logic world, you are not eligible to attend this lecture. Logic world, you are not eligible to attend this lecture. I am sorry to say like that, because you are asking what is pivot element. तो मतलब आप क्विकसॉर्ट के बारे में कुछ नहीं जानते. And I told I am not going, this lecture is not to be learned from scratch. This lecture is not to be learned from scratch. Logic world, पहले बेसिक कोर्सेज देख लीजिएगा, बेसिक लेक्चर फॉलो कर लीजिएगा, उसके बाद आप ये रिवीजन अटेंड करना. Number of comparisons for sorted list will be more than unsorted list. So T1 is greater than T2. C. T1 is greater than T2. C correct है. हाँ, इसका आंसर बताइए. Consider the following statements. What is the answer for this? Come on, Nishu Sharma, Nishu, Neeraj, Aditya Velkude. Which of the following either are correct? Everybody is saying B. Come on. Is it B or D or A? I am getting these many answers. B, D, A options आ रहे हैं मुझे. B, D, A. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ऋषभ केशारी. प्लीज ऑब्जर्व ऋषभ. फर्स्ट पॉइंट, क्विकसॉर्ट हैज डिवाइड प्रोसीजर बट नॉट कंबाइंड. ट्रू और फॉल्स? इंडिविजुअली आंसर कीजिएगा. क्विकसॉर्ट हैज डिवाइड प्रोसीजर, दैट मींस क्विकसॉर्ट में आप डिवाइड करोगे बट नॉट कंबाइन. इज इट ट्रू और फॉल्स? उगांदा, क्विकसॉर्ट हैज डिवाइड प्रोसीजर बट नॉट कंबाइन. ट्रू और फॉल्स? ट्रू है. ट्रू. like binary search, we are dividing but not combine. सायन दत्ता कैसे फॉल्स हो गया? सायन दत्ता कैसे फॉल्स हो गया? डिवाइड देखिएगा, आप डिवाइड कर रहे हो ना. प्रॉब्लम इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 3 सब प्रॉब्लम्स. फर्स्ट लेवल 3 सब प्रॉब्लम. मिडिल एलिमेंट, आई मीन I3. Are you not dividing the problem into sub problems? बेस्ट केस में एक लिस्ट हो रही है और वर्स्ट केस में बेस्ट केस में 2 लिस्ट हो रही है, वर्स्ट केस में 1 लिस्ट हो रही है. ट्रू है. फर्स्ट वन इज ट्रू. नंबर ऑफ कंपैरिजंस इन पार्टीशन एल्गोरिथम आर सेम फॉर बेस्ट केस एंड एवरेज केस. यस और नो? पार्टीशन एल्गोरिथम में, पार्टीशन एल्गोरिथम के नंबर ऑफ कंपैरिजन, टोटल का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पूछा जा रहा है. टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पूछा जा रहा है. बोलिए. पार्टीशन, जस्ट पार्टीशन एल्गोरिथम में नंबर ऑफ कंपैरिजंस क्या आ गए? यू आर गोइंग टू कंपेयर पाइवट विथ ऑल एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ n कंपैरिजंस. समझ रहे हो? पार्टीशन एल्गोरिथम में नंबर ऑफ कंपैरिजन, नॉट टोटल कंपैरिजंस ऑफ क्विकसॉर्ट. नहीं,
पार्टीशन एल्गोरिथम का टाइम ऑर्डर ऑफ एन है हमेशा। हाँ अनुश्री, आप वही नहीं समझ रहे हो बात। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, what is the number of comparisons involved in partition algorithm in best or worst cases? बोलिए, ऐसा क्लियरली लिखा हूं मैं यहां पर। हमेशा पार्टीशन एल्गोरिथम में नंबर ऑफ कंपैरिजंस क्या हो गए, will you be comparing whether elements are in increasing order, decreasing order, random order, कोई भी ऑर्डर में हो, are you not going to compare pivot with all elements of the array? बोलिए बोलिए अनुश्री, सेम रहेगा ना नंबर ऑफ कंपैरिजन। मैं नंबर ऑफ कंपैरिजंस ऑफ क्विक सॉर्ट नहीं पूछ रहा हूं, पार्टीशन एल्गोरिथम खाली। नंबर ऑफ कंपैरिजंस इन पार्टीशन एल्गोरिथम, बी केयरफुल, यहां पर थोड़ा सा केयरफुल होना, सेम रहेंगे, विल बी सेम। So this will be same. Merge sort always has more comparison than swaps, is it? Can I say like that? Merge sort will have more comparison than swaps? No. May have equal comparisons and swaps? May have equal. समझ रहे हो बात? May have equal. So only S1 and S2 are correct. Only S1 and S2 are correct. Correct? Is it okay? Yes. चलिए एक और क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चंस और है शायद, 3-4 है, ठीक है, चलिए सॉल्व करके क्लोज करेंगे। इसका आंसर बताइए। द रिकरेंस रिलेशन अराइजेस इन सॉल्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स? ये जो रिकरेंस है कौन से प्रॉब्लम्स में अराइज होगा? अरे भाई स्वैप नहीं होगा क्या मर्ज सॉर्ट में? इन द ओरिजिनल अरे दे गेट स्वैप ना। अच्छा अगर आप वैसा समझ रहे हो तो ठीक है। ठीक है, अगर आप ओरिजिनल लिस्ट मतलब स्वैप एलिमेंट, आई मीन एडिशनल ऑक्सिलरी अरे बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, somebody was asking, I will accept his doubt। यहां पर अगर ऑक्सिलरी अरे का कंसीडर करते हुए स्वैप कंसीडर नहीं कर रहे हो आप, then always merge sort will have more comparison than swaps. So then in that case I will go with this also, all the 3. If you don't consider the original array as getting swaps, क्योंकि आप वहां पे मर्ज कर रहे हो और कॉपी कर रहे हो, that is not considered as swaps, I will accept your doubt। Then zero swaps, fine। चलिए इसका बताइए आंसर। So this is basically for binary search and power of n. Power of n is also a divide and conquer problem, divide and conquer। So both merge sort तो नहीं होगा, टावर ऑफ ni का 2tn-1 है। अगर आप ये जानना चाह रहे हो, टावर ऑफ ni का रिकरेंस है 2t of n-1 प्लस कांस्टेंट, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा ऑर्डर ऑफ 2 पावर n, ऑर्डर ऑफ 2 पावर n। तो याद रखिएगा सी एंड डी। नेक्स्ट, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, रिकर्सिव मोड में, इसका आंसर बताइए। सिंपल है, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन लाइक दिस, स्टार क्वेश्चन है, you can expect for 2 marks like this। What is the time complexity of this?
Yeah, the time complexity recurrence of this will become T of n is equal to T of n by 2 plus constant for n greater than 1 and is equal to another constant for n equal to 1. So ये binary search की तरह है. So the time complexity of this will be invariably order of log n. Will be order of log n. Srija Sarkar. Not order of n. Anushka Gupta. It is not order of n. Order of n log n. Order of log n. Order of log n, please. Another one. Already हमने देखा. The time complexity to multiply two long integers of size n digits represented in an array of size n using divide and conquer strategy with three-way split. Three-way split जो है वो two and cook optimization है. Two and cook optimization है. It will be less than n square. It cannot be order of n. It cannot be order of n log n. Order of n square using divide and conquer. So therefore, with three-way split, you can achieve up to 1.32. Okay. Yes. Matching pair. Merge sort n log n. And partitioning is order of n. Insertion sort worst case में order of n square ले सकता है time. Binary search may get mapped with order of log n. Simple match. Simple matching है. Is it okay? So boys and girls, that completes the divide and conquer. I hope this has served the purpose आपके लिए. तो मैं समझ रहा हूँ कि अब हम यहीं पे स्टॉप करेंगे. ग्रीडी मेथड नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे. सो नेक्स्ट सेशन का एजेंडा होगा ग्रीडी मेथड, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ टेक्निक्स. 3 चैप्टर्स. ग्रीडी मेथड, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्राफ ट्रैवर्सल्स. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ग्रीडी और डायनेमिक स्लाइटली रिलेटेड है, अनरिलेटेड भी है. सो हम स्टडी करेंगे ग्रीडी स्ट्रैटेजी, आइडियोलॉजी और प्रॉब्लम सॉल्विंग विद ग्रीडी मेथड. लाइक स्पैनिंग ट्री है, डाइकेस्ट्राज एल्गोरिथम है, एंड और फिर दूसरे प्रॉब्लम्स है, हफमन कोडिंग, नैपसैक, जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइंस. ये सारे प्रॉब्लम देखेंगे. डायनामिक प्रोग्रामिंग की मेथडोलॉजी प्लस सम सैम्पल प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन वेडनेसडे आफ्टर 6 p.m. Next session will be on Wednesday after 6 p.m. evening. Okay बच्चों. So thank you so much. हाँ 6 p.m. के बाद ही रहेगा, 6:30 like that. So बच्चों, I hope session was justified and I hope it really has benefited you. It has really helped you. Okay. So we'll meet on the next session by Wednesday. Please do come and try to utilize these sessions. Thank you so much. Thank you. Take care and good luck. Good day. Thank you.